శేషశైలతటస్థానాం స్వయం వ్యక్తిముపాగతం. Hello and a very good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. I am Venkatnathan and today I have the pleasure of being your host for this program. As we all are aware, we are present here for a 3-day national seminar on Darshana and Ayurveda organized by the Karnataka Samskrit University in collaboration with the Indian Council of Philosophical Research, ICPR. At the outset, I would like to express our heartfelt gratitude to ICPR for organizing this seminar. Darshana and Ayurveda, two ancient Indian disciplines, have profoundly influenced our way of life. Today, we are here to explore the interconnectedness of these two disciplines and their relevance in contemporary times. Our chief guest for today's event is the Member Secretary of Indian Council of Philosophical Research, ICPR, Professor Sachidananda Mishra ji. Unfortunately, he couldn't be present here physically, but he is present online here. So I would like to express our thanks to Mishra ji for accepting our invitation. Now I would like to call upon to the stage Professor Girish Chandra V, Vice Chancellor in charge, KSU. Sir, please come to the dais. May I now call upon to the stage Professor Ramchandra Bhatt Ji Kotemane, former Vice Chancellor, S. Vyasa. Sir, please welcome and be seated in the dais. Request everyone to clap and yeah. I would also urge Shri Vishwanath P. Hiremat, KS, Registrar KS, to the stage with a warm round of applause. I would also urge Dr. Srivatsa HOD, Ayurveda Samhita and Siddhanta Mysore, to the stage with a warm round of applause. I would also request Dr. Anand Katti sir, Professor and Head Department of Samhita and Siddhanta, Government Ayurveda Medical College, to the dais. I would request Dr. Bhaskar Bhatt Joshi, HOD, Department of Nyaya Visheshika, to come on to the stage. Friends, as there is a tradition in our Hindu culture, whatever program we start with a Vedic prayer. Now I would request Dr. Vedesh Nagasampike, Guest Lecturer, Department of Nyaya Visheshika, to do the honors of Vedic prayer. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangai Sushtuvagum Sastanobhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indo Vrudrashavaha Swastina Pusha Vishvavedaha Swastinastaksho Arishtanemihi Swastino Brahaspatir Dadhatu. Om Shanti 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 Harihi Om. Thanks, Vedesh ji. Now may I request Dr. Bhaskar Bhatt Joshi, HOD, Department of Nyaya Visheshika, KSU, for welcoming the dignitaries. एक एव परब्रह्म परमात्मा दिगंबरः स्वयमेव गुरुसाक्षात् सुब्बरायः पातु न सदा पातु न सदा पातु न सदा. श्री गुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरु परंपराभ्यो नमः. शुभे अस्मिन् संदर्भे दिनत्रय व्यापिन्या संगोष्ठी अत्र समायोजिता वर्तते. अस्याः संगोष्ठ्याः उद्घाटन सत्रे वयं सर्वेपि समवेताः स्मः. तत्र
अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य मुख्यातिथिरूपेण आगताः सन्ति ICPR इत्यस्याः संस्थायाः सचिवाः विद्वांसः न्यायादिशास्त्रेषु नदीष्णाः शास्त्रसंरक्षणार्थम् इयं संस्था या संस्था कटिबद्धा वर्तते तस्याः संस्थायाः सचिवाः आचार्याः सच्चिदानन्दमिश्रवर्याः अस्माभिः सह अत्र आन्लैन् माध्यमेन वर्तन्ते। तेभ्यः विश्वविद्यालयः पक्षतः मत्पक्षतश्च हार्दं स्वागतं ब्रवीमि। एवम् अस्य विश्वविद्यालयस्य अद्य प्रभाररूपेण ये अत्र वर्तमानाः सन्ति आचार्याः गिरीशचन्द्रवर्याः एते अद्यतनीयसभायाः अध्यक्षाः भवन्ति। अस्माकं मार्गदर्शकाः ज्येष्ठाः विश्वविद्यालयेषु विद्यमानेषु प्राध्यापकेषु ज्येष्ठाः इमे आचार्याः अस्मान् सर्वदा मार्गदर्शनं कुर्वन्तः भवन्ति। एते भवन्ति प्रोफेसर् गिरीशचन्द्र वर्याः। तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। पुष्पगुच्छेन तान् स्वागतं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि आनन्दकट्टिवर्यान्। एवम् अस्माकं सर्वात्मना एते मार्गदर्शनं कुर्वन्तः भवन्ति। विश्वविद्यालयस्य आरम्भकालात् अद्य पर्यन्तं यावत् शास्त्रे एवं सर्वात्मना एतेषां मार्गदर्शनं विना विश्वविद्यालये कोऽपि कार्यक्रमः न संवृत्तः भवति इत्यत्र न संशयः। ते भवन्ति आचार्याः रामचन्द्रभट्टजी कोटेमनेवर्याः। एते कुलपतिचराः यस् व्यास विश्वविद्यालयस्य। तेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। स्वागतं कुर्वन्तु इति आचार्यान् गिरीशचन्द्रवर्यान् सम्प्रार्थये। अल्पकाले आगत्य अस्मत्सु मनस्सु एते दृढीभूताः सन्ति। कुशलाः, प्रशासनदक्षाः, अत्यन्तसरलाः। मया दृष्टेषु KS जनरितरल्ल ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜನರು, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಾः भवन्ति। अस्माकं विश्वनाथ पी हिरेमठवर्याः। तेषां कृते स्वागतं ब्रवीमि विश्वविद्यालयः पक्षतः, अस्माकं समेषां पक्षतश्च स्वागतं ब्रवीमि। संगोष्ठ्याः आरम्भस्तावत् सर्वदा कुञ्चिका भाषणेन भविष्यति। तर्हि आयुर्वेदविषये वेत्तारः अपेक्षिताः, एवं दर्शनप्रपञ्चे तेषां परिचयोऽपि अपेक्षितः। तर्हि के भवितुमर्हन्ति इति अन्वेषणवेलायाम् अस्माकं अद्य वास्तविकदृष्ट्या अत्र किञ्चित् आब्सेन्स् दृश्यते। अहल्यामहाभागा अस्माकं समीपे अस्मत्सु इदानीम् अद्य नास्ति। तस्याः स्मरणम् अद्य अवश्यं कर्तव्यं। तस्याः कृते अनुपस्थितौ अपि तस्याः कृते स्वागतं ब्रवीमि। एवमेव चर्चा संवृत्ता आसीत्। के भवितुमर्हन्ति कीनोट् अड्रेस् निमित्तं, कुञ्चिकाभाषणनिमित्तं के भवितुमर्हन्ति इति चर्चा आसीत्। तदा तस्याः स्मृतिपटले इमे श्रीवत्सवर्याः समागताः। एते ज्येष्ठाः आयुर्वेद तज्ञाः वैद्याः। अतः ते सम्प्रार्थिताः कुञ्चिकाभाषणनिमित्तं। तेषां कृते अस्माकं विश्वविद्यालयः पक्षतः एवं मत्पक्षतश्च स्वागतं ब्रवीमि। अहं वेङ्कटनाथमहोदयं सम्प्रार्थये तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति। अनन्तरं यत् कार्यक्रमं भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, अस्माकं बुद्धो आदौ बीजावापं कृतवन्तः कट्टिवर्याः। एवम् एकः कार्यक्रमः भवेत् आयुर्वेदविषये एवं दर्शनविषये किञ्चित् ग्याप् अस्ति, तद् ग्याप् पूरणीयमस्ति। तर्हि कथं पूरयितुं वयं शक्नुमः इति चिन्तनवेलायाम् एते आनन्दकट्टिवर्याः उक्तवन्तः एकाम् एतादृशगोष्ठीम् आयोजयामः इति। प्रपोसल् लेखनदारभ्य
अद्य पर्यन्तं प्रतिदिनम् आगत्य व्यवस्थां दृष्टवन्तः एवं भवेत् इति उक्त्वा अस्मान् प्रोत्साहितवन्तः ते भवन्ति प्रोफेसर् आनन्द कट्टिवर्याः तेषां कृतेपि अस्माकं समेषां पक्षतः स्वागतं ब्रवीमि वेङ्कटनाथन् वर्यं पृच्छामि वदामि स्वागतं कुर्वन्तु इति अन्ये च अस्माकं विभागस्य डॉक्टर के श्री वेङ्कटनाथन् वर्याः सन्ति तेषां कृते स्वागतं ब्रवीमि VVSR लक्ष्मी महाभागाः वेदेश नागसम्पिके वर्याः अत्र सन्ति तेषां कृतेपि स्वागतं ब्रवीमि अत्र DFO डेप्यूटी फाइनान्स ऑफिसर सन्ति एवं शिवमूर्तिवर्याः एवं उपनिदेशकाः प्रसारङ्गस्य गोविन्दवर्याः इमे सन्ति तेषां कृतेपि स्वागतं ब्रवीमि एकम् अत्र कार्यक्रमस्य केन्द्रभूताः भवन्तः यदि भवन्तः एव न भवन्ति तर्हि कार्यक्रमस्य आयोजनं कुतः कथं वा भवेत् अतः भवतां समेषां कृते स्वागतम् उक्त्वा स्वागतवचनात् विरमामि नमस्काराः आगतान् सर्वान् स्वागतं व्याहृतवद्भ्यः डॉक्टर भास्कर भट्ट जोशी वर्येभ्यः अहं स्वागतं ब्रवीमि आचार्याः गिरीशचन्द्रवर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते पुष्पगुच्छिकया तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति Now I would like to call upon to the stage Dr. Anand Katti sir to address the gathering with his speech. वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः वंदे पितरौ पार्वती परमेश्वरौ सभाय नमः. Very good morning to all of you. Respected Vice Chancellor, in charge Vice Chancellor of the program of the university, Dr. Girish Chandra ji, the chief guest of today's program, Professor Sachidananda Mishra ji, and the very delighted and enlightened personality amongst us, the former Vice Chancellor of ICPR, Professor Ramchandra Bhattakote Maniji, Dr. Srivatsa ji, Dr. Bhaskar Bhatt sir ji, and the faculty of Department of Nyaya Vaisheshika, and in her absence, the Vice Chancellor of this university, Dr. Ahalya Madam, and all the gathered people. I have been told to do the introductory note of this program. I will briefly tell you about what all happened as far as the conceptualization of the program as long as what has been done until now. Few days back, around 2-3 months back, Ahalya Madam, she just while talking, she just a remark came that we should arrange. We have a department of Nyaya Vaisheshika here. We should arrange something because that is something that is connected to Ayurveda. And this was with the background that we had done one program on manuscriptology back in Melukote last year, and that was also a 2 days workshop that went hands-on training was given to the participants. So after that this idea came and I latched on it. And she said there is something called as ICPR, Indian Council of Philosophical Research, who are going to fund this program. Then, okay, after a couple of discussion with her, thankfully with the support of Dr. Bhaskar Bhatt sir, we were in a position to draft the proposal, and we wrote a proposal to the ICPR. And we requested, we asked for a 7-day program, but they curtailed it to 3 days programs, and the funds were sanctioned. And thereafter, on a daily basis, we are in touch and executing this. Now, this, we are implementing people. The idea and the focus and the idea was basically the principal, my former principal, who is presently the Vice Chancellor of this university. It is Ahalya Madam's idea.
Now that's how this has come into being, and the ICPR is that institute which funds for philosophical researches, and they fund for programs that are conducted on Indian philosophies. So that's how this is being conducted in this venue, in this Karnataka Samskrit University. Then the second issue came: what should be the title or what should be the theme? Now then, since we are connected to Ayurveda and Ayurveda is connected to Darshana, we thought that it should be something that where we talk about Ayurveda and Darshana together. And we know the fact that right from the origin of Ayurveda and the origin of Darshana, they almost have a similar origin, and they are blended in such a way that it is like two streams of a river which at one stage unite, and they become so indistinguishable that Darshana and Ayurveda are so indistinguishable. You cannot separate that this is Darshanic component and this is Ayurveda component. To such an extent we have a blend. So therefore, and obviously the PG students of Samhita Siddhanta are exposed to the study of Darshana. So what we thought is we will organize a program that is going to be useful for the PG students of Samhita Siddhanta and the teachers of Samhita Siddhanta department, because they are the people who are connecting to the Darshana to by and large compared to the other subjects of Ayurveda. So that's how this idea or this concept came into being. And then obviously, then this thought also was running, because most of the Ayurveda scholars would be aware of some aspects of Darshana. But what really the darshanas that are known or taught by the teachers of darshana in the philosophical domain, that may not be known to us. So therefore, we wanted to have a blend of this Ayurveda understanding of Darshana as well as Darshanic understanding of Darshana. Hence, the program is being conceptualized and is being arranged. We have a host of sessions here, and that will certainly enlighten you on various aspects of Darshana as well as Ayurveda. That's about how the idea came, and that is getting materialized in 3 days program. Now, meanwhile, we had so many difficulties and glitches, and the major was the absence of Ahalya Madam here. Now, very recently, around 10 days back, Madam fell ill. She was down with dengue hemorrhagic fever, and she was hospitalized, and she only discharged from the hospital Saturday, and her doctors have advised her not to have a public contact. So that is the reason why she is not there. And along with that, that was the first jolt that we had. Then we had few more jolts, because until now, until yesterday, we had a faculty from All India Institute of Ayurveda, Goa, by name Dr. Mohan Joshi, who is a versatile in teaching technology, who knows how to teach darshanas also. He was also one of the resource person for this program. Yesterday afternoon, he expressed his inability because of certain reasons, which I can understand. So therefore, there are too many things that are, and meanwhile, there is another person by name Praful who is doing so many works. He is also down with fever. So, with all these vignas, we somehow managed and getting things done here. So, this is what is this total scenario, and here you will be having a host of speakers, Dr. Srivatsa sir, Dr. Abhijit sir, there will be Saurabh sir who will be coming, and Kote Mane sir is there, Dr. Alvar will be coming, who will be sharing their vast wisdom of what they have experienced in 1.5 hour session. So, I insist upon you to make best use of these sessions. So, before culminating, I just have to pass on a few messages to the participants. Now, the university has got a journal, and that is an index journal. So, we have a plan of bringing, we will allot some topics to the participants here who can, in a span of 5 to 7 days, if they can draft an article that will be published, and that will go in your profile, in your resume as one publication. That one, we will list the topics, whichever is suitable to you, you can take it and go for further.
And another thing is there will be a sort of evaluation that will be done on the third day. There will be some sort of MCQs that will be coming to you. So be prepared for that, because you have to be attentive. And attendance for all sessions is very much mandatory, because session-wise attendance sheets will be coming to you. Make sure your presence is here in this auditorium. So with these messages, I come to the end of my introductory note, but in the morning I requested Ahalya madam at least drop a voice message that I can make our participant listen. Just a few minutes back I have received the message, so I will just share the madam's message to you, and after that I'll be ending my deliberation. Namaste to everyone in this august assembly. I offer my pranams to all the dignitaries on the dais, to the learned scholars of Ayurveda and Darshana, and to the torchbearers of tomorrow's Ayurveda, the students of Ayurveda. Karnataka Sanskrit University is committed to unraveling, exploring the hidden gems in the Indian knowledge systems that are documented in this Devavani. And to promote that, we have already had modules that we have given to various colleges in spreading the Indian knowledge system basis. Ayurveda and yoga are the greatest of the knowledge systems that we are offering to the world today, and to get a better grasp of the details from Darshana to Ayurveda, the translational research that actually happened between the theory and practice. We have a galaxy of esteemed scholars who will be taking you through these next 3 days sessions to help you understand how the change actually came about. How do you get the concept of the theory into the practical of your day-to-day practice and livelihood? Ultimately, this is what has stood on Tarka, on absolute Tarka and Karya Karanavada, and that is what we are trying to unravel here today. A concept like Hetvabhasa or a concept like Vyapti have absolute clear-cut clinical indications, and they are not just fallacies mentioned somewhere. So every aspect can be brought down like that, and the subjects are also taken in a similar way. I would like to mention all of you there, but especially Dr. Abhijit Saraf, who despite the accident and the 2 fractures on his hand, is committed to coming back and teaching, which shows his absolute commitment to Adhyayana, Adhyapana. To all the youngsters of Dr. Vrishali, Dr. Saurabh, Dr. Sri Nagesh, and of course to the doyen of all this knowledge, Sri Ramachandra Kotimaniji Acharya ji. I am extremely happy to have all of you there, and sincerely wish there is a lot of manthana that happens in the next 3 days, and that you are able to take home the resultant of these 3 days of churning and use it in your practice. With best wishes, and may Dhanvantari guide you all through and through. Namaste. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request all the dignitaries to come forward for lighting of the lamp.
Now, I would request the chief guest for today's program, Professor Sachidanand Mishra ji, to address the gathering. आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते स्वीय मुख्यातिथिभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति. सच्चिदानन्दमिश्रवर्याः. नमो नमः. समादरणीयाः आचार्याः, प्रतिभागिनः, विद्वांसः, शोधार्थिनश्च. इदं तावत् महत् प्रमोदस्थानं यत् भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहयोगेन दर्शन एवं आयुर्वेद इति विषयम् अवलम्ब्य एकां संगोष्ठीम् आयोजयति. अत्र तावत् श्रीमतीनां यस् अहल्या महोदयानां सहयोगेन सां प्रेरणया सां प्रयासेन च इयं संगोष्ठी आयोज्यते. अस्यां संगोष्ठ्यां वस्तुतः विचारद्वयं करणीयमस्ति. मुख्यतया तत्र एकः विचारः दर्शनम् आयुर्वेदश्च अनयोः द्वयोः कीदृशः सम्बन्धः. दर्शनेन आयुर्वेदस्य कश्चन उपकारः क्रियते, किं वा आयुर्वेदः किञ्चित् दर्शनम् आधारीकृत्य प्रवर्तते, एतत् तावत् विचारणीयम्. पुनश्च दार्शनिकाः सिद्धान्ताः कथं कयानीत्या आयुर्वेद सिद्धान्तानां परिष्करणाय, आयुर्वेद सिद्धान्तानां विकासाय प्रवृत्ताः भवितुमर्हन्ति, सहयोगिनः भवितुमर्हन्ति इति तावत् विचारम्. अपरत् तावत् इदं विचारणीयं भवति यत् आयुर्वेदस्य किं वा मेडिकल साइंस इत्यस्य किमपि दर्शनं भवति वा. So we can say that there are two options available to us. One is the relation between philosophy and Ayurveda, medical science, and the second one is philosophy of medical science. And both these points we will have to discuss in the seminar. This seminar had been kept on hold for so many years. I think for 4 to 5 years this seminar was conceived but could not organize. And with the help of Professor Yasarya and Dr. Bhaskar Bhatt and other scholars, other faculty members, the active vice chancellor who is taking care of it, all these people are helpful in organizing this seminar. We are only facilitating, but everything else is being performed by Karnataka Sanskrit University. So this seminar as being organized, actually it is a very good initiative, because the vice chancellor of this university is actually an expert in Ayurveda, and in Bengaluru there are so many Ayurveda scholars. Therefore it was right place to organize this seminar. I thought that I would be able to join the seminar in physical mode, but due to some other reasons
I couldn't come. And I hope that in future also we will organize some program in collaboration with Karnataka Sanskrit University, and where I will be able to join the program in physical mode. This program, which is being organized completely by Karnataka Sanskrit University, I hope that it will be organized beautifully, and later on we will be able to publish an anthology on philosophy and Ayurveda, Darshanam and Ayurveda, एवं Ayurveda इति विषयम् अवलम्ब्य किमपि ग्रन्थरत्नं प्रकाशयितुमपि वयं समर्थाः भविष्यामः इति अहं चिन्तयामि. So, without taking much time, I am concluding my remarks because I am not a scholar of Ayurveda. Only a little bit of Ayurveda I have studied, where it is very much discussing the Nyaya ideas. In Charak Samhita, I have found some ideas which are very much related to Nyaya philosophy. And the definition of perception, the kinds of pramanas, and the types of inference, all these ideas which are found in Charak Samhita are actually very similar to the ideas which are present, which are found in Nyaya philosophy. So that only I could grasp, I could understand, I could study. Not much, and here I am not here not to present my paper. Therefore, without taking much time, I thank you all for organizing this seminar and inviting me to speak a few words. Thank you very much. धन्यवादाः आचार्याः. I would also like to welcome our Vice Chancellor, Dr. S. Ahalya Madam, who is right now visible through online mode. Madam, a warm welcome to you, Madam. Now, I would like to call upon to the stage Professor Ramachandra Bhattji Kotemane Acharya to enlighten us with his thought-provoking speech. सभामण्डपे विराजमानाः विश्वविद्यालयस्य ज्येष्ठ अधिकारिणः, आयुर्वेदसाधकाः, श्रोतारः, जिज्ञासवः, सभ्याश्च. I am very much surprisingly pleased to share some of thoughts here. Just now we heard about some ancient thoughts rooted in the ancient Vedic system, combined with the latest modern fruits of various newly emerging cognizances and thought processes. In our Indian system, we don't segregate. It is very much integrated. So now we are talking about integrative medicine also. If we are thinking about that and experimenting it,
getting very good outcome and result also. So everything it is integrated. In our philosophical system, philosophy is not something secluded branch of science. Science also not like that. Technology also not somewhere arrested in some boxes. Nothing is arrested. Everything it is integrated. That is why nowadays scientific philosophy and philosophical science, these two words also becoming very popular. Because science is divided into 4 types of applications. According to Rigveda based Upanishad Aitareya Upanishad, it is Samujnanam, Ajnanam, Vijnanam, Prajnanam. That is how science is of 4 kinds. Ajnana means it deals with theory of everything. Theory of everything. Vijnanam deals with theory of something. Samujnana means that science which passes through 2 important processes like probing and proving. Probing and proving. Whatever is probed and proven by the evidences and experimentation and evaluation, that becomes science in the modern technology. So, Samujnanam means that philosophical basis which brings together every cognitive system. At that time, Veda says it is everything one and alone, one and only one. Because this whole world is one. It is only 5 plus 3 just for convenience of understanding. What is 5? Panchabhutani. What is 3? Sattva-rajas tamamsi. You can add many more. Ayurveda adds 3 more. Vata, Pitta, Kapha. That is how Ayurveda adds. Just for convenience of understanding of Pindanda, human personality. For convenience of understanding, Nayayikas, they divide Padartha, Sapta Padartha, Dravya Guna Karma Samana Visheta Samvayaha, Shat Padartha, according to Kannada it is. There everything comes, it encompasses everything. Anu, Renu, Trana, Kastha, article, particle, everything comes under this one. Then how can you divide? This is Ayurveda, this is Jyotirvijnana, this is Tarka, this is Nyaya, this is Vaisheshika. Just for conveniences of understanding, these are all different nomenclatures. Sukhabodhaya. That is why Annam Bhatta tells, Balanam Sukhabodhaya Kriyate Tarka Sangraha. We are all balas. That is why for our convenience of understanding, all our Shastrakaras, they divided. So that there are 4 Vedas. Actually Vedas also not 4. On the basis of their intonation and other grammatical distinction and distinct characteristic, they are Ruk, Yajuhu, Sama, Atharva. It is Veda alone, only one it is. Like that Vedangas, we tell, oh, this is Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda, Arthaveda. Some just for convenience of understanding, many great scholars, they have put like this in these terminologies. Nayayikas, they have done
Other Shastrakaras also, they have just for Sukha Bodhaya. Like that, Sapta Padartha and Pramana Mimamsa, all these different type of Mimamsas for just for convenience of understanding. But now already it is Amrita Kala. In this Amrita Kala, we must not go for all these type artificial divisions. Now this is the new age for multiplicity on one side. On another side, it is transdisciplinary study. That is what the real strong point, best practice of this new age of Amrita Kala. Here we cannot go for divisions. So darshanam will be there. Based on darshana, there will be science. And guided by science, there will be technology. That has 3 stages. These are all for practical use. Yes. Now without technological utility, no science will be accepted. Without proper probing and proving and evaluation and sanctification by experimentation, no science will be accepted. They become outdated. Many science theories, they became outdated now. That is why students are not interested. Now people are rushing to engineering. Pure science, many colleges in Mysore, Sharda Vilas College, very famous for pure science, physics, chemistry, biology, botany, geology, mathematics, but no students nowadays. That is why it is applied, mere supplied knowledge, no utility, no yuganukula, no kala prasaktihi, no time testing. That is why now this is the age for integration. Integration, that is the real mode of application. That is why it is wonderful and very much suitable to this ever-changing scenario, global scenario of scientific field. You must go for new things. New dawn is very much visible. So it is this particular organization, this particular place, actually this place is named for all insights. Here many great scholars, they could share our ancient knowledge system, like Indian knowledge system. I just recollect those days where such great scholars coming from all different disciplines of Rishi Sampradaya, Rishi culture, sitting together, sharing their knowledge. From 1968, how many type of deliberations, discussions, Vakyartha Sabha, Shastra Charcha happened here in this sanctum sanctorium, in this ambience. I am very proud of. Ataha Shubharambha Darshanam Vijnanam Tantrajnanam Trayamapi Ekarupena Gacchedagre Vishwahitartham for eco-friendly, integrated, all-round, all-inclusive progression of mankind. Om Swasti. ಧನ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ. It's an absolute honor. If we give an opportunity, we can listen to him the whole day. He has got such stamina that you would be loving to listen to his speech. Yeah. Okay. Thank you, Acharya. Now I would like to call upon to the dais Professor Girish Chandra Sir, Vice Chancellor, to address the gathering. Shri Gurubhyo Namaha. Respected dignitaries, esteemed guests and fellow participants, a very warm welcome to each and every one of you. It is with immense gratitude and joy that we gather here today for the national seminar on
Ayurveda and Darshan. First, I extend my heartfelt thanks to Professor Sachidananda Mishra, Member Secretary of the Indian Council of Philosophical Research, for his generous support and commitment in sanctioning this 3-day event. Your guidance and vision have enabled this platform, which will undoubtedly inspire enriching discussion and deeper insights. I would also like to acknowledge Dr. Ahalya S., Vice Chancellor of Karnataka Samskrit University, although she could not join us today. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿನ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಲಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಇವಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪೀಡಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಪರೀತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I would like to express my gratitude towards former VC of Yasvyasa University, Professor Ramachandra Bhat Kotemane. ಕೋಟೆಮನೆ ಸರ್ಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 84 ಇರಬಹುದಾ ಸರ್? 85 75. ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದಿನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ PUC ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗಳು ಅವಳು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೀ 15,000. ಅವಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯವರು 3 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ MSc BSc ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ KS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ KS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖಡಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಸನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ನಗ್ನಗ್ತಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸರ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಲಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ, ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸಂಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು. ಇವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಹಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಟ್ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆನಂದ್ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ICPR ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ICPR ಇಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಸರ್, ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಆನಂದ್ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟನಾಥನ್ ಅಂತ, ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಮೂಲಂ ಉತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪರಮಂ ಲಾಭಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಂ ಆನ್ರುಣ್ಯಂ ಅವಿಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳೋದೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ಅವರು ಹೆದರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಾಗ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದಿದ್ರೂ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೀತು. ಆ ಸೆಮಿನಾರು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ MLN ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಅವರು ಇವಾಗ ತಾನೇ ದಿವಂಗತರಾದರು. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಂಸ ಏನಾದ್ರು ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಮಾಂಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇರುವೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋರಂತೆ. ಆ ಇರುವೆಗಳು ಅವು 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾಗಿ ಆ ಗಾಯದ ಛೇದ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದ 2 ಸೈಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಭದ್ರಾಗಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಗಾಯವಾಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 3 ದಿನವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಅಲುಗಾಡದೆ 3 ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ. ಈ ICPR ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now the customary vote of thanks. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Dr. S. Ahalya Madam, Karnataka Samskrit University. Although she could not join us physically due to unfortunate circumstances, it is only because of her dedication and leadership that we are organizing this program. Next, I would like to express my profound gratitude to Professor Sachidanand Mishra ji, Member Secretary ICPR, as rightly pointed out by In-charge Vice Chancellor Girish Chandra ji, for his generous support in sanctioning the 3-day event. Sir, your guidance and vision will undoubtedly inspire enriching discussions and deeper insights.
A special thanks to Mr. Vishwanath Hiremat sir, Registrar Karnataka Samskrit University. Even though he is very busy, but still he gave his time with his gracious presence and unwavering support. A small token of gratitude from our organizing committee, sir. I would also like to extend our heartfelt gratitude to Dr. Srivatsa, Professor and Head of the Department Samhita Siddhanta and Sanskrit, for accepting our invitation as keynote speaker. Sir, since we are running out of time, your next session would be inclusive of both keynote address and your speech, sir. Your insights are deeply appreciated, sir. I would like to extend our profound gratitude to Professor Ramchandra Bhatt G. Kotemane Mahoday, who is a scholar par excellence in the field of Shastras, for accepting our invitation and gracing us in this journey. I would also like to express my gratitude to Anand Katti sir, who has been with us in this journey from day one. Katti sir. Request Girish Chandra sir to honor Katti sir. Now I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor Girish Chandra sir, to please be seated and receive the honors from as a token of gratitude from the organizing committee, sir. Request Kotemane sir and Bhaskar Bhatt ji to do the honors to the Vice Chancellor. Request Hiremat sir to do the honors. Present the memento. Furthermore, I would also like to express my sincere thanks to Dr. Bhaskar Bhatt Joshi ji, HOD Department of Nyaya Visheshika, who has been one of the main pillars in organizing this program. I would also like to extend my gratitude to our co-coordinators, Dr. Vedesh Nagasampike, Guest Faculty, Department of Nyaya Visheshika, Dr. VVSR Lakshmi, Assistant Professor, Department of Nyaya and Visheshika, Mr. Praful Trivedi, Mr. Vaishak, Vidwan Nagendra Murthy, and all the others who helped us in organizing this program. I would also like to thank Dr. Prabhu Swami, Assistant Professor, Department of Manuscriptology, Dr. Tejaswini D, Planning Assistant, Karnataka Sanskrit University, Dean and HOD, Department of Vedanta, Dr. Vinayacharya, for being present with us in this program. Thank you, one and all. Now, in another 5 minutes, we will start the session. Dr. Srivatsa sir will keep us engaged with his talk. Yeah, Srivatsa, Professor and Head, Department of Ayurveda Samhita and Siddhanta, Government Ayurvedic College, Mysore. It seems like sir doesn't need any introduction. When I saw everybody was going towards sir and said that sir, you have come, very happy to see you. So it seems like all the participants are well aware about sir, it seems. He is new to us actually, but you people are well aware with sir, it seems. So on a academic front, it seems sir is having an experience of more than 23 years of teaching in both UG and PG studies, and he has guided more than he has guided postgraduate dissertations since 14 years, okay,
and then it seems like highly efficient scholar who is with us, and may I request sir to kindly take over the stage now. किं ज्योतिस्तव भानुमान् अहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीप दर्शनविधौ स्यादेवं रवि दीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादे समये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमिति भवान् परमकः ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ज्योतिस्तदस्मि प्रभो प्रभो ज्योतिस्तदस्मि प्रभो. Once again, feel the sound. Gently open your eyes. Namaste everyone. My pranamas to the Vice Chancellor of this university, Dr. Ahalya S., who is well-known personality in the field of Padartha Vijnana of Ayurveda. Even though she is from the speciality of Shalya Tantra, but she is well versed and she is role model for all of us in the field of Padartha Vijnana. Really, we are missing her today, but it's our customary to salute Rishi Parampara as well as Guru Parampara. So we have to salute her, we have to respect her. It's our Bharatiya Parampara. I started my talk with the hymn of Adi Shankara. It is called as Ekashloki. It is representing the summary of all the darshanas. It is representing the summary of Ayurveda too. Actually, it is presenting the conversation between the seer as well as disciple. Guru Shishya Sambhasha is that one. So in that, the conversation starts from the external world. Shishya goes on asking the question to the Guru just about the source of knowledge as well as method of knowledge, how it goes on. So it starts from the visible world. So then the discussion goes on into the deeper aspect of knowledge production. Ultimately, it ends up at the concept of Aham Brahmasmi. This is what all the darshanas are speaking about. This is what Ayurveda too is speaking about. As I'm the person who is supposed to talk about Yoga Darshana,
along with that one transdisciplinary approach in all Bharatiya Vidya. So I thought this will be the ideal way of starting my talk. Whenever we talk about yoga, we have different streams of yoga nowadays, which are emerging and which are in practice. Amongst them, mantra yoga and nada yoga are having utmost importance. So whenever we talk about yoga, we are not supposed to talk about yoga. We are supposed to practice yoga. So with the limited time, I cannot involve you all in the practice of yoga. So I can just to show you some sample. That's why I have selected mantra yoga as well as nada yoga today. So as the representation of mantra yoga, I have selected Eka Shloki, which takes all of us towards the ultimate progress of our lives. I have selected Raga Pantuvarali from Karnataka Shastriya Sangeeta, which always speaks about unison or which always speaks about Ekatva. To highlight Ekatva, the ideal Raga in Karnataka Shastriya Sangeeta is Pantuvarali. That's why I have presented the Ekashloki of Adi Shankara in Pantuvarali. With this, recently I come across with one book. I read a book 2-3 days back. I felt this statement of that well-versed great philosopher. Can anyone tell who is she? Sir, neevalla sir. She is Veena Bannanje, daughter of the great philosopher, Dvaita philosopher Bannanje Govindacharya ji, and she is the disciple of Satyakama. She has written one book, just I have gone through that one, Allamopanishad. In that I come across with very beautiful views of Veena Bannanje. It's like this. I think all of you can understand Kannada. You expect me to explain that in English. I will explain, don't worry. So it goes on like this because this is the theme of all darshanas. That's why I thought this will be the ideal statement from which I can start my talk. It goes like this. Devarilla in the Charvaka. So we all know that Charvaka said he has not accepted the presence of God. ಅದುವರೆಗಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಋಷಭದೇವ ಪಂಥ. So we know how Jaina philosophy developed and how parallelly it is developing till today. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಬುದ್ಧ. So how Buddha philosophy come into picture. So that is mentioned here. So there is nothing permanent in this universe. That's what Buddha said. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. So we have so many philosophies which are having source, which are having origin here only in Bharata. Ivarade ಒಂದು ದಾರಿ. All of them, they had their own pathway. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ಹಸಿವು. Why so many streams of philosophy they developed? All of them, they were having the hunger of getting the knowledge. They were seeking for the light of knowledge. ಬೆಳಕಿನ ಹಸಿವು. ಬೆಳಕು ಹುಡುಕುವವ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. So if you are seeking for the knowledge, certainly you will grow. Otherwise there will not be growth. ಅದು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. So the source of knowledge or the light of knowledge not only helps for the development of that person who is seeking for the light of knowledge, it also helps or it also provides light for the followers of that person. So that's why we have followers, pantha we have. ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದರೆ. So if you restrict the pathway of getting the light, then automatically what happens? Person or persons will not be able to get the light at all. So we are not supposed to restrict. In Bharata, there is no restriction for learning. There is no restriction for education. It's expansive. Adu belakaditu hege. So if there is restriction, certainly it will not be the light or it will not be the light of knowledge. ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಲವು ಕಿರಣಗಳು, ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು. We know that
life is having innumerable rays, life is having innumerable colors. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದವನಿಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ಕೆ. So if you keep your eyes open, then only you will be able to perceive all rays of light, you will be able to perceive all colors of light. ಯಾವ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So if you want to trace a single ray, then you will not get light at all. So you should try to trace light through all rays. ಸಿಕ್ಕ ಬೆಳಕು ಅವರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. So if you got the light of knowledge, automatically what happens? There will be transformation in the personality. ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸದವ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿಲ್ಲ. So if you are not ready for the transformation, then it's not possible for you to get the light at all. ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಒಳಗಣ ಬಲ. So that is the strength of that particular light of knowledge. ಆ ಬಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವ ದುರ್ಬಲನಲ್ಲ. So if you have surrendered for such type of light, automatically you will become strong enough in this universe. ಧೀರರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ. So if you have that courage, certainly you will follow that path of light. So this impressed me much. That's why I thought of sharing the views of Veena Bannanje, so that you will get why we have so many diversified philosophical thoughts, philosophical streams in Bharata. I'm stressing Bharata because nowadays we all know we are supposed to consider Bharata as well as Bharatiya Vidya. So that's why I'm stressing that particular word. The vision for my today's presentation, at the end of this session, let us get sensitized. It's a process of sensitization about Bharatiya Vidya, about transdisciplinary orientation, yoga versus Ayurveda. The mission which I have planned for today's presentation, the tattva for today's presentation will be Bharatiya Vidya Paddhati. The Vidhana will be transdisciplinary orientation. The Vishaya for today's talk will be Yoga Darshana. The Tarka will be the association between Yoga Darshana as well as Ayurveda. Prayoga will be application. As we all are Vaidyas, ultimately at the end of my talk, all of us should get enriched with Prayoga, which is very important one. That's why I thought of sharing a Prayoga also with you all. With this, let us move on to the first component and second component together, Tattva as well as Vidhana. We all know this. Just yesterday, of course today too, a very auspicious day for all of us. Who is the Yogeshwara? When I'm talking about Yoga, Yoga Darshana, Ayurveda, we have to salute Yogeshwara, which is very important one. The theme of his views is Tat Tvam Asi. This is what Ayurveda 2 speaks about. We talk in another form, Loka as well as Purusha, and ultimately union of Purusha with Loka, which is the goal of Ayurveda 2. This is the basic seed of all Bharatiya Vidya. This is what we are supposed to sense. I'm not going to talk about all 64 kalas of Ayurveda or kalas of Bharatiya Vidya or all existing Bharatiya Vidyas. In summarized form, how Bharatiya Vidyas are in practice, how Bharatiya Vidyas emerged, that I'm going to talk about. So the seed for all Bharatiya Vidya is this Tattvamasi, because of which we are all trying to learn and work on this particular principle. The whole universal phenomena has been explained in all Bharatiya Vidya in these orientation, that is Karya and Karana. All Bharatiya Vidyas are having certain Karanas and all Bharatiya Vidyas are moving towards Karya. Similarly, all Bharatiya Vidyas are designed based on the principles of cause and effect, and all Bharatiya Vidyas are giving importance for Vyakta component, Avyakta component, and conversion of Vyakta to Avyakta or Avyakta to Vyakta.
This is what all Bharatiya Vidyas are talking about. Similarly, as we all know, they are either talking about Shakti, or they are talking about Dravya, or they are talking about the prakriya of conversion of Shakti to Dravya or Dravya to Shakti. Similarly, all Bharatiya Vidyas are highlighting the concept of Sthula Sukshma and Shakti Shiva. So this is the universal principle based on which all the Bharatiya Vidyas have been designed. We should have this background, which is very important. Then it will be easy for us to know the construction of all Bharatiya Vidyas. Let us try to know about, I'm just presenting all Bharatiya Vidyas under the heading of Ashtanga Bharatiya Vidya, so that it will be easy for all of us to catch the concepts. The first component, the Prathama Anga of all Bharatiya Vidya is Adhikarana. For all Bharatiya Vidyas, the Adhikarana is Loka and Purusha. If you take Sangeeta, Karnataka Shastriya Sangeeta is the mother of all forms of Sangeeta, because we have such a strong historical background for that, we have such a strong foundation for that. It has been designed based on the principles of Chaturveda. That's why we consider Karnataka Shastriya Sangeeta as the root for all other forms of Sangeeta. In that also, when they are talking about a Saptaswara, they have taken the naturally available sources and based on them they have designed Saptaswara. So each Swara has been selected from different cry of animals, and based on that Saptaswaras have been designed. So this is applicable even for Yoga Shastra, Yoga Darshana also, wherein when you look into different asanas have been named depending on Prakriti or depending on Loka. So it might be the names of different animals, or it might be based on different objects existing in the universe, like Vrikshasana, Parvatasana and so on, Marjarasana, so on. So the Adhikarana for all Bharatiya Vidyas is Loka and Purusha. This is what we are supposed to know always. Ayurveda is also not exception. I am not talking about the components of Ayurveda much, because all of you are aware of that. I am just telling how other Bharatiya Vidyas are related with Ayurveda. That's what I want to highlight. Moving on to the second Anga, Jnanopaya. When you go through any Bharatiya Vidya, they follow the method of Pariksha. There are different Parikshas according to different schools of Bharatiya Vidya. It might be Pratyaksha, Anumana, Aptopadesha, Yukti, Aitihya, many more. So these are all the Jnana Upayas which are incorporated in the form of Pariksha, which are incorporated in all Bharatiya Vidyas. This is what we are supposed to know. This is common for all Bharatiya Vidyas. Moving on to the third one, Vyakhyana, how the narration of the concept has been made in all Bharatiya Vidyas. So in all Bharatiya Vidyas, they focused much on the disciple. The status of disciple has been kept very significantly in mind, and they have designed the concepts. As we have the description in Ayurveda like Trividha Shishya Buddhi Hita, similarly in Patanjala Yoga Darshana, we have the description Adi Madhya Adi. So there also Pravara Madhyama as well as Avara Buddhi of a person has been kept in mind, and the description has been provided. There is no exception even in Sangeeta Shastra also. It might be in Sangeeta Ratnakara or Brihadeshi. In all the texts of Sangeeta, we get the description of the principles of Sangeeta which are applicable for the students of all level of intelligence. So Trividha Shishya Buddhi Hita is the method which has been followed to narrate the concept in all Bharatiya Vidya. Moving on to the fourth one, Prayojana is common in all Bharatiya Vidyas. Either they are targeting the excellence of self, or they are targeting the excellence of universe, or they are targeting moksha, kaivalya, whatever it might be. So I have mentioned it as ayusarthakya and moksha. So this is the ultimate goal of all Bharatiya Vidyas. There is no exception. Moving on to the fifth Anga, that is Vidhana. So whenever we look into the narration, either they followed Sankshepa Vistara, or they followed Samasa Vyasa, or they followed Utsarga Apavada.
If you go through Charaka Samhita, you get all these terminologies. In all other Bharatiya Vidyas also, they followed the same method. I mean to say, they have explained some general rules and regulations which are applicable. For example, when you go through the description of a Sadvritta, so the principles of Sadvritta are applicable universally for everyone. You should tell truth. That is not based on Purusham Viksha, right? So everyone should follow that. At the same time, when the question of Ahara and Vihara comes, that is based on the specification. Even for yoga also there is no exception. So yoga abhyasa has to be done based on the individuality. We are going to discuss that later. So the same thing is applicable even in Sangita Shastra also. They say this particular raga is meant for the management of this particular vyadhi. This particular mantra is meant for the management of this particular vyadhi. That is the general description. Again, depending on the Purusha, again depending on the person, we are supposed to manipulate and we are supposed to apply that. So that's why those who have heard my earlier speech, usually I present Pantuvarali repeatedly at different platforms. So it is not like the ragas are going to be repeated. Certainly no. Depending on Manodharma, I change the pattern of a presentation, and depending on the Parishat, I change my presentation. So that is again based on Purusham Viksha. That's what I wanted to specify here. The Vidhana again is common in all Bharatiya Vidyas. There is no exception even for Chatushashti Kala. There also we have the same style. There also we have the same method of narration. So this is the fifth anga I wanted to share with you. The sixth anga of all Bharatiya Vidya is Vikalpanam, wherein they followed the specific method of narration under three headings. First one is Tattva, second one is Tarka, third one is Prayoga. In all Bharatiya Vidyas, they have given utmost importance for Prayoga too. This is what we are supposed to keep in our mind. So if you are asking about Tattva Shastra, it's having Anmaya, Prayoga. If you are having Paka Shastra, it's having Tattva. It's not only Prayoga, it's having Tattva too. Paka Shastra has been developed like anything. We have so many principles there. You get many literatures in Paka Shastra also. You can refer them later. So what I mean to say here is, it might be Ayurveda, or it might be Yoga, or it might be Sangita, or it might be Tattva Shastra, or it might be Jyotisha, whatever it might be. So all forms of Bharatiya Vidya are built up based on Tattva, and it is not like rule. You have to follow this. This is the regulation you are supposed to follow. It's not like that. They have given scope for you to think logically, and they have given provision for you to add some analytical view. They have given scope for you people to have some applied aspects. This is the beauty of Bharatiya Vidya. So in Bharatiya Vidya, I don't want to use the term freedom. Swatantriya is much for the disciple. But nowadays, unfortunately, we converted that Swatantriya into Svecha, because of which all the Bharatiya Vidyas are getting distracted. So please note this. We have the freedom, or we have the Swatantriya to develop based on the Tattva which is existing. Based on that, we can have our Tarka, based on which we can have our Prayoga. So this is common for all Bharatiya Vidyas. The seventh one, Yojana. So we are restricting ourselves only for the sutras which are available. Apart from sutra, we have bhashya, we have vyakhya, we have tika. In all the streams of Bharatiya Vidya, we should know that, and we should make use of them for better understanding of Bharatiya Vidya. So there is no exception for any streams of Bharatiya Vidya. You get Shastra, you get Sutra for all Bharatiya Vidyas, you get Bhashya, Vyakhya also for all Bharatiya Vidyas. The last one, which is very important one, each Bharatiya Vidya is having its own Nirnaya. That Nirnaya is Traikalikam.
They have given scope for expansion always. They have given principles in such a way that they were applicable earlier, they are applicable today, they will be applicable tomorrow, forever. This is the beauty of narration, what we have in all Bharatiya Vidyas. We are supposed to realize it. Beyond all these, all Bharatiya Vidyas are originated from Deva Parampara and Rishi Parampara. So if you go through Natya Shastra, if you go through Sangeeta Shastra, it's having its own Deva Parampara, it is having its own Rishi Parampara. The same thing is applicable for Vedas, the same thing is applicable for Ayurvedas, the same thing is applicable for Yoga, many more. So everywhere we get the description regarding Deva Parampara as well as Rishi Parampara, and if you want to excel in any field of Bharatiya Vidya, we should respect Deva Parampara as well as Rishi Parampara. So if that is not respected, if that is not followed, certainly we will not be able to study Bharatiya Vidyas. This is what we are supposed to keep in our mind. Nowadays, as you all know, as we all know, we are converting all Bharatiya Vidyas into current education system by forgetting the basic methodology of narration, basic principles of narration. That should not be done. The day when you respect Bharatiya Vidyas, then you have to respect Rishi Parampara as well as Deva Parampara. Then you will be able to get success in this particular area where you have scope always. Let us have a brief view of all Bharatiya Vidyas. As you all know, mainly we categorize Bharatiya Vidya into two, Deva Parampara, Shruti as well as Smriti. Under Shruti, we have all the Vedic flow. For all Bharatiya Vidya, the source is Veda. So that's why we get all those commonalities, whatever I shared till now. Why we are getting commonalities in all Bharatiya Vidyas? This is the reason. The main source for all Bharatiya Vidyas is Chaturveda, what we have, and the subdivisions of Veda like Samhita, Aranyaka and so on. Of course, Smriti too, wherein we have Upaveda, Dharma Shastra, many more. And there we have the description of Ayurveda too under Upaveda, and we consider Ayurveda as Upaveda of Atharvana Veda also, as you all know. And Darshana is also a part of Smriti. All these are having the common stream or common pathway as Veda. This is the reason why we are getting commonality throughout. This is what we are supposed to sense always. It is not like Ayurveda borrowed the concepts from Darshana. Darshana has borrowed some concept from Ayurveda. Ayurveda has taken some concept from Yoga. Or Sangeeta has taken some concept from Ayurveda. It is not like that. They are all having common source as Vedas. That's why we are getting some common informations in all Bharatiya Vidyas. So this is what we are supposed to know always, which is very important one. With this, we will enter to the third component, that is Yoga Darshana, which has been developed very beautifully again from Veda Kala till today. Mainly, as we all know, we get the description principles of yoga from Veda, then it moves further. Even in different Upanishads too, we get some principles, the concepts of yoga there itself. Ultimately, the proper shape of Yoga Darshana developed during the period of Patanjali or Patanjali, who gave a very specific form for yoga in the form of Yoga Sutra, which is having 4 important padas. We are going to talk about that later. But Dasha Upanishads contribute significantly for the development of Yoga Darshana. This is what we are supposed to know always, which is, even though we have many more Upanishads, but ultimately Dasha Upanishads are contributing significantly for the development of yoga as well as Yoga Darshana. In between, we have the description regarding Bhagavad Gita too, which is contributing significantly for the principles of Yoga Darshana. We should know that, as we all are aware of, there are 18 adhyayas in Bhagavad Gita. The first 6 adhyayas of Bhagavad Gita are talking about the Tvam Tattva,
Whereas the next 6 chapters of Bhagavad Gita are talking about Tat Tattva, whereas the last 6 chapters of Bhagavad Gita are talking about Asi Tattva, Tattvamasi. So, Bhagavad Gita provides a very good base for understanding the concepts of yoga as well as Yoga Darshana too. So, we cannot neglect the contribution of Bhagavad Gita here. Apart from that, when we look into the progression of Yoga Darshana, so we can categorize that as foundational period, progressional period as well as applicational period. That is just based on the development of yoga which took place. So under foundational period we have Upanishad as well as Bhagavad Gita, whereas under the second stage, that is a progressional period, we have the development of Yoga Darshana, we have development of various other texts of Yoga Shastra like Shiva Samhita, Gheranda Samhita, many more. Of course, we cannot neglect the contribution of Yoga Vasistha also here. And during the phase of application, that is recent period, the contribution of Swami Vivekananda, Aurobindo, many more, they have contributed significantly in application of the concepts of yoga which have been existing in our country. So moving on to the description of Shaddarshana as a whole, which is base for all of us to know. When we look into the Nyaya amongst Shaddarshanas, they have coupled, as you all know, depending on the commonality of the subjects, we categorize them as Nyaya Vaisheshika, Sankhya Yoga, Mimamsa Vedanta. So we all are aware of this one. So that is a categorization which has been made based on the subjects which have been shared by two Tattva Shastras or two philosophies. Nyaya Vaisheshika, they are it is not like Nyaya Vaisheshika is only talking about that particular subject. It is talking about some other subjects too, but mainly Nyaya Vaisheshika is focusing on understanding the materialistic world. Analysis of materialistic world has been focused significantly. Understanding Loka significantly has been highlighted in Nyaya Vaisheshika, whereas in Sankhya Yoga, importance has been given for understanding self. Purusha Jnana. It doesn't mean that Loka has been neglected, but the importance has been given for Purusha Jnana, whereas Mimamsa as well as Vedanta has highlighted much about the association between Loka as well as Purusha. So this is how the construction of subject has been followed in Shaddarshana. So when we look into the Kala of Yoga Darshana, it is applicable for all darshanas. Again, we have the description of concept under two stages. One we call it as Sutra Kala, second one we call it as Vritti Kala. So in Sutra Kala, all the concepts have been explained in very brief manner, whereas in Vritti Kala, so the concepts have been expanded in the form of Vyakhya, Bhashya, many more. So this point we have to keep in our mind, which is very important one. So we all know who contributed significantly for Yoga Darshana. We are aware of that. Patanjali's contribution we cannot neglect. We have to consider. He is the Acharya of Yoga Darshana, we all know. So apart from that, we have many more informations regarding the literature of Yoga Darshana. I am not going to touch that part significantly here. We have Pracharakas, we have Anushasakas, we have Pravartakas. Many such personalities are there in Yoga Darshana. So, but we should be aware of that one. I want to highlight this point very significantly here. Please don't neglect literature when you are studying Bharatiya Vidyas. This is what we people are doing nowadays. We are behind Prayoga. We think Prayoga is ultimate. We are not giving importance for Shastra. As I always used to tell, we have millions of literature related with Bharatiya Vidya. It might be in the form of published, unpublished manuscripts, whatever it might be. Unfortunately, we are not giving importance for that one at all. So if you want to flourish in any Bharatiya Vidya, first you should focus on Shastra, literature. Don't neglect that. Yoga Shastra or Yoga Darshana is not an exception for this one. We have to keep this point in mind. So Nirukti of Yoga, all of you know, I think need not necessary to highlight that significantly.
It starts from Chitta Vritti Nirodha. It moves on like Yoga Karma Sukaushalam Samatvam Yoga Uchyate. So like that we have many definitions. All of you are aware of that one. So I'm not going to explain those points here. We have many streams of yoga nowadays, more than 80, 100. Every person, as I already mentioned the points, words of Veena Bananje. So every person, whenever he feels or he or she sees some portion of light, they feel that now I'm able to spread this light so that everyone starts developing his or her own school. So that's why we have many schools of yoga nowadays. But apart from that, significantly when we go to the classics, mainly we come across with 4 streams of yoga, as you all know. First one is Jnana Yoga. Second one is Bhakti Yoga. Third one is Karma Yoga. Fourth one is Raja Yoga. So all of you are aware of this. All of you know what Jnana Yoga speaks about, what Bhakti Yoga speaks about. The core component of Jnana Yoga is to attain knowledge. Core component of Bhakti Yoga is attain the success, attain the completion by following the path of Bhakti. Karma, so by doing selfless action, how you can get success in your life or how you can have the feeling of completeness in your life. Raja Yoga, it's a pathway of self-regulation, what we are having nowadays. Let us have brief note about Patanjali Yoga Darshana, because which is very important one, which is having 4 important padas, as you all know. The first pada of Patanjali Yoga Darshana or Yoga Sutra is Samadhi Pada. It starts with Samadhi Pada. There are 4 padas. Second one is Sadhana Pada. Third one is Vibhuti Pada. Fourth one is Kaivalya Pada. The first pada, Samadhi Pada, it is highlighting the contributions of yoga if followed. That's what Samadhi Pada speaks about. So many people, they say that Samadhi Pada is the representation of Bhakti Yoga. The second one is Sadhana Pada, which speaks about the methods to be followed to get the completeness in the life. So people, they relate Sadhana Pada with Karma Yoga. Many scholars, they relate Sadhana Pada with Karma Yoga. The third one is Vibhuti Pada, which makes the individual to realize self. So that's why this is related with Jnana Yoga by many scholars. The last one is Kaivalya Pada, which is related with Raja Yoga by many scholars, which ultimately speaks about the positive stage of the individual. How yoga looks into human, that also we are supposed to know. I am not going to explain every component here. The point here is Yoga Darshana looks into Purusha in a similar fashion how an Ayurveda person looks into Purusha. But the informations are in present in very diversified way, which we are supposed to know. We get the description regarding Purusha in the form of Pancha Koshas in yoga, as you all know. Vijnanamaya, Anandamaya, Annamaya, Manomaya, and so on. And we get the description regarding Purusha under the heading of Shat Chakras 2. And we get the description regarding Purusha under the heading of Prana. And we get the description regarding Purusha under the heading of Nadi. So these are all the components of Purusha which are explained in a very diversified way in various texts of Yoga Darshana. We all know about Ashtanga Yoga. These Ashtanga Yogas are categorized into 5 important practices. The first one is ethical practices, what we are supposed to know, which are nothing but Yama as well as Niyama. The second division is physical practices, which are nothing but Asana and Pranayama. The third division is sensorial practices, which are nothing but Pratyahara. The fourth division is mental practices, which are nothing but Dharana and Dhyana. The fifth one is spiritual practice, which is nothing but Samadhi. So we know about this one. Now
let us try to know how Ayurveda is related with the principles of Yoga Darshana. As I stated earlier, again I am telling the same thing. It is not like Ayurveda has borrowed some informations from Yoga Darshana, or Yoga Darshana has taken some informations from Ayurveda. We are getting some resemblances between these two, which we are supposed to sense, because it is playing important role in application, that I will tell later. In both Yoga Darshana as well as Ayurveda, we get the description regarding few concepts like Vyadhi, Alasya, Pramada, Avirati, and so on. That's common for both Ayurveda as well as Yoga. Similarly, when we look into Siddhi, the concept of Siddhi is common in almost Yoga Darshana, Patanjala Yoga Sutras, and also in Ayurveda. Similarly, the concept of Brahmacharya, what we have in the texts of Ayurveda, especially in Charaka Samhita and also in Patanjala Yoga Darshana, that's almost resembling with each other. The concept of Indriya Nigraha, what we have in Patanjala Yoga Darshana, and the concept of Sattva Vajaya, what we have in Charaka Samhita, both the principles are having resemblances. Importance for Vayu or Vata has been provided in Ayurveda, as you all know. Utmost importance has been provided in Charaka Samhita. The same style of narration we get in Yoga Darshana too. Apart from that, we have the description of Sadvritta, we have the description of Achara Rasayana throughout in Charaka Samhita, which is having resemblance with the principles of Yama as well as Niyama, which are explained in Patanjala Yoga Sutras. Coming to the relevance of Ayurveda as well as merging of Ayurveda as well as Yoga Darshana, which is very essential nowadays. When we look into the definition of yoga as per Yoga Darshana, and when we look into the definition of Ayu as per Charaka Samhita, and also the definition of Sattva Vajaya Chikitsa in Charaka Samhita, they are having resemblance. In both the context, we are observing the similarities. As I already mentioned in the beginning, how Bharatiya Vidyas are sharing the common platform, there I mentioned the goal of both Ayurveda as well as Yoga Darshana are having the similarities. Kaivalya is the goal of Yoga Darshana. The same form of narration of Satya Buddhi we have in Charaka Samhita. Not only Satya Buddhi, the description of Satya Buddhi what we have in Charaka Samhita, and the description of Ritambhara Prajna what we have in Yoga Darshana, both are having commonality. That's the beauty what we can see in all Bharatiya Vidyas. When we look into Anga, of course Ayurveda is having Ashtangas, but Ashtangas are based on specification, whereas the Ashtangas of Yoga are based on progression. So it is not like Yama is having independent existence, Samadhi is not having relativity with Yama. It is not like that. But both are sharing that commonality amongst Anga, which we are supposed to know. And in both Ayurveda as well as Yoga Darshana, we get the measures which help for the maintenance of health, measures which help for the eradication of the disease. So Swasthya Rakshana, Vikara Prashamana are targeted in both Ayurveda as well as Yoga Darshana. In Yoga Darshana, instead of Vikara Prashamana, we get the term Ashuchikshaya. Okay, so when we look in deep into Yoga Darshana as well as Charaka Samhita, we get many descriptions. As I already mentioned, the concept of Vyadhi is almost similar in Ayurveda as well as Yoga Darshana. So when we look into the measures for the maintenance of Swasthya, they are also having resemblance. In Yoga, we have the practice of Ashtanga, whereas in Ayurveda, we have the description regarding Chikitsa, as well as we have the description regarding measures for the maintenance of Swasthya like Dinacharya, Rutucharya, Sadvritta Palana, and so on. Now, let us move on to the most important component of my talk, that is Prayoga. Knowing Prayoga of Yoga Darshana is very important one. Being the practitioners of Ayurveda, if you are not incorporating the principles of yoga in your practice, then the Chikitsa will be incomplete. Because yoga guides us, Yoga Darshana throws light at different levels
for chikitsa, which we are supposed to keep in our mind, which is very important one. How the principles of yoga as well as Ayurveda are interwoven. At the level of prayoga, I will just give you few clues so that we will sense why application of yoga is so important in chikitsa. That will be sensed by all of us. When we look into the description of Vata Upakrama, which is mentioned in Roganikam Vimanam Adhyayam of Charaka Samhita, we get few terminologies like Udveshtana, Unmardana, Samvahana, Avapidana. When we look into the terminologies mentioned in the same context for Pitta Upakrama, we get the descriptions like Saumanasyam Sarvabhavanam, Gita Vaditra Shravanam, Shruti Shrutam Manonugatam, like that Gita Vaditra Shravanam has to be done. When we look into Kapha Upakrama, we get few terminologies like Parisarana, Dhavana, Niyuddha, Langhana, Plavana, so on. So when we directly read the descriptions provided in Charaka Samhita, many times we may not get the modes through which we can incorporate these procedures. But when we take the support of Yoga Darshana in the form of asana, pratyahara, dharana, dhyana, pranayama, certainly we can provide objectivity for these upakramas mentioned under the heading of Doshopakrama. Similarly, the concept of Nidana Parivarjana has been designed certainly based on the principles of Jnana Yoga. All upakramas are designed based on, or all upakramas are having the resemblance with the principles of Karma Yoga. The methodology of Daiva Vyapashraya Chikitsa, which has been mentioned, the principles of Daiva Vyapashraya, which is mentioned in Charaka Samhita, seems to be having strong association with Bhakti Yoga. And of course, when we look into the management of various diseases like Sadyovrana, Rajakshma, Prameha, Murcha, Gulma, Vatarakta, Shvasa, Hikka, many more, at every context, we get few principles which are having resemblance with few principles of application of Yoga Darshana. So this point should be kept in our mind. Then our approach towards these diseases will be entirely different. Currently, we come across with, or we get so many specialities in the field of yoga which we are supposed to know. We can categorize those specialities like yoga expert, yoga therapist, yoga healer, yoga conqueror. But unfortunately, we are getting only commercialized yoga much nowadays. There is need to think about these specialities, and we should fit at any of these levels, which is very important one. Common technologies incorporated in yoga practices, as you all know, it starts from Kriya, Asana, Mudra, Bandha, Pranayama as well as Dhyana. These are all the common practices what we get. But while doing Kriya, just like the application of Panchakarma, we should keep the points in our mind. We cannot advise all forms of Kriya to all persons. Being Vaidyas, we should be aware of the condition of the patient, and accordingly the Kriya has to be incorporated. Whenever you are incorporating yoga practices, especially Kriya, Asana, Bandha should be kept in mind. Of course, Pranayama can also be not neglected, but Kriya, Asana and Bandha should be advised very carefully, which is very important one. For maintenance of health, when you are applying the principles of Yoga Darshana, you should keep few points in your mind, which is very important one. Based on Prakriti, we should advise yoga practice. It should not be mass practice. This point we have to keep in our mind, because nowadays, whether it is maintenance of health or whether it is for the management of the disease, many people they advise yoga to everyone in mass. So that's not the way. So if the person is having Kapha Prakriti, you cannot advise him the asanas or any practice
in a slow mode or in a slow pace. So there, when you look into connect with the kapha upakrama which has been mentioned earlier. Okay, so there Langhana, Plavana, Vyayama, Niyuddha, many more have been mentioned. So you should go for dynamic yoga there. So when you come across with a person who is having Pitta Prakriti, for them we should go for the practices of yoga having tranquilizing effect. So in this way, we have to manipulate the prayoga of Yoga Darshana, which is very important one. First, focus on understanding the individual, which is very important one. Then, analyzing body-mind mechanism of the person is very important one. Accordingly, different yogic practices should be incorporated. Knowing the profession is very important one. Without knowing the profession, you are not supposed to advise yoga practice for anyone. If the person is having much of physical activities in his profession, then you should go for relaxing techniques much in the yoga practice, which is very important one. If the person is having sedentary professional activities, then you should go for dynamic form of yoga, which is very important one. So knowing the profession and accordingly applying the principles of Yoga Darshana in practice is very important one. Moving on, fourth one, this is evident even in Yoga Darshana also. Always give importance for Desha Kala. Without considering Desha Kala, you are not supposed to advise yoga practice at all. A person who is located in desert area, I mean to say much sunny places. So if you advise him to have much of dynamic yoga, because of fluid water loss, the person will end up with so many complications. So a person who is located in Anupadesha should be managed with dynamic yoga, which is very important one. Similarly, the season. During summer, what has to be advised? During winter, what has to be advised? You should have this sense, which is very important one. Practice of yoga is not fancy, is not fashion, is not circus. It's having its own sanctity. Please make note of it. That's very important one. So consideration of these components, these factors is very important one. Gender consideration should be done. It's not gender bias, for your kind information. Women are more here. So don't think that I'm talking based on gender bias. Certainly no. With gender respect, I'm talking about this one. Woman undergoes so many phases in life, so many changes in life than men. Yes or no? It might be menarche, it might be pregnancy, it might be post-pregnancy, it might be menopause, what not. Nowadays menopause has been divided into pre, peri, many. I don't understand. So rather than pre, peri, I think they can name it as many menopause. Okay. So woman, she undergoes so many changes in her life. Can we advise the same style of yogic practice in every phase? Certainly no. So gender consideration is utmost to get excellence performance of woman in every field. Note this point. So if you want to develop excellence in every field, then you should incorporate yoga according to gender. This is not gender bias, this is not gender discrimination, this is gender respect. Moving on to this next one, whenever you are advising Yoga Darshana for practice, you should create environment in such a way that they should accept it. Acceptance has to be created. Many times it's just like the practice of Ayurveda. You have to create the acceptance, then only the efficacy will be more. This point has to be kept in mind. So you can have few assistances in your yoga practice like Nada Yoga, Sugandha Chikitsa, Varana Chikitsa, many more. Coming to the application of principles of Yoga Darshana in Vyadhi, there are many controversies. Many people, they say yoga practices of Yoga Darshana are meant only to attain moksha, like that. But when we look into the principles of Yoga Darshana of principles of Yoga Sutra of Patanjali, everywhere we get the information in abstract form to use yoga even for
Ashuchi Kshaya, as I already mentioned, that itself is the guideline to use yoga practices for management of different diseases. So when you are incorporating the prayoga of yoga darshan, a few points you have supposed to keep in mind. First and foremost thing, we should understand the person properly. Vyadhi, vyadhita, both should be understood well. Again, the concept of prakriti should be known here. I will give an example, then you will understand this concept very easily. You have a patient who is suffering from hypertension. Okay, so the hypertension is because of hyperlipidemia. You get another patient who is having hypertension, which is because of stress. In both the conditions, can we advise same practice of yoga? Certainly no. So the person who is suffering from hypertension, which is because of a stress, has to be managed based on the relaxing mode of yoga, whereas the person who is suffering from hypertension, which is due to hyperlipidemia, has to be managed based on dynamism of yoga. Again, Prakriti will come into picture here. So we have to keep Prakriti in mind, and whatever the manipulation has to be done, that has to be done, which is very important one. Then when we are advising yoga in the management of various diseases, to have better efficacy of yoga practices, you can use various supports. It might be in the form of chair, pillow. Again, here one point should be kept in mind. Depending on the stature of the individual, depending on the form of the individual, these supports should be used. Okay, nowadays you get all these informations everywhere, especially in the books of respected B.K. Iyengar-ji. You get all the methods of usage of different supports for better efficacy of different asanas. But while incorporating those technologies, you should be aware of the build of the person, which is very important one. Don't neglect this. While advising the practices of yoga for the management of diseases, three components should always be kept in mind. One, posture. Second one, breathing. Third one, capacity. So you cannot ask the person to do particular asana or particular pranayama as per your schedule. You do Nadi Shuddhi pranayama for 15 minutes. You do Kapalabhati for 15 minutes. That's not the way of advising yogic practices at all. So again, you should keep the condition of the patient, the condition of the disease, and accordingly the manipulation has to be done, which is very important one. So whenever you are focusing on asanas, of course, keep one point in mind. Yoga therapy means advising only asana and pranayama or dhyana. Certainly no. Just like incorporation of Nidana Parivarjana in Ayurveda, which starts from removal of Asatmyendriyartha Samyoga, yoga therapy always starts with incorporation of Yama Niyama. Without Yama Niyama, if you advise asana pranayama, again, the level of success will be very minimal. Please make a note of it. Okay. Of course, when we are incorporating asanas, few points we are supposed to keep in mind. So your asana vinyasa should have forward bending, backward bending, side bending, twisting and inversion. All the modes of asana should be there, which is very important one. Similarly, there must be standing, there must be sitting, there must be supine asana, there must be prone, and many more. To have proper incorporation of yoga sutras in practice, we should know Panchadasha Sutras. Let me share Panchadasha Sutras with you, which is very important one. First one is, these Panchadasha Sutras are extracted from the principles of Yoga Darshana only, Patanjali Yoga Sutras only. Just I used some simple terminologies, that's all, so that all of you can understand the principles. First one is Nishchitatva. So we should decide, I should do this.
then only there will be effect of that particular practice. This is the first sutra. Second one, vyavasthitatva. So it should be organized, okay? It's not like he is telling or she is teaching, I'm doing. No. There should be organization of practice, which is very important one. Otherwise, there will not be success in yoga practice at all. The third one is samatva. This has to be followed. There are few asanas or there are few practices which are meant for both the sides separately. Right side and left side, like that. So you have to maintain that uniformity, which is very important one. So if it is done more on one side, if it is done less on another side, that is not acceptable. So samatva has to be followed, which is the third one. This is applicable not only for asana, it's applicable for even pranayama too, where we have different modes. The fourth tattva is dridhatva. So how much is done, that should be done properly, which is very important one. So for if a particular asana is done, it has to be maintained for a while. I'm not telling it has to be maintained for 1 minute, it has to be maintained for 30 seconds. It's not like that, but at least the time has to be fixed, which is very important one. It might be 10 seconds or it might be 15 seconds, whatever it might be. So there should be effort always to maintain that dridhatva, which is very important one. The fifth sutra I want to share with you is ekagratatvam. Why it's important is, so if any practice in yoga is done mechanically, it's of no use. There should be involvement of self. We should present there when we are practicing yoga. This is very important one. It might be the practice of asana, or it might be the practice of pranayama, or it might be the practice of dhyana. So our presence is must. The sixth sutra is sarthakatva. This is very important one. That's why I mentioned earlier also, practicing yoga in mass will not produce this. What happens when you are doing yoga in group, rather than looking into self performance, we are eager to look into the performance of others. Either we will have the feel of pride, or we will have the feel of depression. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ವಾ ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು. So to avoid this, because we expect better efficacy, right? So to avoid this, it's better to have, we are supposed to inculcate this in the practitioner, which is very important one. The feel of sarthakatva, self-satisfaction should be there. We should educate that to the person. So if a person is bending partially for 45 degrees, we should assure him that you go on practicing. It's possible for you to bend more in forthcoming days. We should do that. You may think that these are all negligible components. Certainly no. These negligible components, if incorporated well, you get significant efficacies. Please make a note of it. The seventh tattva is Vikasi Tattva. Every day there should be a bit of progress, which is very important one, when we have to educate that. This is the difference between your aerobics as well as yoga. There is no limit for expansion, vikasa, in yoga, whereas in all other forms it's restricted. Okay, so always here scope. So always we have to educate this, we have to train this, which is very important one. This is 7th sutra. 8th one, kushalatva. Each and, as I already mentioned, each and every person is unique, and the performance of each and every person is unique. So this we have to educate, this sense we have to initiate in the persons who are doing yoga practices, which is very important one. The 9th one, we should motivate in such a way that the practitioner should move on to have completeness. We call it as paripurnatva. The goal is to get paripurnatva. That will not come in 1 or 2 days or 1 year like that. So we should go on practicing it. One day it's possible to have that paripurnatva. 10th one, vishalatva. So it's speaking about the coordination of different components
in yoga practice. The person should focus on asana, or pranayama. The person should focus on stability. The person should focus on prana, that is breathe. The person should focus on consciousness, which is very important one. So all the components in the practice should be organized, coordinated well, which is very important one. I mentioned it as Vishalatva, which is the 10th principle. 11th one, Navinyatva. So every day, in every practice, we should feel fresh. We should feel that is new one. So then only we will be able to enjoy it. Otherwise, it will become mechanical. So any practice which is done mechanically in yoga is not accepted. Okay, so this 11th sutra is having its own importance at every practice, during every practice, every day, whenever we are practicing or we are advising to practice, then we should educate them to feel new, to feel fresh during each practice, which is very important one. The 12th one is Vaividhyatva. It's not monotony. So always there should be multiple components, which is very important. That's why the vinyasa has been done like that only. We go for all forms. So that has to be incorporated, which is very essential one. The 13th one, Samarasatva. All the practices, it might, while doing asana also, we come across with different forms of mudra, we come across with different forms of bandha. They happen mechanically sometimes. They should be done actively also. So there should be proper coordination between those practices, which is very important one. And we should take care of that one, which is very important one. The 14th principle is Ekatva. The ultimate goal of all practices is to have the union, which is very important one. We should educate this properly to the practitioners, which is very essential. The 15th sutra is Tarunyatva. Always there must be the feel of youthfulness. We should initiate this, which is very important one. With this, let me conclude. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you for such a thought-provoking session, sir. Good afternoon, everyone. Hari Om. We are ready for the second session in the morning. Professor Ramachandra Bhattaji Kotemane Acharya would address in this session. May I hand over the charge to Acharya to take over from here on. Om Namo Brahmane Namo Astvagnaye Namah Prithivye Namah Oshadhibhyah Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Brihate Karomi. Om Shanti Shanti Shanti. I am very happy to address this mindset, because your education and your background makes you deeply rooted in spirituality on one side. In the same time, you have modern exposure, so this blend, it is very cogent, very much time friendly to this ever changing scenario of this modern world as such. My area is very much
creativity centered. So it is very much Shastric in its nature. Shastric in the sense ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ is to be referred suitably, appropriately. Knowledge, knowledge, knowledge. This word in English, it is very much shabby in common usages. That is why the most scientifically oriented people call English always our dying language, dying. Because in this process of its popularity through the whole global scenario and our common communication, in common drafting and exchange of thoughts, that language became very much worn out. When words of some language become worn out, they lose their original glamour, original strength, original multiplicity, original implied beauty. So this is very most unfortunate thing about this so-called popular media of instruction, English. While sharing these thoughts, I am very responsible because I am a student of Maharaja Samskrit College and this Chamarajendra Samskrit College, where I studied Vedanta Shastram, Purva Uttra Mimamsa Shastram, Nyaya Vaisheshika Shastram, along with major English also, English literature. That is why I present this I share with you with so much responsibility. But some people say that Sanskritam is already dead because it is not spoken. Nowhere it was spoken, but it was wonderful media for cognitive clarity. That is the beauty of it. When it was not spoken in any state, because during Mahabharata time there were 56 states. 56 states in Bharat, covering 3 areas, Aryavarta, Brahmavarta, Dakshinavarta. There were 56. No state where Sanskrit was a spoken language, but it was very effective media of communication for Grantha Rachana, for Vakyartha, for Mimamsa. Mimamsa means Pujita Vicharaha, not something named to some darshana. Pujita Vichara Vichara Vachano hi Mimamsa Shabdartha iti Shankara Bhashyam. So, and very effective media for effective communication of sciences. As now just I mentioned, Samujnanam, Ajnanam, Vijnanam, Prajnanam. All 4 type of jnana. All 4 type of jnana. Samujnanam means that knowledge which is communicated through verbal technique. Ajnana means theory of everything, which encompasses, which is the most effective unlocking system
of every discipline, every door of various kinds of scientific chambers. Using that theory of everything, Atmavada, theory of consciousness, we can unlock every knowledge, including Ayurveda, Dhanurveda, Arthaveda, Gandharveda, Rukka, Yajur, Sama, Atharva, Sankhya, Yoga, Purmimamsa, Uttamimamsa, and Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Chandu, Niruktam, Jyotisham, Purana, Nyaya, Mimamsa, Dharma Shastrani, and all 64 kalas. All these different cognitive areas were given to the people, common people, through Samskrit media. That is why, covering all these different branches of cognitive areas, the original texts are available in only Sanskritam. What is that original text? Do you know? Rukka, Yajur, Sama, Atharva only. For Ayurveda also, the basic theory, it is in the Vedas. The concept of eco-friendly life system, it is there. That eco-friendly life system is the main basic principle for Ayurvijnana, Jyotirvijnana, all type of Vijnanas. So, my area today it is cognitive climax. How to achieve? For that we have to understand Pramata, Pramanam, Prameyam, Prama. Prama is the outcome. That is the climax of cognitive clarity. This particular area is well attended by Nyaya Shastra. But details are worked out by all these philosophies. Darshana, we are repeatedly telling. But all darshanas rooted in the Vedas. All darshanas are Upavedas, are Angani, Shadangani, Upangani, 64 Kalaha, for all different type of branches of cognitive area. The main roots are Ruk, Yajuhu, Sava, Atharva, Rasaha. This is the first thing I wanted to share with you. See, I just present Vakara theory. So, how to explain this? I was thinking, I am doing my own research actually. Cognitive clarity is my research area. I have done my PhD also in Vakyartha Parijnana with special reference to Prachina Nyaya Shastra. So, what is that Vakara? Vakara Panchakam, Vakara Chatushkam. In terms of Vaidikatva, in terms of Vidvatva, in terms of Vedantitva, and in terms of Vijnanitva, we have to understand what is Pramanam, what is Prameyam, what is Prama, and who is Pramata. That is how I proceed further with your help. You are free to stop me whenever you have some difficulty in understanding some technological terminologies, Shastric terminologies. Why it is so? Because main thing is these areas are more insightful.
or ekasmin janmani ekam shastram. That is how our great ancestors were talking. Here only I was moving while preparing my thesis on cognitive clarity area with special reference to Prachina Nyaya Shastra, guided by Parama Pujya Ramabhadracharyas and Mahamohopadhyaya Venkatanathacharyah and Manya Ranganath Sharmana, N.T. Srinivasa Iyengar Mahodaya, they were all here. That vibration, still it is very much alive, this area. So, giving my Anta Pranama to that inheritance, my pranamas to that Prachina Vidvat Parampara, I have to submit this subject. According to Vedas, what is that Jnanam? Who is Pramata? Who is Pramanam? What is Pramanam? Pramana Mimamsa is there in all Shastras. Pramanam. Many people, they have, some people call it 2 Pramanas, 3 Pramanas. And mainly you all very much acquainted with Sankhya philosophy. They, according to Sankhya Sutra and Sankhya Tattva Kaumudi, so many other scholars, there are some Pramana Jijnasa is there. They call it Pratyaksha Manumanam, Agamaha, 3 Pramanani. Nayayikas call it 4, like that. And these Kanadas, they call it only 2. That subject I don't take for discussion here. Main thing is these 4 items you have to understand. Who is the Pramata? Because Pramata is Chaitanya Padartha. He is. Pramata is that one who knows, a knower. He know ಎನ್ನು ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಬಡವ ಅದು. ಅದರ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ. ಅವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ we lost wisdom. Not only that, in pursuit of information, even we lost knowledge also. ಈ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುರುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. T.S. ಇಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕವಿ. ಅವನು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಬರೆದ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಆರ್ hello men, we are stupid men, we are leaning together, head pieces filled with straw. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, technology friendly people, we. That means in that shabby pursuit, we lost so many inner cores. So, information, knowledge, that became most dominant because we are so too much WH people. WH means what, where, when, which, who. These WH questions we ask and elicit some answers. Then our cognitive level becomes very much apparent. It will be like a drop of oil in milk. So, this Pramata must be properly equipped. We have to prepare Pramata
to ask two more important questions. How and why? Katham kimartham. Katham kimartham. Without this question, if we chase behind hundreds of books available in our library, our knowledge level will be very shabby, very apparent it is. That is our problem now. So that this pramata saktumiva titauna punantaha yatra dhira manasa vacha makrata. This is from the Rigveda. So that from very purest form of Ganga, I am just trying to share that Ganga Tirtham. That is, what is that Ganga? Himalayan Ganga, but even in Himalayas, that Ganga, not even Gangotri Ganga, there are also many gutters come there. So gutters come and water will be polluted. Gutter water pollutes even Ganga water. This was very heavily criticized by that poet, T.S. Eliot, one who wrote Wasteland. I am not so worried about our Britishers and these foreigners, I am worried about Bharatiyas. They hesitate to use many words like Himavant, Ganga. They imitate we people, we English people. So these Indians also call Ganges. See, a British poet criticizing us in that poetry, Wasteland, and tells they lost their purest knowledge, Ganga water. Even they cannot pronounce Ganga also properly, so that call it Genja. Ganga. He is ridiculing us. And he gives proper guidance for Jnana Pramanya with special reference to Brihadaranyaka Upanishad. Damyata Datta Dayadhum. This very word from Brihadaranyaka Upanishad he quotes in his Wasteland. See, you people, Samskrita people, Ayurveda people, you must be proud of it. But we have our own hesitation. And I don't know, somewhere I got that some information, more and more now Ayurveda doctors are studying through Hindi media and Angrezi media. I don't know. And original Sanskrit, through that, if we study Charaka, Sushrita and Vagbhata, it will be wonderful, you know. Can any foreign language be there? That media becomes very lopsided. So Samskritam must be studied through Samskritam. So that Damyata Datta Dayadhvam. Dama, self-control. Datta, share. Dayadhvam, have compassion towards needy people. This theory he projected. He preaches this theory to us now through that English poetry for which he got Nobel Prize. Damyata Datta Dayadhvam. So, Jnana Pramanyam depends upon Pramata. If Pramata is not properly structured, knowing is not at all possible, you know. That is why Pramana Vyavahara and Pramana Pramaya subject, if we deal, we have to explain to our students. First of all, we have to take this part. Pramata. Who is Pramata? Who is Pramata? First of all, he must be yogi. He must be Vaidika. He must be Vedanti. He must be Vijnani. Then only he can be a knower. A knower. Just for convenience, that word I am using, but they have no proper word to Pramata.
in English, in any foreign language, I don't know. Somewhere in some Greek or Latin, if they have, wonderful, it is good. But somehow this wisdom word, they call it little bit more insightful, come to our Jnana Pramanya, but not so much clear. So, Pramata must be Saktumiva Titau Na Punantah. That is how we have to take Vedic references. Gangotri Ganga, not Gangotri, Ganga Mukha, Gomukha Ganga. Yes. Gomukha Ganga we have to take. There Ganga starts. Purest Ganga Tirtham is only available there, not even Gangotri. That is what just now I told. That is the Vedas. There you can understand Chitauna Punantaha. There must be a proper filtering system inbuilt. Filtering system. Chitauna Punanta. Saktu means this atta. That is to be filtered before we take it. That is what our mothers know, how to filter it. That Indian system of filtering must be adopted, not your so-called mechanical. So, filtering must be there. Yatra dhira manasa vacham. And that pramata must be dhira. Who is dhira? Then, dhyam rati. That means his buddhi must be shuddha. Buddhi must be shuddha. How to make it buddhi shuddha? It is only by Ayurvedic system only. No other system. Because that definition you must know. Samadosha samagnischa samadhatu malakriya. Prasanna atmendriya manaha. That is very important. If atma indriya mana is prasanna, balanced, sublimated, purified, then only it is possible. When not only by yoga, it is yaga also very much important. We are highlighting yoga, yes, very great, no doubt. But just for your thinking, I just traveled through the whole many countries, and even I could discuss with so many Ayurveda doctors in London. They were all very honest sadhakas. Problem is in Bangalore. It is Benda Kaluru. What is the problem? You know, Benda Kaluru. In this Benda Kaluru, how can you practice after Suryodaya Pancha Pranayama? You tell me. Why? Yes, certainly you have to purify your Pindanda. But Pindanda cannot be pure. Problem is when our mother nature comes with Amrita Kalasha at Brahma Muhurta. That means before the sun rises. That time go and Ashwa few global Rashmis, these global rays, two type of rays according to the Veda. Ashwa and Go is not the name to any animal in the Vedic context. Gavaha, Ashvaha, these words in the Vedic context, they indicate the global Rashmi. Go means Surya Rashmi, Ashva means, Go means it is Sattva Rashmi, and Rajas Rashmi is Ashwa. So with that Rashmi, global rays,
when Mother Nature comes at your gate, you close it. Not only your doors are closed, even windows closed. Before that, your mind closed. Even before that, your mouth is closed. Because even, please don't misunderstand me. Even Ayurveda doctors, all of you also, at Brahma Muhurta, how many of you are accustomed to get up and take this divine grace given by Mother Nature? That is available only at Brahma Muhurta. Muhurtas are like that according to Jyotirvijnana, Amrita Muhurta, Vishnu Muhurta, and Dimadhyuti Muhurta. After that, there will be Brahma Muhurta. That means all auspicious Muhurtas comprising 48 minutes, each Muhurta starts at 3:30 or 4 o'clock here in Bangalore. And it continues up to the sun rises. This is the Muhurta Vijnana of Bharatiya Jyotirvijnanam. How can you separate Jyotirvijnana and Ayurvijnana? You tell me. And during that time, with this particular celestial awareness, Jyotirvijnana Antardrishti, if you practice Brahma Muhurta waking up, then only your Pindanda will be pure. After the sun rises, you cannot purify your Pindanda. That means whole atmosphere will be engulfed, captured by Sarparashmi according to Vedic insight, research. It is called Sarparashmi. Sarparashmi means not only Sarpa crawling. Sarpa means cosmic, negatively charged cosmic ray is called Sarparashmi in the Vedic context. Then what? How can you purify? After the Surya's advent, that particular time is called Rudra Muhurta, Ahi Muhurta. Ahi means it is again Sarparashmi. Immediately after the sun rises, many Vaidikas, many Pandits also say, oh, this is pure, this is very auspicious time. No. After the sun rises is not auspicious time. Before that, there are four muhurtas. That muhurta we don't know, so that we don't utilize, because we don't wake up, so that our Pindanda will be impure. And during that time, when Mother Nature comes with that much kalasha, purest Amrita kalasha, we are snoring, we are covering our mukham, and we are snoring. And we even don't know that we have 3 mukhas, 3 dwara. Actually, sapta dwara, according to Veda, that is another branch of science. I don't deal with now. At least we have 3 mouths. That understanding must be there. Not only this mouth, it is for eating and drinking and chewing and all these things. But another mouth is our nose. Through that only we have to take purest air, prana shakti. And more than these 2 mouths, another very important mouth is inbuilt, fixed here on the top of our head. This shikhara, that is called Brahmasthana or Brahmarandhra, through which these rays are sucked. Rays means 3 rays: Go rays, Ashwa ray and Sarpa rays. Sarpa rays we are sucking more time after sunrise, and our system of 72,000 nadis are not purely maintained. Naturally, this antenna also will be corrupt. Consequently, our whole pranamaya kosha, which you call, becomes impure. Once pranamaya kosha is impure, its impact will be there on our outer body,
anatomically structured, physiologically structured body will be corrupt. And inside psychological body, mental body also will be corrupt. This is the greatest mistake we are committing nowadays. Our great forefathers were aware of it, but we have our own scientific. What is this scientific? It is not at all scientific. This is the real scientific approach about our own anatomy, physiology, biological structure. We don't maintain this three-phase theory. That means you have to get up early in the morning at Brahma Muhurta. Naturally it will be Antarika Snana. Real Snana is that one. Allowing go and Ashwa race inside our 72,000 nadi web through our Brahmarandhra. This is the inside there in the Vedas. Ashwavatihi Gomatirna Ushasaha. See, very clearly understandable. Usha means Pratakala, Brahma Muhurta. It is full of those two cosmic energies. During that time, we must be available, we must be at the grace of Mother Nature, who brings that purest ray. We have to take inside, but we are not. Because of these gadgets, we suck surparis. Those who never stop sucking surparis, they cannot maintain good health. What is this? Please try to understand. That is why I repeatedly say, there must be yogic evening. If yogic evening is maintained, then yogic morning is very natural. What is that yogic evening? After the sun sets, you must prepare for Nidra. Nidra means what? Sushupti. First it comes Nidra, then Sushupti. Immediately we cannot go to Sushupti. Until you go to the Sushupti, you cannot have proper relaxation to your body. So, take some liquid or some light food before 8 o'clock. As soon as the sun sets, then just do some meditation or something, some reading, some Moksha Shastra, Dharma Shastra. Go to the bed immediately as soon as it is 9 p.m. After that also, if you go on talking, go on using this type of gadgets, then your antenna will be active. During that negative time, Sarpakara, when the whole atmosphere is covered, captured by very negatively charged Sarparashmi, if you are awakened, naturally, spontaneously, your antenna sucks that negatively charged cosmic energy. Please understand. So that whole 72,000 nadi web will be corrupt. More and more in this night, particularly night time, after 8 o'clock, up to 3:30 or 3:30, it will be Rakshasa Kala, it will be Sarpa Kala. After the Sarpa Kala is over, Amrita Kala comes. This particular theory of yogic evening and yogic morning, if we don't practice, our body will be corrupt. That is what, though Ayurveda says, Prakshalanadhi pankasya durad asparshanam varam. Instead of washing your hand, touching the gutter, it is good. That is how, after diseases come and go for medicine, no, it is not that. We must be so disciplined, so much pure pramata, knowledgeable people, that with proper awareness and understanding, we must adopt this type of eco-friendly life system so that your pindanda will be pure.
If Pindanda is pure, then Brahmanda will be helping you. Now both are corrupt. After the sun sets, this Brahmanda becomes Benda Kaluru. At least during this Brahma Muhurta, if your house is near Lal Bagh or somewhere, some gardens are there, somewhere where Ashwatha and whatever Kshas are there, if you have your location, your housing and this and that, certainly you can have that type of what? Pratah Kalina, Ushak Kalina, Brahma Muhurta benefit. If that benefit given by Mother Nature, if we don't purify our Pindanda, we cannot become Pramata, good knowers. We only can become knowers, not men of wisdom in English. Pramata, Prakrishtaha Jnani, not possible. This is the main root of this one. So, now that is the subject given to me, Pramata and Pramanyam. When Pramata himself is so corrupt, he cannot saktumiva titauna punanto yatra dhira. He is not dhira. That is the main point. My stress is on that. Rigveda says you become dhira. Every man becomes dhira. Dhira means viveka. With viveka only he must structure his life system. He is called dhira. Shuddha buddhi purvakam vyavaharam karoti. Shuddha buddhi. Shuddha buddhi means this type of Vedic insight. This is inbuilt in our yajna theory, part of yaga theory. Because before that only we have to perform any yaga. And yaga is so effective media to purify our Brahmanda. As Ayurvedic medicine and Ayurvedic style of life system is good for purification of our Pindanda, yoga also like that. Wonderful, effective means for purification of Pindanda. Both Ayurveda and Yoga Vijnana, Jyotirvijnana, insight of these three branches of our Rishi Vijnana, certainly we can maintain our Pindanda pure. What about Brahmanda? Unless you purify Brahmanda, you cannot maintain that purity and sanctity inside your Pindanda. That is our highly alarming problem of this so-called scientifically advancing, technologically highly chasing world, so-called modern world. How can you say, God, we are advancing, we are progressive? These are only words, juggleries. We are not at all like that. We are most ignorant people compared to our great rishis. But we ridicule them, claiming that we are most scientifically advanced people, technologically, we have this gadget, that gadget, AI, what is that? AI people, no, we are. AI people. So, we have to rethink all these things. These all our illusions and hallucinations, we have to wash it out. We have to wash it out. So, this Brahmanda, you see now, problem is three shan, highly alarming problem. Radiation, pollution and contamination. Three shans, very dangerous. How can you purify? How can you purify? But it is in our hand, no doubt. If we develop Nakshatravana, Rashivana and Navagrahavana in our ambience, in our atmosphere, certainly we can purify. Even in this Bendakalur also you can
have that type of ambience around you. That is possible. So just to have pramata pure and pramanam pure, our cognitive capacity pure, we have to adopt this method. So just in order to just to summarize the whole talk, I can say like this: just to have that clarity of cognizance, we must purify our Brahmanda and Pindanda first of all. Number one formula. We have that pride, we have scientifically advanced, but most of our newly published books and crores of such publications simply dumped to the world, readers' world. They have no essence at all. They are all half-truths, including even great scientists like Copernicus, Galileo. They are all, sorry to say, most ignorant people, because they just sold out all type of these half-baked thoughts in the name of science, which are there in our textbooks, and as if they are the, what to say, Shashvata Satya, we are reading that. But only some scientists like Albert Einstein, they understood with so much humbleness, they offered their pranamas to Indian Bharatiya Rushi Parampara. That humbleness we must develop, my friends, all doctors, please. Rushi Parampara must be the great. With that humbleness only we can be proper sadhakas in any field, whether you are yogis, Ayurveda doctors, or other, now many disciplines are there now. Integrative medicine also now it is in the open medias. So just an introduction to Pramanya Siddhi, because in Sanskrit Pramanya Vada was written by great Gadadhara Bhattacharya. That knowledge about knowledge, it is like an ocean, it is like Atlantic Ocean. Jnana Pramanya Vishaye Asmakam Shastre Ye Vicharas Santi Samudropama Ekasmin Janmani Jnatumana Shakyate Ekasmin Janmani Ekah Granthaha Api Jirni Kartum Na Shakyate Vayam Tatha Durbalaha Api Jama Adhunikahayam Manavaha Bahu Durbalaha Karanam Antimam Vakyam Paranchi Khani Vyatrana Swayambhu Tasmat Parang Pashyati Na Antaratman Kathopanishad. We are all very much, too much outwardly. That is why we cannot make inroad inside. So that we must become dhiras. Kaschid dhira pratyagatmanam aikshat avritta chakshuhu amrutatvamichan. That is Rishi's clarion call. With this clarion call, I want to conclude this thought. Thank you very much. भवन्तः एतावत्पर्यन्तम् आचार्याणाम् उपन्यासं श्रुतवन्तः। प्रायः एतेषां यदा यदा उपन्यासः भवति तदा एवं जिज्ञासा भवति, पुनः अस्माभिः गुरुकुलं गन्तव्यमिति भवति। तादृशाः इवे आचार्याः श्रद्धावन्तः शास्त्रमूर्तयः भवन्ति। एते प्रमाणविषये प्रायः सप्ताहं वक्तुं शक्नुवन्ति। तादृशाः विशिष्टाः आचार्याः इवे सम्प्राप्ताः सन्ति। तेभ्यः समेषां पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः समर्पन्ते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
इदानीं भोजनव्यवस्था कृता वर्तते. बुभुक्षितं न किञ्चिदपि प्रतिभाति, न किञ्चित् प्रतिभाति. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ನ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಕಿಂಚಿತ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयः ICPR सहयोगेन आयुर्वेद एंड दर्शन इति विषये त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित. अत्र इदं तृतीयं सत्रम्. अत्र अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य समागताः सन्ति आचार्याः रामचन्द्रकोटे मने महाभागाः. इमे आचार्याः न्यायवेदान्तादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः. यस् व्याप्स यूनिवर्सिटी मध्ये कुलपतिचराः सन्ति एते. अधुना एते आचार्याः अस्मिन् सत्रे अस्मान् उद्बोधयन्ति इति प्रमोदोऽयं विषयः. आचार्यान् सम्प्रार्थये तेषां वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति. Repeatedly you have come across some technological words which are very common in our Shastric tradition, but for common speakers in Sanskrit or those who are accustomed to some spoken language, they will not be so much familiar. There are 4 shastras, 4 no, 6 shastras. They are Puramimamsa, Uttaramimamsa, Nyaya, Vaisheshika, Jyotish Shastra and Dharma Shastra. These are called Shastras, 6 Shastras. These Shastras help us to understand Jnana Pramanya. Jnana Pramanya means cognitive clarity. Whatever we understand using our senses, 5 sense organs, sensory organs, and using our mano, buddhi, ahankara, chitta, 4 type of antakaranas, subtle bodies. We understand this world, we receive this world. But the main instrument is Atma. Atma manasa sanyujyate, manaha indriyena, indriyam arthena, tataha pratyaksham. How we get that clarity of knowledge? If there is some object in front of you, you understand. How you understand? There are 3 type of connectivities. The outer connectivity is with an object and sensory organ. Sensory organ means 5: mouth, nose, eye, ear and skin. Pancha Jnanendriyani. Through that you will be connected with the outer objects. This connection between outer object and our sensory organ, it is very, very superficial. This connectivity is not so concrete in nature, because all our sensory organs have their own limitations. Like our eye, it can perceive only 3 dimensions. This object I am seeing, only 3 objects I can see, but behind this I can't see. So whatever I see
it will be very much lopsided, because any object in its completeness is not in my perception. Clear? I can't see. Only partially I have connectivity with this object, but I understand this is a bottle filled with water. That is how every sensory organ has its own limitation. That is why whatever sensory perception through which that any cognition, any knowledge I perceive, it becomes very much lopsided. ये अनेकांतिक होता है, एकांतिक नहीं है. ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता. Then second connection is between my sensory organs and mind. Even though I have connectivity with more parts, dimensions of this one, if my mind is fickle, engaged otherwise, full of tension, even though I have connectivity with 3 dimensions, I can't understand the object in front of me only. Why? Because the second connectivity between mind and sensory organ is not proper, shattered, so that knowledge becomes limited. Some people we see in front of us only, they will be standing and we can't recognize them. Why? Because mind is engaged otherwise. Somewhere it is wandering, roaming, so that I can't recognize. That means Mandakshi namagi hudu, baludura sagadadu. It cannot go far and far. That much we have limited understanding, capacity of understanding in our sensory organs and mind. Mind also is always very fickle. So that, and the third one is Atma Manasa Sanyujyate, connectivity with consciousness and mind. Connectivity with consciousness and mind, mind and senses and objectives. That is how many connectivities? 3. With this mechanism, I understand something. That we call it pratyaksham, pratyaksha jnana, sensory perception. This is the main instrument with which we understand the whole world. But these all instruments are very much weak. Here the most powerful instrument is our consciousness only. If consciousness is weak, mind will be still more weak. If mind is weak, then there will be connectivity with sensory also will be, because when mind is connected with nose, it cannot be connected with tongue. If it is too much connected with the tongue, because you are tasting your so much tasty dish, ice cream you are enjoying, so that your tongue is very active. When tongue is active, your eye is not active, so that you are not seeing person one who is very much familiar to you. These are the limitations of this whole connectivity, 3 connectivities and instruments for your knowledge. That is how Pramata becomes receiver, perceiver becomes weak. He cannot perceive knowledge in its totality. Understood? So Pramata becomes weak. If Pramata, perceiver, receiver is weak, your knowledge will be, your Prama will be, Prama means climax of clarity, of cognizance. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪಾರಮ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಲಾಪ್ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಲೂನ್ ಥರ ಉಬ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಾಪಂಡಿತ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್? ನೋ. While reading your book, the same instrument you are using,
Eh? That is why knowledge must be purified. How it is to be purified? Then all these instruments, when you sharpen, naturally when you sharpen your knife, with that knife you can easily cut vegetables and get tasty food. Likewise, all these instruments must be sublimated, consciousness must be purified, mind must be purified, sensory perception values must be sublimated, sharpened, must be made one pointed, single pointed, and with reference to objective also again you have problem. If the same object is kept inside, in the midst of darkness, your cognitive level becomes still more dim. Clear? More and more light is here on the side of objective, then your understanding will be more clear. So, in spite of all these limitations, whatever you just get, that is very much limited understanding. So, pramanyam becomes weak. With reference to weakness of pramata, receiver, with its limitations of objectives, prameya, pramata is a person, prameya is an object. Pramana means your instruments and all these things. Instruments. With all these, you have limitations, you have lack of clarity, so its impact will be, your knowledge will be very much lopsided. This limitation we must understand. When we think about our knowledge, we must be aware of limitations of these 4 items. What 4 items? Pramata, prameya, pramana and prama. Prama means result of it. 3 are instruments and the 4th one is outcome. Outcome is knowledge. As your instrument 3 are weakened, likewise your prama, outcome, result also becomes more and more lopsided. How to make it clear? That is the real challenge. For that, only thing is, Atma must be purified, Mana must be purified. Unless these 3 are, see, we know another phase I am telling. Some people, they are blind. Born blind people. I know many people. There is a great Acharya in Chitrakoot. His name is Brahmabhadracharya. He is now more than 80. From very infants, when he was just 3 months old, baby, he lost full his eyesight. But his knowledge, now if you know, you will be aghast. Whole Shastras, all our Granthas, Srimad Bhagavatam, Ramayanam, everywhere, thousands of slokas, Paniya Sutra, Ashtadhyayi, everything it is. Karatala Amalaka. That much knowledge he got. That means what? If mind is purified, Atma is brought to that mechanism, that connectivity with consciousness and mind, if it is properly taken care of, our prama will be, our knowledge will be very much high.
Many such great yogis are still now, we can see them. They have no sensory clarity, they lost that sense, but they have that much capacity. Prama is very high due to so much clarity in those two instruments. Atma is not an instrument, it is cosmic in nature, but that is very much powerful because it is consciousness. It is Chit Swarupa, Satchidananda Brahma, it is Jiva. That is why that is ever fresh, ever pure, but connectivity with mind is not good. That is our problem. Because next instrument is mind, that mind is heavily disturbed now due to impact and misuse of so-called gadgets and instruments. That is why we are not so knowledgeable, not so highly enlightened, not so highly scholarly as our own forefathers were. Our own fathers were there, forefathers were there. But we are so egoistic. Oh, we have laptop, we have this and that, and we have so much heavy books and rich library, this and that, so that our old people are something, they are superstitious. That is how we brand them. And we claim that we are the most brilliant people. I am great doctor, I am great scholar, professor, I am great. This is a forced egoistic tendency we have developed. Very sorry to say. Very sorry to say. We are not so bright. Because instruments are rusted. Our instruments are rusted. Due to what? Our own lifestyle, our own mindset. Due to two, what? Mindset and lifestyle. You have to understand. Please try to understand. So now the only way is to have eco-friendly food, Shuddha Ahara, Sattvika Ahara, Ayuhu, Sattva, Sukha, Preeti, Vivardhanaha, Rasyaha, Snigdhaha, Tatha Hridyaha, Aharaha, Sattvika Priya. This type of food is not there. We cannot maintain purity at our sensory perceptions and in our organs level, limbs level, sensory level, intellectual level, all levels of our total personality. We will not be physically sound, we will not be mentally healthy, balanced, we will not be creative intellectually, we will not be health vitally, because we are not spiritually rooted. We are not spiritually rooted. Due to that, all other organs, outer body, your whole system will be collapsed. This fact, this very, very katu satyam, we have to realize. More and more you can ask questions now. I don't want one-way traffic. You are all intellectual. That is why more and more, if you ask, I can cover more and more subjects. Already now, one-sided deliberation I could organize in the previous. Now also just some minutes I just shared, but it is more and more I cannot share one-sided. Both-sided it will be more and more creative, more and more interactive, more and more good for. Whatever I have explained
In the light of this whole deliberation, you can ask questions. So, pramana, prameya, pramata, pramanya, these are the main areas here for discussion. And it will be connected to cause and effect, karya-karana bhava. That karya-karana bhava also, it is not something secluded, separate subject area. When you have more and more proper diagnosis with this understanding of pramanya, your understanding of your own sadhakas, that means your own patient, understanding of their personality, it will be more clearer, so that you can diagnose well, so that you can treat them well. So, next subject will be karya-karana bhava. Why is the karya-karana bhava is important for you? Because if you know the root cause, naturally you can understand remedial system well. So, remedial system and treatment, before that real understanding of person whom you are going to treat, for that your understanding level and your communication level, your counseling system, all these become very, very supporting things, you know. So, these are all jnana kshetras. How you understand some person, XYZ, while even sometime just watching their walking only, many doctors can understand their root cause of their disease. You know it. In Jyotisha it is there. Very good rahasya, I just share with you. It is called Deha Samudrika. Many of you know Hasta Samudrika. It is very much misleading. It is not Hasta Samudrika, but according to our Jyotisha Vijnana, Jyotirvijnana, it is Sharira Samudrika. In that Sharira Samudrika Shastra, if you understand its secrecy, its mystery, even just by understanding face area, just eye to eye contact, just fixing your eye on this area, Bhrumadhya and Ajna Chakra, you can diagnose what is this problem, what is his problem, psychological problem you can understand. You know that Nadi Shastra, Rahasya Vidya, Agastya Nadi, that you are expert. Just by touching you understand what it is, what is the root cause of his disease, what imbalance is that. It is physical at physical level, but at psychological level, just eye to eye contact, just looking at his eye, fixing on his face area, and just watching this particular Ajna Chakra area, Bhrumadhya, you can understand what type of psychological abnormality someone is victim to that. This is called Sharira Shastra Mudrika. Even by watching someone, just you can tell him, just walk. He may be young man, able to walk. Naturally you have to walk and you come from that end to this end. Just you watch how he is stamping his legs, his feet, how he is moving his hands, and how he is moving his eye and face, everything. Just you can understand the root cause of his disease, his illness. That much understanding, deeper research already took place in this great Bharat. But as time passed, many such branches of knowledges, branches of cognizance vanished due to cut off tradition, due to discontinuation of such knowledge. Because Ashishya Nadeyam, that was their pathya. They were just testing whether that fellow or someone eligible or not, whether this secret of Vidya given, whether he uses it properly or not. That is how they were testing. They were not giving to apatra. One is not disqualified. Only patra they were searching. And such Vidyas maintained in their family tradition.
Due to many reasons, if patras or yogya vyakti, yogya tradition, family tradition, due to something happened unwanted, vidya discontinued, vidya vanished. That is how lakshashaha vidyaha, rahasya vidyaha vanished and lost. So much great loss happened. Only something is remaining like Ayurvidya, Ayurvijnanam, Jyotirvijnanam, this Vijnanam, some Vidya are there, but it is very even, not even Muru alla, not 3 in 100, percentage wise. Tell you. That much loss occurred in 5 millenniums after Mahabharata. Because after Mahabharata, our people became outwardly people, very selfish like so many Dronacharyas. Dronacharya was the first tuition master. He committed very historical blunder, starting a new tuition center inside Royal Palace. It was not at all permitted. Any student, if you want to have proper vidya, he must go to Nadi Tira or Gurukula. That Gurukula tradition broken, and college education was introduced first time. It is not by Macaulay, it is by Dronacharya. What is it, you know? Teaching inside palace. First time he started that type of tuition centers. Tuition center. First tuition center started in Hastinavati, inside Dhritarashtra's palace. It was not permitted by Bhishmacharya and so many, but due to compulsion, those 105 Rajkumaras were given Vidya inside palace. That means today's college education, your university centers. That is why now that fight goes on. Whether to adopt Kula education or college education. This fight between Kula education and college education. Still we are sold out to college. Recently now all Rishi Vidyas also, they are in college atmosphere, university centers. What is that? Due to so many such reasons, we lost our Vidyas. Vidyas means they are not for public property. They are not public property. That Vidya means it must be imparted to an eligible Satpatra only. So that eligibility test, now also we call it eligibility test. Without eligibility test, no, you don't select for IPS, IAS. That was the tradition. Irrespective of their eligibility, all 100 people, 100 Kauravas, they were all hopeless people. Duryodhana, Dushasana, still worse type of Dur people. Dur 100, because they are all Rajkumaras and sons of Dhritarashtra Maharaja. Dronacharya shared his knowledge with such people. That is the great tragedy. During Mahabharata time, the first college, first tuition center started by Dronacharya. We are unnecessarily blaming Britishers, unnecessarily without proper understanding we are blaming repeatedly that fellow, Macaulay. No. We were so blind followers. It is not one Macaulay. When our system inside is so weak, even for some change in season, we become victims for any jara. Now see whatever, how many type of jaras are going on everywhere. Like that, our society before 5 millenniums only became very weak. Vyasa Acharya told it. Urdhvabahu viraumyesha najagasthi shunoti me dharma arthascha kamascha sakimartham na sevyate. Great Vedavyasa was weeping. So that from that very
juncture period, advent means start of Kali Yuga only, our society started slipping and slipping and slipping. Now we are seeing that the climax of it. With this much 150 crores of population, with so much heavy problems everywhere, covering all walks of life, we have great challenges now. We must go back to the Vedas, we must go back to our traditional values, but we have many challenges. We have more hopes on Ayurveda people and our traditional IKS people, IKS, Indian knowledge system. They must come together. There again, we must not dig any well. We are all Ayurveda people and these are all yoga people. Now, in many universities I see now. I was also the vice chancellor for 6 years in one university, big campus, where all naturopathy is there, Ayurveda is there, yoga is there, homeopathy also there. Now integrated medicine means in the name of that modern medicine also already coming through windows, coming through, is it not? Yeah, many of you also practice. So, this is, no. That is why we have to go for proper transformation of the whole mindset and lifestyle. Lifestyle and modern mindset. Two are very, we have very great areas of our problems now. That is all. Ball is in your court. Some minutes are there, some time is there. If you have any queries or if you can question, you can challenge me, you can pose any type of problem to me. I am very happy, very open-minded man, so that you have every freedom to question me, to ask questions, to object my whole thought process. Yes, come on. Namaste Guruji. Thank you so much. We've had a really wonderful session. We just feel like, we want to hear more and more from you. So this is not a question at all to you. It's just a clarification I want. I've always wondered in Ayurveda, there are many places where Charaka says to give mamsa as like in the way of chikitsa, mamsa is given, madhya is also given. We use asavas and arishtas. But somewhere, I think in the Rajakshma chapter, I'm not sure where, he says that if there is a chance that you can divert yourself from taking mamsa and madhya, that would be the best for any human being. Right? So I always wondered, it seems contradictory, it certainly is not, but then I think your talk today gave me this clarification, why madhya and mamsa should not be taken. Right? So what I understand... Very relevant question. Medicine is different, food is different. But food what? What must be? Ayuhu, sattva, bala, arogya, sukha, preeti, vivardhanaha. Food must be physic friendly and psych friendly. Two important points. Ayuhu, sattva, bala, arogya, these are more and more physical and psychological. Sukha, preeti, vivardhana, these are all psychological aspects. Then they are properties of food. Rasyaha, snigdhaha, tatha hridyaha. Rasyaha, that means be juicy. Snigdha, it will be soft. Hridyaha, good to your heart, good to your understanding and tradition and your feelings. But what is rajas? Katu, amula, lavana, atyushna, tikshna, ruksha, vidahina.
aharaha rajasasya ishtaha. These are all rajasa qualities. They are not good. Dukkha, shoka, amaya pradaha. If you eat such food, they give discontentment, sorrow and illness, diseases. Properties only told. Items are not told by Bhagavan Krishna in Bhagavad Gita. Third one, it is yata yamam, gata rasam, puti, paryushitam, uchishtam, amedhyam. Properties. This type of food become tamasa. So satvika, rajasika, tamasika, like that 3 type of foods are mentioned. No vegetarianism, no non-vegetarianism, nothing mentioned. Just considering the properties of a food, you have to take food. And one more thing, you know, Ayurveda people, some vegetables also have the same type of negative rajasic, tamasic content like basale soppu and uddu. So many. You are an expert in that. They are all like that. They are more dangerous than non-vegetarian food. Some vegetarian foods are like that. And what about non-vegetarianism? There also very much insight about that. For example, in Somayaga, chaga means goat. Goat is, and its flesh is taken and it was offered to Agni. And when they are taken from 3 organs, hridayasya agre vapati, atha jihvayaha, atha vakshasaha. So from these 3 organs only, that particular portion from particular body, organ of the body of a goat, it is to be taken and it is to be offered to Agni. And it is also experimented when these type of organs of goat were offered to the fire, its impact will be wonderful. Around so many kilometers there will be no any what type of sankramika roga, epidemic. It is also experimented. And not only human beings will be freed from the diseases, now we have many type of diseases to our cows and so many trees. Katte roga, that is what now, because of katte roga, many very important vegetarian, our herbs and our trees were vanished. And by that homa, somayaga, where this particular organ of goat is offered, by that smoke, the whole area will be freed from disease. It is also experimented. That is why it is not something rigid thing imposed on us. It is only from health point of view, it is a discipline. But nowadays for our young people, not only young people, many people, old people, food becomes what? Jihva chapalya. This Jihva chapalya, tongue-centered passion. And in the name of giving company to our friends, some people take anything just to make their friends happy. All these hopeless things are there. So it is a question of health and question of discipline. And not only individual health, health of whole family. Because unwanted food when you take, Shukra Shonita will be corrupt. When Shukra Shonita is corrupt, progeny will be corrupt. That is how now see. That is why in so many foreign countries, I know, I visited
Many countries in Europe, whole America, one whole month I travelled. Australia I travelled. Everywhere now gradually people are understanding and they are coming to vegetarianism. Whereas in Bharat, in India, in so many countries, they have no proper scientific knowledge due to their ego, due to their passion, their imitation mania, due to manias, due to phobias, due to many syndromes. Simply they are going just to impress their friends, to win their company. What is this nonsense happening? Here it must be proper viveka. In America and so many countries, ISKCON people, how much, with taking so much pain, how much they have travelled, and now they revolutionized the whole mind of young people. Many drug addicted people changed, transformed. That is why food is not something tongue oriented temptation area. Please understand these words. That is question of discipline, question of survival, question of maintaining of your own progeny, your own family tradition, your own family discipline. And by adopting all these liquors and all these unwanted foods, you are not only spoiling your own body, there are lakhs together indwellers, travelers inside your body. They also will be harmed. Do you know male body, female body, how those cells working, how human body got its own distinct type of cells, and how those cells will be waiting for taking forms. These are all wonderful signs. It is there in the Upanishads. Panchagni Vidya. That is why we have no right to spoil our family tradition. We have no right to spoil our own crores of indwellers inside our body. Lakhs together cells you are spoiling by your malpractice due to your own temptation. You are spoiling lakhs together indwellers in your body, that they are waiting for structuring their body. Innumerable cells will be there in your body. They will be spoiled due to your bad practice, malpractice of food. That is why with this understanding we have to be disciplined. Question of discipline, not at all question of some temporary satisfaction, temporary comfort. Thank you. Good question. I'm allowed to ask another question in the same regard. Sir, in Tamil Nadu, there's this practice that on Fridays, they never eat non-veg. The people who generally eat non-veg. I'm sure there's a scientific reason for it. If you can explain why so that practice has been there. Already I have given some inputs. We must understand the whole biological mechanism of our body, male body and female body. And in a female body or male body also, different type of cells are there. Upper chamber cells are different, in other intestine, or it is kidney, or it is heart, or it is liver. All organs, all cells are different in their properties and characters. And they have their own likings and dislikings. It is not only your own liking and dislikings. That is why every student, every human traveler, he must know what is good to his own body system. That is well projected by Gita Acharya in Bhagavad Gita. According to that, we must develop.
and once in a week, once in a fortnight, it is good for good observing, good to observe fast. It will be helpful for your mechanism, inside mechanism. One thing is, I think I say, more than all MBBS, FRCS and MDs, all our doctors, existing doctors in crores, the real doctors are our ancestors, and even our own father, our own family members who were having this type of insight. That is why they were treating well, and the same type of food they are cooking. Our mothers are the real chemists. They were the real chemists. With that much insight, they prepared food. That is why our people were healthy. Nowadays, you see, we have no resistance. We have no what is that? Roga Nirodha Shakti, immunity. It is due to our food system only. Food system and life system, both system. Food, the first requirement of life system is getting up early in the morning, as I explained. Now I just emphasize this point. The most important first lesson is maintaining discipline in our intake food. If these two disciplines we follow, no disease will come, and we will be very most happiest travelers, human travelers. Namaste Guruji. So I have one more question, that you had explained the concept of Dayatva, Dharmata and Datta. How Very good. And whether it is only specific this is very common discipline applicable to all human beings. Dhamma means maintaining our organs, limbs and senses. And Dana is sharing with all, which makes your mind broader and broader. And Daya also, compassion, that is also very social value, best social value. And the story goes like that. I have to narrate that story. Story goes like that, my friend. Once, three means representative of mankind, a representative of demons, a representative of gods. All these three went to Prajapati. Prajapati means Brahma. Reason was they got problems in their kingdoms, respective kingdoms. ಅವರವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಜಗಳ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಟೈಪ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಥರ ಆಗೋಗಿದ್ವು ಅವು. ಓಕೆ, 3. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, Indra was the representative of gods, Nahusha was representative of human beings, and Virochana was the representative of demons. Their main aim was to understand remedial system to transform their boiling society. 3 boiling societies. But Prajapati was in his deep contemplation. He was making penance. What happened? He came to know when these 3 people came, 3 representatives of 3 loka. Then he opened and asked, what is your problem? And they explained all these 3. So they have World War type problem in their kingdoms. How to bring back the real proper condition? Then Prajapati closed his eyes, and then just he uttered a letter, a syllable, that is the.
he uttered a letter, the, and closed his eye. Only the. These three were waiting. What is this? Is it arthayano? What is its meaning? They could not unlock that secret. That bijakshara, the, they could not unravel it, open it. Then they waited for Prajapati to open his eyes, but he never opened, so that they started going back to their respective kingdoms. Okay? And Devata, leader of Devatas, Indra, he was thinking, what is this the? How to decoding Dakara. Okay? He thought that our people, we are all American type people, too much enjoyment, consumeristic, we are, Bhogavadis we are. That is why he thought that this the means it is Dhamma. That means self-control. So Prajapati gave self-control discipline to us. That is why this the means Dhamma. He understood. And he took that message and shared with all, sent all WhatsApp message to all gods, other gods, so that he could transform. Then this second one is Rakshasa's leader, Virochana. He was also trying to decode the, what is this the? What is the hidden meaning of this the? He was not understanding. Then again he examined the whole prevailing system of his kingdom. It was like African countries, just like in Uganda. And he, what is this problem? Our problem is we have no mercy. Every time we fight going on, killing. That is why he could decode. The means daya. It is daya, mercy, compassion. That is the message Prajapati gave to us, so that is how he decoded and went to his Pataloka and shared that with his people. And our man, human being, Chakravarti, Nahusha Maharaja, he tried to contemplate on the same da, what is this da? Oh yes, we human being, we are very selfish people. Na unto muru loka unto. So we don't want to share with others, always selfish. So he just again contemplated, then he could reveal what is that meaning of the. Oh, it is datta. Datta means dana, sharing and caring. That is how he could also decode Dakara. So that three values, they are actually not only applicable to some group of or Americans or Indians or Africans or Mongolians or Chinese or something. It is applicable to the whole sea of humanity now. Because of this media, now this whole world became small hub, small hut, small village now. That is why diseases are spreading heavily. All these three are the real values for modern
world. 333. Considering this T.S. Eliot, a great Nobel laureate poet, he brought that statement from Chandogya Upanishad, from this story, and gave proper remedial system for transformation of this modern world. You people, doctors, you can take this Damyata, Datta, Dayadham. It is not only for doctors, for teachers, for doctors, for agriculturists, for industrialists, for lawyers, for irrespective of their occasion, their jobs and their professions and this and that. That is the meaning of this Damyata, Datta, Dayadham. Namaste Guruji. In Ayurveda we have this called as Pumsavana Karma. So it's one among the Shodasha Samskara. So in which the medicine is instilled in the right nostril of the woman who desires to have male progeny. So can you shed some light on the importance of this Vama and Dakshina? It is not for, please, it is not for getting male progeny, but it is in order to get male characteristics. Because by very nature, female will be having very soft nature and soft organs and all these things. But there also, this content, male characters, they are very much essential. That is why, as you know, there is no lot of difference between male and female. Just by injecting some chemicals, you can make it changed. You know that. Now already in America, that business is going on very, very dangerously. But here it is not like that. The Rishis were knowing that one. Because Nari also must get some Nara, that means masculine gender character. And Nara also must get that character. But because of power of Shonita, by very birth, you know, children will be having more and more female characters. As they grow, male children also develop some roughness and toughness. Is it not? In very infants, very from birth, every child, irrespective of their gender, their body physically, mentally, they will be very, very soft. That softness is the real characteristic of female. By in very nature it is like that. But for living very eco-friendly life and for developing more workmanship and even for very successful motherhood also, even Nari will be in need of Nara character. Female also is in urgent need of masculine characters. Just to compensate that characters, it is only that particular medicine is given and all this some what is that ceremony, Pumsavana ceremony will be there. But the real secret of that whole samskara is imbibing some very much necessary masculine characteristics, not for masculine gender. This confusion must be properly addressed. That is the secret of this one, Pumsavana samskara. In addition to that, what is the importance of using, right side of the body and left side of the body? Like in the same Pumsavana samskara, so they instill the medicine, for male characteristics on the right nostril and for female characteristics on the left. I think that is vice versa. If you know this Nadi Vidya, Surya Nadi and Chandra Nadi,
Probably I also must study still more. I know something preliminary at this one, but that also have some scientific yogic insight behind it. Because Suryanadi Chandranadi system is there, where they are putting that this one medicine in right side or left side? Right side. The right side means it is Suryanadi, but that power must be enhanced. I think that is the meaning inside. Because Chandranadi power is more, they will be soft, very very soft. Even male boys also, you know, some people they will never have masculine character. They will be like female. That is why that balance important. So in those who have more Suryanadi power, there must be proper inclusion of Chandranadi power. When Chandranadi is more powerful, then there must be proper balance. That is why through right nostril only, I think medicine is put. There are many, we have to make more research. Just preliminary things which I know through proper channels and Shastra, I just shared. But you can have more and more research in this regard. About the you said no, right, that Pramata will be having the qualities of Vaidika, Vedanta, Vijnana. He should have insight to all these things. Will you please illustrate? Oh, that subject I could not nurture more. Vaidika, it is more and more this as you know, in the Vedas there are 4: Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishad, 4 type of subdivisions. That Upanishad is more and more about consciousness study. Vedanta means consciousness study, Atmavada. But Vaidika means it is not only Atmavada, it is Vyavahara Shastra. How to live like a human being. Because that is why in Vedic sources, even agriculture, industry, home industry, even human relationship, male and female relationship, and all these different walks of life are like eco-friendly life in totality, well nurtured and projected in the Vedas. That means Samhita, Brahmana, Aranyaka. These areas, those who master, such scholars are called Vedics. But those who have more command over the Upanishads, they are called Vedantis. That is why their angle, their expertise area is different, not one and the same. So Vedics are like this, Vedantis are like that. And third one, Vedika, Vedanti and Vidwan. Vidwan means more and more logically oriented people. Tarkikas they are. Yuktivadis they are. Vidwan. You just call it Vidwan. Vidwan means, expert in some logics, expert in oratory, expert in falsifying truth and vice versa. Yuktivadi they are called. Vidwan means Yuktivadi, logically very sharp, creative. And last one it is Vijnani. Vijnani is technocrat. Technocrat, one who uses science for day-to-day life. So he produces many gadgets, many instruments. Such man is called Vijnani, expert in technology. So this from 4 type of people are now we come across in the society. So their knowledge level is different because of their field is different.
That is why knowledge differs. Your area will be health. Like that lawyer, his area is harmony in society. Doctors have their harmony at physical level. If a psychologist, his main thrust will be on psychological balances. Teacher, his main thrust will be education. That is how different of walks are there in society. Their priority and their knowledge level will be different. That is all. Thank you. Sir, while you were explaining, you told like Atma Shuddhi is required to get the proper knowledge. How to attain this Atma Shuddhi? Yes, Atma Shuddhi is very cumulative effect of eco-friendly life. When Yukta Ahara, Yukta Vihara, Yukta Vyavahara, Yukta Vichara and Yukta Bhavana, 5 items. These are there. Naturally, Antaratma Shuddhi will be there. Antaratma means consciousness, Sakshi. Sakshi Bhava, that is what we say. Inner consciousness. You also tell, my consciousness that does not permit, that is how you tell. Mind is superficial level of, but inner level of mind is called Atma. Outer layer, inner layer, that is how mind got 2 layers. Inner layer is called Atma. Their purity will be effect of all these cumulative effort. That much I can say now. Very big subject. We have to work on the board and we have to show. Now I can say this much. One more last question. Somebody else will This question is not about the session what we discussed now. This is just for my clarification of understanding a concept in Ayurveda. We have a concept called Atma and Sukshma Sharira. And nowadays we have seen many stories, we have heard many stories, and we have so many YouTube channels dedicated to Bhuta Vidya, spirits, etc. So, and even our students in the class, when we teach this concept, they have a lot of questions on how do we understand this. So we need some... These are all humbug. They are not good for healthy society. These are all very much false, just to get more profit by this type of mispropagation. Here everywhere we must have scientific approach. Just it is coming in the public medias and all these things, we should not believe. And what is the real fact, that is to be understood. This is Bhuta, Preta, Pishacha, Betala, these are all not something totally non-existing. But there are many forces, unseen forces, X factors in this atmosphere. But we must not have, you need not have any fear about those things. They are mispropagated, misprojected by media. They are all totally very wrong and negative projection of the fact. That's all. Namaste, sir. So one last question. So when we come to psychology in modern day, is cognition or consciousness are separate domains. Like if we see there are multiple domains in the modern psychology. So in today's session you chose to address the whole Jnana or Bharatiya Jnana Parampara as a cognition complex or a higher level of cognition. So I would like to know, why did you choose to address it in the frame of cognition, all the knowledge systems? I could not follow. Sir, in today's session, you address the whole Jnana or Prama and all those things and learning methodologies as under the single frame of cognition complex. Whereas in psychology, this is one component and there are multiple components in the present day psychology studies. So I'd like to know why you chose to address
the Jnana Parampara as a cognition complex? Yes, any subject area, it will be having connectivity and references across many branches of Shastras. So that we must not confine to any particular branch, this, that. Because when you address this type of area like cognizance or cognitive clarity, it is not only something connected to psychology only. Many Shastra branches. In our Shastra, there are many, all darshanas, 6 darshanas also deal with Prama. It is not only Yoga Shastra or Nyaya Shastra. Mimamsa Shastra also got so much fund. Inside full it is. That is why we are actually trained in many Shastras. That is why we have that type of very vast and insightful insight. It is. That is why it is. That is how we understand. You also can understand like that. Thank you, sir. धन्यवादाः आचार्याणां कृते कार्यशालापक्षतः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अस्माकं परममिदं सौभाग्यं यद् आचार्याः अत्यन्तं स्नेहभावनया एतावत्पर्यन्तं स्थित्वा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। वेरी पेशेंटली आचार्य लिसन टू एवरीवन्स क्वेश्चन. We have got so many questions still to be answered. I don't say no to that one, but still due to time constraint, Acharya has to leave now. So with this, we end this session. We will catch up in another 15 minutes time. Abhijit sir will have, we will listen to the lecture of Abhijit sir next. Kindly, we can have a tea session is there, tea or coffee would be provided. So whoever is interested could have that one, and then in another 15 minutes we will catch up. Yeah. नमः सर्वेभ्यः, स्वागतं सर्वेभ्यः। कार्यक्रमे राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याम् अस्याम् अद्य अन्तिमं सत्रमिदम्। अत्र अस्मिन् सत्रे वक्तारः सन्ति डॉक्टर अभिजित् प्रकाश सारफ महोदयाः। एते आचार्याः आयुष मध्ये तत्र प्रोफेसर रूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अस्मान् अधुना उद्बोधयन्ति एते आचार्याः। तान् अहं सम्प्रार्थये कृपया आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। अस्मिन् कर्नाटक संस्कृत विद्यापीठस्य प्राङ्गणे सभागृहे च अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अहम् अभिवादनं करोमि, सुस्वागतं करोमि च। एतत् मम अहोभाग्यं यत् अहम् अत्र उपस्थितः। अग्रे मम विचारः अहं हिन्दीभाषायां तथा आङ्ग्लभाषायां मिश्रं वा प्रकटीकरोमि। ज़्यादा हिंदी में बोलूँगा क्योंकि लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बताना है वो विषय जाना चाहिए। शब्दों का थोड़ा ये गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आई विल प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी, बट इफ़ सम विल रिक्वायर्ड some at some place we can talk in English also. Language is not the problem. So आज जो विषय मुझे यहाँ पे दिया गया है, जो मेरी मातृ स्वरूपा वैद्य अहिला मैम इन्होंने दिया है, ये विषय है, और कल का जो विषय है वो मैंने चयन किया है। तो आज का विषय मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले उनको वंदन करता हूँ और उनको जल्दी स्वास्थ्य प्राप्त हो इसकी कामना करता हूँ। और हम विषय शुरू करते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में दर्शनों का क्या योगदान है। वेदर दर्शन हैज़ एनी कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स, बिकॉज ट्रीटमेंट पैटर्न, द ड्रग्स, द कल्पास
or the combinations of herbs or any kind of therapy is utilization of the principles. They are the sadhanas, just sadhanas. But what we are going to achieve by using these sadhanas is the treatment. Using Guduchi in Jwara is not the treatment. But using any Tikta Rasa in the Jwara is the treatment. And that is the Siddhanta. So, we will talk about the Chikitsa Siddhanta, not about the therapies and drugs. And we will try to correlate the principles of some darshanas and principles of Ayurveda. Since morning, so much discussion has happened regarding this, and I think Dr. Srivatsa sir has deliberately उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेस करके वो विषय रखा है कि इसका इस पर इम्पैक्ट है क्या या उसका इस पर इम्पैक्ट है क्या, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर जस्ट प्रवाहास ऑफ वन स्रोत. दैट स्रोत इज वेद, एंड वेदों से ही इन सभी ने जो अंश लिए हैं उसका विस्तार करते करते उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्थापित किए हैं. In the study of any science, if we are studying any Indian science, we have to look at two things. First is the terminologies, and second are principles. परिभाषा और सिद्धांत, इन दोनों पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कोई भी शास्त्र पढ़ना हो तो. जिस भी शास्त्र की हमें परिभाषा समझती है और सिद्धांत समझते हैं, सो वी कैन यूज दैट साइंस इन प्रैक्टिस. जैसे पदार्थ ये संज्ञा है. इन व्यवहार पदार्थ मीन्स एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस. व्हेन आई गेट एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर BMS, the first lecture was Padarth Vignan. I thought it was related to any physics or any kind something subjects, substance related to. But that was मैं सही नहीं था. लेकिन ये फिजिक्स से कोरिलेट करते हैं. अगर आप उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, स्पेसिफिकली प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, तो ये सारा फिजिक्स ही है. प्रश्नोपनिषद आप अगर पढ़ेंगे तो पिपलाद महर्षि को 6 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और सारे के सारे फिजिक्स रिलेटेड है. तो हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं. अश्विनी कुमार जो हमारे आराध्य दैवत है, उनको वंदन करके हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे. वॉट एवर पासेस थ्रू योर माइंड, डोंट फोकस ऑन इट and don't try to suppress it. Just observe it as it comes and goes. This is a darshan. हमें उसके घटपट का विचार ये बहुत आगे का है. उसका जो critical correlation and all these things and research and all this, ये बहुत आगे का है. We just observe, just look. You have to just see it calmly and observe everything. It's called as darshan. इस व्याख्यान का अधिकरण और उद्देश्य 3 है मेरे अनुसार. ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद की, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स क्या है, इसके एक आउटलाइन हम देखेंगे. आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं बहुत सारे विद्वान हैं, सारे संहिता जानने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, टीका पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं. इसलिए इस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा. अदर देन आयुर्वेद कौन है यहाँ पे, वो इज नॉट फ्रॉम आयुर्वेदिक फ्रैटर्निटी, ऐसा कोई है? नो वन. ऑल आर फ्रॉम आयुर्वेदिक बैकग्राउंड. गुड. तो मेरा काम आधा हो गया. फिर कल का विषय थोड़ा कठिन है, अगर आपने विषय देखा होगा. सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ दो सिद्धांतास विथ अदर फिलोसॉफिकल स्कूल. और मैं यही बताना चाहता हूँ, आई डिडंट फाइंड any dissimilarities. I am studying this subject
since 2 months, and I gone through all the 9 darshanas, Mool Sutras, Nyaya Sutra, Sankhya Sutra. I deliberately read and I thoroughly read it, but I didn't find any dissimilarities. Only dissimilarities are in Charvak and Ayurveda. We will see what. But Charvak is not the आस्तिक दर्शन, so ज़्यादा तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं उसके बारे में. And the third is contribution of darshanas in clinical elaboration of Ayurveda. सिद्धांत की व्याख्या हम सभी को पता है, हमने कंठस्थ रट के पेपर में लिखी हुई है इसको, और जो संहिता के पीजी स्टूडेंट है या पीएचडी स्टूडेंट है उनकी तो वाहवा भी नहीं होती इसके अलावा, इसके बगैर. तो पर इसमें विचार हमें क्या करना है अभी, क्योंकि मेरे सामने सारे टीचर्स बैठे हैं, मोस्टली टीचर्स आर देयर, और पीजी पीएचडी है, तो मैं फर्स्ट ईयर के लेवल से नहीं बोलूँगा या यूजी के लेवल से नहीं बोलूँगा, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल. इसका एप्लीकेशन और इसमें जो कोई एक छुपी हुई बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा. व्याख्या पता है, उसमें परीक्षक ही बहुवचन है, तो एक ने नहीं किया है, मल्टी सेंट्रल ट्रायल्स होने चाहिए, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पॉपुलेशंस पर सेम प्रक्रिया होनी चाहिए. बहुविधम परीक्षम, एक परीक्षा से नहीं, एक ही चीज प्रूव करने के लिए अलग अलग पद्धति से उसका प्रयास करना चाहिए. मतलब जल शीत गुण का है, ये आप रशिया में बैठ के चेक करो, आप अंटार्कटिका में बैठ के चेक करो, आप सहारा रेगिस्तान में बैठ के चेक करो, भारत में बैठ के चेक करो, या किसी अमेरिका के किसी अरिजोना वगैरह में चेक करो, या अफ्रीका के किसी देश में करो, वो शीत ही होना चाहिए. एक भी जगह अगर वो नहीं हुआ तो वो सिद्धांत नहीं कहा जाएगा. और वो अलग अलग पद्धति से क्रॉस चेक करते 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 होना चाहिए. आजकल जो आया है ना कि देयर इज नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, नीड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसके पीछे ये लॉजिक शायद है. मेरे हिसाब से अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछोगे तो मैं कहूँगा देयर इज नो नीड इन रिसर्च इन आयुर्वेदा. इट्स ऑलरेडी रिसर्च many times. Just use it and enjoy it. आज इतने सारे रिसर्च चल रहे हैं, मेरी प्रैक्टिस में क्या फर्क आया है? मेरे दादाजी सूट शेकर यूज करते थे जिस मात्रा में, उसी मात्रा में मैं भी यूज कर रहा हूं. मेरे दादाजी के जो कल्प थे वो मैं भी यूज कर रहा हूं, पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं. तो बीच के 2 जनरेशंस ने इतने पीएचडी हुए, मैं भी हूं उसमें, इतने एमडी हुए, मैं भी हूं, क्या हुआ? जस्ट स्क्रैप है सब, कुछ नहीं है. केवल पेपर हमने सफेद पेपर ब्लैक किए, डिग्री मिली और बुक में रखे हैं, एक कबर्ड में रखे हैं. उसका प्रैक्टिकल पॉपुलेशन को या वैद्यों को क्या उपयोग है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके थीसिस से कोई नया ड्रग निकला है या नया कल्प बनाया गया है? हो गए शायद, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं तो कल फेसबुक पे आ जाएगा मेरा ड्रग है, ऐसा है वैसा. झगड़ने में आयुर्वेदिक पीपल एक नंबर होते हैं दुनिया में, मैंने पूरा अनुभव लिया है इसका, और मैं भी झगड़ता हूँ. थोड़ा सा तो गुण लगेगा ना. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब मेरे थीसिस का क्या उपयोग होता है किसको? मेरा पीएचडी का थीसिस है क्रिटिकल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कमेंट्रीज ऑफ चरक संहिता. एक भी माइके लाल ने मुझे कभी पूछा नहीं कि सर कभी कहाँ पढ़ने को मिलेगा. 1000 पेज का थीसिस है, सोच के नमस्कार करते चले जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत, पढ़ता कोई नहीं है. और मेरे भी प्रैक्टिस में उसका कोई, क्योंकि वो एक फंडामेंटल थीसिस था, प्रैक्टिस में जो उपयोग, इसलिए उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. आप जो पढ़ रहे हो, मुझे फायदा हुआ पर्सनली, पर मेरा थीसिस से क्या दुनिया बदल गई क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ है. तो थीसिस आज प्रायः काय चिकित्सा, केसी कहते हैं, काय चिकित्सा नहीं कहेंगे. तो काय चिकित्सा आदि जो भी कोई डिपार्टमेंट है, इनमें क्या थीसिस होते हैं?
त्रिफला गुगुलिन हाइपरलिपिडेमिया, क्या ये है किसी का? सॉरी यार, मैंने खुद पांच चेक किया अलग अलग यूनिवर्सिटी के। मैंने ही अकेले व्यक्ति ने अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेम टॉपिक चेक किया है। ये क्या ये आयुर्वेदिक रिसर्च है? बिल्कुल नहीं। दिस इज अ रिसर्च ऑफ फार्मेकोपिया। यह आयुर्वेद का रिसर्च नहीं है, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया नाम की कोई कंडीशन आयुर्वेद में है ही नहीं, और उसमें आप आयुर्वेदिक ड्रग यूज करने का। मेरे पास एक थीसिस आया था कि पुनर्नवा मंडूर इज नॉट, क्या कहते हैं उसको, वाक्य क्या होता है, यूजफुल मैं कहूँगा यहाँ पे, मुझे वो थीसिस का कुछ शब्द अब याद नहीं आ रहा है, इज नॉट यूजफुल इन एनीमिया। वो 0.005 एरर जो होती है उससे ज़्यादा आ गया उसका। मैंने जब चेक किया तो मैंने रिजेक्ट कर दिया वो। तो मुझे यूनिवर्सिटी ने बुलाया कि आपने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि रिजेक्ट करना मतलब घोर पाप है। एक तो फेल नहीं करना है और रिजेक्ट नहीं करना है। तो रिजेक्ट किया तो मैंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल। एक तो ये फेक है, थीसिस फेक पॉपुलेशन है, फेक सब डाटा है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। या इन्होंने पुनर्नवा मंडूर के नाम पे दूसरा कोई ड्रग दिया होगा, या इनको एनीमिया पता नहीं है क्या है। और एनीमिया इज नॉट द पांडु। पांडु इज अ डिफरेंट संप्राप्ति। एनीमिया कैन बी पांडु, बट पांडु इज नॉट एग्जैक्टली कोरिलेटेड टू एनीमिया। तो ऐसे मज़ा आयुर्वेद फील्ड में ऐसे जोक्स होते रहते हैं। एक थीसिस, एक तो वाहवा में गया था मैं, पीजी की वाहवा में, और एकदम गंभीर फेस लेके एक लड़का सामने बैठा था कि हम वैसे मतलब क्या कहते हैं, अभी श्लोक के श्लोक कहने वाला है। और उसका थीसिस का टॉपिक था रसायन, दुग्ध का रसायन, एनालिसिस ऑफ रसायन प्रॉपर्टी ऑफ दुग्ध। 1.5 साल के पीजी के थीसिस के काल में ये बंदा दूध का रसायन प्रॉपर्टी देख रहा है। तो इट इज इम्पॉसिबल। 1.5 साल में होना इम्पॉसिबल है। रसायन करो, रसायन मतलब दीर्घ जीव प्राप्त होना, दुग्ध का रसायन प्रॉपर्टी ऑफ दुग्ध। और काल क्या दे रहा है पता है? भोजनोत्तर। भोजनोत्तर दुग्धपान क्या रसायन हो सकता है क्या? मैंने कहा भाई चरक के अनुसार ये त्रिदोष प्रकोपक हेतु है। चरक विमान अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 7 कि यो ही क्या कह रहे हो, स्थूल द्रव्य का सौहित्यम गत्वा द्रवयी तृप्ति मापद, यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवयी तृप्ति मापद्यते तस्य आमाशय गता वातपित्त शश्मणः सर्वे युगपत प्रकोप आपद्य। और आप और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए थे, हाँ रसायन हुआ है। मतलब उसको ना रसायन पता है, ना दूध पता है, ना रसायन काल पता है, ना चरक पड़ा है, कुछ नहीं। थीसिस, और मैं रिजल्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एग्जामिनर था। ऑलरेडी थीसिस सैंक्शन होके, विद्यापीठ से सैंक्शन होके वो हाइवा में सामने बैठा था। मैंने फेल कर दिया। मुझे पता है 6 महीने के बाद दूसरा कोई आके पास कर देगा। ये हो रहा है। इसलिए बहुविधम परीक्षा। तीसरा जो स्ट्रेस देना है मुझे, जो हमें आगे महत्व का है, हेतु भिष्ट साधयित्वा। ये ध्यान जाता नहीं इसके ऊपर। हेतु भिष्ट साधयित्वा, फिर निर्णय जो स्थापन किया जाए। यह शब्द ध्यान रखिए, निर्णय। सिद्धांत शब्द उसका टर्म है, पर इट इज अ निर्णय। और 3 चीजें है, अनेक परीक्षकों ने अनेक परीक्षा से हेतु से सिद्ध किया। अब हेतु मतलब दिमाग में हमें कॉज आता है, नहीं। सो व्हाट इज हेतु? क्योंकि वाद मार्ग पद संहिता के एमडी और अध्यापक भी नहीं पढ़ते। लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, डिजायर टू नो, इच्छा हो तो पढ़ो। किसकी इच्छा होगी पढ़ने की? किसी की नहीं होती। अतः हेतु नाम उपलब्धि कारणम, पीछे ही है वाद मार्ग पद में। हेतु नाम उपलब्धि कारणम, मतलब जिससे साधन, मतलब उपलब्धि साधन। कौन है हेतु? तत्प्रत्यक्षम, अनुमानम, ऐतिह्यम, औपम्य, मतलब प्रमाण। हेतु मतलब प्रमाण। यहां हेतु का अर्थ प्रमाण है। और ए भी हेतु भी ही यद उपलभ्यते तत्तत्वम,
इन हेतु से जो प्राप्त होता है वो तत्व है। तत्व मतलब सिद्धांत है, निर्णय है, प्रिंसिपल्स है या ज्ञान है, तत्व ज्ञान। यहां तक ओके, आगे चले। अब एक बार पीछे सिद्धांत की व्याख्या फिर से जाकर देखते हैं कि हेतु विश्च साधयित्वा मतलब प्रमाणों से सिद्ध होना चाहिए। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 द्रव्य इकट्ठे, आजकल जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन आते हैं ना, ये वो ऐसे होते हैं। अर्शहर गुटिका बनाएंगे और अर्श के जितने याद आएंगे द्रव्य उतने सारे इकट्ठे करेंगे और फिर बाइंडिंग मटेरियल और नया एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, कोई ऐसे पेड़ है उसको कांटे लगे हुए हैं, ऐसा आदमी ऊपर बैठा है और उस पर चित्र उसके ऊपर होगा, अर्शहर गुटिका। ऐसा आते हैं लोग, एमआर आते हैं हमारे पास। ये आयुर्वेदिक रिसर्च नहीं है, दे आर नॉट द आयुर्वेदिक मेडिसिन। मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मेरा बैचमेट मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मतलब 11वीं 12वीं का बैचमेट है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो उसने दवाई मुझे दी, सब ये होने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा भाई मैं एलोपैथी नहीं लूंगा। तो वो बोला मुझे पता है इसलिए मैं तुझे क्या दिया है देख। तो उन्होंने जो दिया है मुझे मेडिसिन, वो बोला मैं हर पेशेंट को देता हूं, उसमें अस्थि श्रृंखला है और शल्यकी है। और आप अगर अस्थि श्रृंखला को ढूंढने के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, और आपने यूज किया तो पूछेंगे कि व्हाट आर द एविडेंसेस यू आर यूजिंग इट। देयर आर नो एविडेंस बेस्ड साइंस, यू डोंट हैव एनी एविडेंसेस, व्हाई आर यू यूजिंग। बट वो उपयोग कर रहे हैं, मतलब उन्हें हमारे ड्रग्स चाहिए, हमारा साइंस नहीं चाहिए और हम नहीं चाहिए। मतलब बच्चा तो चाहिए पर शादी नहीं करनी है, ऐसा ही हुआ ना। आजकल जो कोई है, प्रियंका चोपड़ा है ना, कुछ नहीं, दूसरे किसी ने 9 महीने किया, ये माता हो गई सरोगसी करके। ये ऐसा ही हुआ है, शल्यकी और अस्थि श्रृंखला। मैंने उसको बोला तू प्रियंका चोपड़ा ही है। तो हेतु मतलब प्रमाण। अब आगे चलते हैं, निर्णय। तो न्याय सूत्र में निर्णय का सूत्र है और वो है विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थ अवधारणम निर्णयाः। विमृश्य मतलब विमर्शम कृत्वा, ऐसी वात्सायन का भाष्य है। विमर्शम कृत्वा, विमर्श करना मतलब क्या? परीक्षकैः ही बहुविधम परीक्ष, जो अभी हम देख रहे थे। उपलब्धि कारणम, विमर्श करना है, सर्च करना है, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, थॉट प्रोसेस से गुजरना है, उसका थोरोली उसको ऑब्जर्व करना है। किसको? पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम। पक्ष मतलब मैं कहूंगा कि ये XYZ ड्रग है, इससे ये कंडीशन ठीक होती है, ये पक्ष है। और दूसरा पक्ष है कि इससे नहीं होता है। या सिंपल उदाहरण दूं, जल शीत है, कोई कहेगा नहीं जल उष्ण है। 2 पक्ष हो गए, पक्ष और प्रतिपक्ष। इनका विमर्श करके जो अर्थ अवधारण करते हैं, मतलब ए भी हेतु भी ही यद उपलब्धते तत्तत्व, ऐसा जो निर्णय होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। मतलब सिद्धांत की व्याख्या कहां से आई? न्याय दर्शन से, या दोनों ने एक साथ ली। चक्रपाणी ने टीका लिखी है। चक्रपाणी इज अ कॉमेंटेटर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, नहीं तो भूल गए होगा तो बता रहा हूं। चक्रपाणी इज अ चरक संहिता और सुश्रुत का कॉमेंटेटर है। विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम निर्णय, वाहवा में होता है ना सर, चक्रपाणी कौन है? मैं नहीं हूं सर, ऐसा उत्तर देते। ऐसा उत्तर दिया था एक ने, चक्रपाणी कौन है? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। चरक संहिता किसने लिखी? शंकर काळे ने लिखी, मुझे उत्तर मिला था। या रविदत्त त्रिपाठी ने लिखी है, क्योंकि उन बिचारों को किसी ने पढ़ाया नहीं, जो किताब में सामने है वही बताएंगे। विचारितस्य अर्थस्य व्यवस्थापनम निर्णयः, ये चक्रपाणी का है, वो सेम कॉपी है। ये फुल स्क्रीन करो क्या? कैसे करते पता है किसी को?
दिखाई दे, स्मॉल दिखाई दे रहा ना आपको? दिखता है? ठीक है। विचारितस्य अर्थस्य, जिसका विचार हमें करना है, रिसर्च का जो हमने प्रॉब्लम लिया है डिस्कशन का रिसर्च करने के लिए, उसके अर्थस्य व्यवस्थापनम, व्यवस्थापन करके जो निर्णय आता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो उसके प्रकार वगैरह सब आपको पता है सिद्धांत के, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अब सिद्धांत विरुद्ध नाम का तंत्र दोष है, अरुण दत्त ने लिखा हुआ है तंत्र दोष, जो 15 तंत्र दोष है उसमें विरुद्ध नाम का एक है, विरुद्ध नाम का तंत्र दोष है। इसमें सिद्धांत विरुद्ध है, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। समय का अर्थ यहां पे टाइम नहीं है। समनयन नाम का एक ग्रंथ है न्यायशास्त्र का, अब बाद में कभी देख लीजिए। तो दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। तो सिद्धांत विरुद्ध क्या है? तो मधुर अम्ल लवण ये कफ शमन करते हैं, ऐसा किसी ने कहा, तो वो सिद्धांत विरुद्ध है। कटुतिक्त कषाय वात जनन करते, एग्जैक्टली उल्टा बता रहे हैं ना। आजकल 2 व्यक्ति हैं भारत में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि आयुर्वेद में आत्मा नहीं है, मन नहीं है, आयुर्वेद में दोष थेरी नहीं है, दोष थेरी शुड बी कैंसल्ड नाउ एंड वी हैव टू फाइंड न्यू थेरीज ऑफ अबाउट आयुर्वेदा। ऐसे लोग हैं, तो ये सिद्धांत विरुद्ध लोग हैं, इनको शास्त्र देख लेगा, हमें कोई करने की जरूरत नहीं। तो कितने कितने सिद्धांत है आयुर्वेद में, इतने सारे नाम लिखे हैं मैंने, आपको अगर याद हो रहा हो, कोई याद आ रहा होगा ऐड कर लीजिए। ये सारे सिद्धांत हैं, ये प्रस्थापन करते करते गए। किन्होंने किए? ब्रह्मा ने नहीं किए। ब्रह्मा ने सिद्धांत प्रस्तावित, ब्रह्मा ने केवल हेतु लिंग औषध बताया। ब्रह्मा से इंद्र तक केवल हेतु लिंग औषध का ज्ञान आया। ये सिद्धांत ये भरद्वाजादि ऋषि मुनियों ने किया है। ऋषि शब्द का अर्थ जंगल में रहने वाले, विरक्त, शादी नहीं की है, क्रोधी, वो क्या कहते, खड़ा हुआ पहनने वाले, हाथ में कमंडलू, एक हाथ में ये वो काठी, रुद्राक्ष, और जाते आते सबको श्राप देने वाले, तेरे मरकट हो, तेरा शीला हो, वो ऋषि नहीं है। ऋषि शब्द का अगर कोश का अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है कि किसी एक शास्त्र में उसके अंत तक जाकर उसका जो इसेंस है वो पता करने वाले, जो मतलब रिसर्चर या साइंटिस्ट, महाऋषि, बड़े बड़े साइंटिस्ट। ब्रह्म ऋषि मतलब ब्रह्म तत्व में, मोक्ष शास्त्र में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट। राजर्षि मतलब राज का जो कारण होने वाला है, मतलब नीति शास्त्र है, राजशास्त्र है या अर्थशास्त्र है, उसमें रिसर्च करने वाले जो होते हैं उनको राजर्षि कहा जाता है। तो इन सारे महर्षियों ने ये सिद्धांत प्रस्तापित किए हैं। अब हमें सिद्धांत कहाँ कहाँ मिलते हैं शब्द, उसके कुछ उदाहरण बताता हूं कि ये सुश्रुत के सूत्र है कि दोषा क्षीणा ब्रूहितव्या, कुपिता प्रशमयितव्या, वृद्धा निर्हरिता। देखो, कुपिता अलग है, वृद्धा अलग है। समापरिपाल्या इति सिद्धांता, ये सिद्धांत है। अब ये एक वाक्य में कहा है, इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि सिद्धांत मतलब क्या। ये इन्होंने वाक्य लिखा है, ये केवल ऐसे सुश्रुत सोए थे, अचानक से उनके काशीराज दिवोदास आ गए, उठाया, अरे सो क्या रहा है, तुझे संहिता लिखनी है कि नहीं, उठो। उठे, ब्रश किया और लिखने बैठे, दोषाक्षिणा ब्रूहितव्या कुपिता प्रशमयितव्या इति सिद्धांता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। या ऐसे समाधि अवस्था में थे, आए काशीराज दिवोदास, सिर पे हाथ रखा, वत्सा आंखें खोलो, लिखो दोषाक्षिणा ब्रूहितव्या कुपिता, और इन्होंने लिख डाला। ऐसे नए ग्रंथ लिखे गए हैं। सिद्धांत कह रहे हैं इसका अर्थ बहुविधि परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष, प्रमाणों से सिद्ध करके जो निर्णय स्थापन किए वो यहां इकट्ठे लिखे हैं। मतलब दोषाक्षिणा ब्रूहितव्या मतलब अनेक परीक्षकों ने पहले परीक्षण किया होगा, फिर प्रमाणों पे सिद्ध किया होगा तो लिख रहे हैं। इसमें 4 परीक्षण किए हैं, 4 मतलब 4 प्रोजेक्ट्स होंगे ये। क्षीण दोष का क्या करेंगे, कुपित का क्या करेंगे, वृद्ध का क्या करेंगे, समा का क्या करेंगे, और फिर लिखा है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इन्होंने केवल डॉक्यूमेंटेशन किया है। सुश्रुत में ही एक सिद्ध शब्द है कि दोषई त्रिभई तई पृथक एकशः ब्रूयात तथा रशंसी तथा शोफान
शालाक्य सिद्धांतावेक्ष, मतलब शालाक्य की जो सिद्धांत है वो देखकर आपको विचार करना नासागत व्याधियों के बारे में है। मतलब शालाक्य तंत्र के जो सिद्धांत है आज हमारे पास नहीं है, ग्रंथ नहीं है। शालाक्य का ग्रंथ कहाँ है हमारे पास? निमी नहीं है हमारे पास। तो जब कभी मिलेगा किसी जनरेशन को तब उसमें पता चलेंगे कि शालाक्य के सिद्धांत क्या है। सुश्रुत में ही ढल्लन का टीका है कि भूत विद्या सिद्धांत अदूर प्रवृत्ति ही सिरावेदनम वेदनसु उक्तम। ये सिरावेदन कैसे करनी है तो वो भूत विद्या सिद्धांत के अनुसार करना है, ऐसे उन्होंने यहां पे लिखा है। तो सिद्धांत शब्द आता है, हमने अभी इसमें देखा सिद्धांत की व्याख्या में कि हेतु विष साधयित्वा, मतलब हेतु से सिद्ध करके। आपको ये शब्द कहीं उपयोग किया है ऐसा याद आ रहा है? या प्रमाण से सिद्ध करके किया है? प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश ही साधयित्वा, ऐसा कहीं किसी को याद आ रहा है? सोचिए, नहीं याद आएगा तो मैं बता दूंगा बाद में। एक ही जगह पर उन्होंने उसका उपयोग किया है। हा? और सोचिए आराम से। तो दर्शन क्या है? दर्शन मतलब दृश्य धातु है, इसका अर्थ देखना, ऐसा है, देखना, टू ऑब्जर्व, टू लुक। और इसका ईशावास्य उपनिषद में इतना सुंदर सूत्र है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। हमें प्रयास करके क्या करना है? सत्य के ऊपर जो आवरण है उसका जो आवरण का मुख जो है वो अपिहित करना है, दूर करना है। हिरण्मय पात्र है, हिरण्य का पात्र है, उसके ऊपर जो आवरण है वो दूर करना है तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तत्पूषण अपाम वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, दुष्टय शब्द है, मतलब दर्शन की ही व्याख्या है। ईशावास्य उपनिषद में केवल 18 श्लोक है। आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा, बहुत सुंदर, सबसे महत्व का 18, बट इसेंस है, पूरे तत्व ज्ञान का इसेंस है। अब एक एक दर्शन का विचार हम करेंगे। ज्यादा बोर मैं करूंगा नहीं आपको, डोंट वरी। और मैं ज्यादा चिकित्सा पर बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दार्शनिक भाषा जब फिर से आपको ऐसा लगना चाहिए कि पदार्थ विज्ञान की क्लास में आके बैठे हैं, वो मैं ख्याल रखूंगा। ये सब आपको पता है, इसका डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। कपिल मुनि है, अब कपिल मुनि आए हैं इसलिए मैं केवल इतना बता दूं, जितना मेरा इतिहास का अध्ययन है, मेरा पैशन है इतिहास। तो कपिल मुनि के मैंने अभी तक 12 आश्रम देखे हैं भारत में, अलग अलग जगह पर। नासिक के एक पास है, वहां बैठ के उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है, ऐसे संदर्भ मिले हैं। युहान सिंह, जो यांगस्ते नाम दूसरा उसका उच्चार, जो चाइना से आया था, वो उनको वहां मिला था। कपिल धारा नाम है उस जगह का, नासिक के पास है। बहुत, कभी आप आओगे नासिक तो चलेंगे हम, बहुत ही नजदीक है। दूसरा सबसे महत्व का आश्रम उनका सिद्धपुर, जो मातृ गया है, वहां पे उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम करदम ऋषि और बहन जो उनकी थी वो अनसुया, अत्रि की पत्नी अनसुया, मतलब दत्त महाराज जी की मामा है ये कपिल मुनि, अनुसुया जी के बंधु। अनुसुया ये भी एक बहुत बड़ी चिकित्सक थी। और तीसरा सबसे और एक महत्व का उनका जो आपको पता है, कपिल आश्रम गंगा सागर में है, जहां पे सगर के पुत्रों का भगीरथ ने जो ये किया, वो पानी, इसलिए गंगा का प्रवाह आया था। वो आश्रम ओडिशा और बंगाल का जो गंगा सागर ये भाग है, वहां पे उनका कपिल आश्रम है। एक नीलकंठेश्वर महादेव जो है ऋषिकेश के ऊपर, वहां पे भी कपिल मुनि का आश्रम है। ऐसे बहुत जगह पर है, ये महत्व के हैं। तो सांख्य दर्शन की व्याख्या या आस्तिक, इसका अर्थ वेद को मानने वाला, भगवान ईश्वर को मानने वाला ऐसा नहीं है, वेद को मानने वाले वो आस्तिक है। प्रमाण पदार्थ सब आपको पता है, इनके सिद्धांत आपको पता है, इनके विषय क्या है वो आपको पता है। अब इसका आयुर्वेद में कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, तो त्रिगुण सिद्धांत, सृष्टि उत्पत्ति का जो है वो पूरा सांख्य बेस है। प्रमाणों का, त्रिविध प्रमाणों का उपयोग आयुर्वेद ने बहुत जगह पर किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो मर्यादा है ना, टोटल श्लोक कॉपी पेस्ट है। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो बाधक कारण है, 8 जो कारण है, अभिभव,
अति दूरत्व, अति सामीप्य, ये टोटल सांख्य का लिया गया है। अंध पंगु न्याय कि प्रकृति ये अंध है और पुरुष ये पंगु है वगैरह वगैरह, या उल्टा कुछ होगा, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है, क्योंकि ये वोलेटाइल है, मेरा भी जाता है दिल से, दिमाग से निकल जाता है। तो अंध पंगु न्याय जो है वो सांख्य ने बताया है, इसका प्रकृति पुरुष के लिए सुश्रुत ने उपयोग किया है। महाभूत में त्रिगुणाधिक्य होते हैं और सांख्य पद का उल्लेख चरक में 2 जगह पर है। एक उल्लेख स्नेहाध्याय में है। सत्कार्यवाद, उसका हम 2 वाद देखेंगे सांख्य के। सत्कार्यवाद, इसका श्लोक आपको पता है, इसका इलेबोरेशन में मैं जाऊंगा नहीं, वो क्या है आप सबको पता है। इसका उपयोग चिकित्सा में कहां कहां किया गया। विमानस्थान में जो रसद्रव्य दोष विकार प्रभाव बताया गया, उसमें यह बताया है कि सत्कार्यवाद मतलब क्या है कि कार्य ये कारण में उपस्थित रहता है, पहले से होता है, और कारण का ही पर रूपांतरणम कार्य में होता है, ये परिणामवाद है। दोनों मिल एक साथ काम कर, ये सांख्य का है, वो परिणामवाद और सत्कार्यवाद दोनों सांख्य के एक साथ काम करते हैं। तो यहां पे ये स्पष्ट कहते हैं कि मधुरम लवण कटु तिक्त कषायः ते सम्यक उपयोज्यमाना शरीरम यापयन्ति। अगर आपने रस का सम्यक उपयोग किया तो शरीर की यापना करेगा, और मिथ्या उपयोग किया तो दोष प्रकोप करेगा। ये सत्कार्यवाद है। मतलब जो व्याधि उत्पन्न होने वाला है या स्वास्थ्य उत्पन्न होने वाला है, उसमें रस, उसमें जो गुण है वो रसों में है ही पहले से, सत्कार्यवाद है। वही जाकर आगे कार्य करने वाले हैं। रस दोष सन्निपाते तु, ये रसा यही दोष है जो मैं कह रहा हूं, वो अभी चरक कह रहे हैं, जो मैंने अभी हिंदी में कहा। ये दोष ही समान गुणः, समान गुण का अर्थ यहां पे प्रॉपर्टी नहीं है, गुणः इति महाभूतः। समान गुणः, समान गुण भूयिष्ठा, मतलब थोड़े से समान है, ऐसे ऐसे होते, ते तान अभिवर्धयन्ति, ये सत्कार्यवाद है। और क्या है? विपरीत गुणः विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्ति, मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत का बेस भी सत्कार्यवाद है। नीचे उसी अध्याय में रस विमान में ही, तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष। अब जैसे रस और द्रव्य के बारे में बताया, वैसे ही दोष और विकार के बारे में बताया। दोष में जो अवस्थित कारण है वही जाकर कार्य स्वरूप व्याधि निर्माण करने वाला है, यही सत्कार्यवाद है। कार्य की उपस्थिति कारण में होती है, सत्कार्यवाद है। और कारण से कार्य निर्माण होते समय जो परिणामन होता है उसको परिणामवाद कहते हैं। ये दोनों यहां पे आते हैं। और शारीर स्थान चरक में इन्होंने जो उत्पत्ति दी, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ चरक शारीर स्थान आर नथिंग एल्स जेनेटिक्स। ये कोई भूत प्रेत आत्मा वगैरह का वर्णन नहीं है, ये जेनेटिक्स है। कितना भी आपको कतिधा पुरुषियम निद्रा करण्याम आग्रह वगैरह लगा, मुझे भी लगता था, फिर भी यूनिक चैप्टर्स हैं, यूनिक। और कल के व्याख्यान में अगर आप, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 में 1 अगर चरक संहिता लेके आ सकते हो और केवल शारीर स्थान का 5वां अध्याय लेकर आओ इफ पॉसिबल, क्योंकि वो मोक्ष है, मोक्ष का ही वर्णन है। तो वो हम पढ़े पूरा अध्याय, क्योंकि 7-8 श्लोक है, केवल 7 और 8 ओनली श्लोक का जरूर, गद्य श्लोक है बड़े बड़े, वो हम उसमें से इसेंस जो है उतना पढ़ेंगे। अगर आपको मतलब आपको ज़्यादा उसका हेवी वजन नहीं होगा, आप ले आ सकते हो वगैरह हो तो ठीक है, नहीं तो पीपीटी बनाना पड़ेगा मुझे उसका, नहीं तो यहाँ पे ई संहिता दिखा सकते हैं। हाँ, आसान है। तो यहाँ पे सत्कार्यवाद का उपयोग किया गया है कि गौर गौ प्रभवा, गाय से गाय ही जन्म होती है, मनुष्य से मनुष्य ही होता है, अश्व से अश्व ही होता है। ऐसा कहीं किसी सुना है कि एक 4-5 औरतों की डिलीवरी हुई है और वो डिलीवरी होने के बाद वो लेटी है वहां पे, पूछ रही है कि आपको क्या हुआ? गधा? नहीं, मुझे तो मरकट हुआ। ऐसा नहीं होता ना, मनुष्य को मनुष्य ही होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सत्कार्यवाद है, क्योंकि मनुष्य का देह निर्माण करने वाला जो कार्य है उसका अंश ये स्त्री और पुरुष के शुक्र शोणित में होते हैं।
तो मनुष्य ही होता है। हाँ, गधे जैसा मनुष्य होगा आगे जाकर, गुण कुछ होंगे, लेकिन वो मनुष्य ही होगा। यदि च मनुष्य मनुष्य प्रभवाः, तो कस्मात जड़ आंध्य कुब्ज मूक वामन मिनमिन व्यंग उन्मत्त कुष्ठी किलासी जाता। बघा, देखिए इसको भी क्लिनिकली लिया है उन्होंने, कैसे जाते हैं, जन्म होता है, तो उसका फिर आगे वर्णन क्या है। सारा सत्कार्यवाद है, सारा। यहां पे दूसरा किसी सिद्धांत का उपयोग ही नहीं है। सदृशत्वम यदि मनुष्य मनुष्य प्रभवाः कस्मात जड़ादिव्य, फिर से सूत्र आया है। क्यों होता है ऐसा, इसका उत्तर दिया है कि यस्य यस्य अंगावयवस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंगावयवस्य विकृति में उपजायते। ये सत्कार्यवाद है। हम आज इन्हीं सिद्धांतों, हमने फर्स्ट ईयर से रटे हुए हैं सारे श्लोक, हमने ये विषय दे हुए, हम उनको दार्शनिक दृष्टि से देखने वाले केवल आज। समुदायात गर्भ जन्म होता है, उसके ऊपर संभाषा हुई है कि गर्भ की निर्मिति कैसे होती है। कोई कहता है माता पिता से होता है, कोई कहता है परिणाम से होता है, कोई कहता है यदृच्छा से होता है, कोई कहता है होता ही नहीं, ऐसे बहुत कुछ है, बराबर है। तो उसमें से आत्रेय ने बताया कि नहीं, षड धातु समुदाय गर्भ जन्म। अब षड धातु समुदाय इकट्ठे अगर गर्भ होते हैं तो गर्भ में जो गुण उत्पन्न होने वाले वो षड धातु में होंगे ना, उसका अंश तो होगा। ये सत्कार्यवाद है। और इसलिए वो नीचे खुद कहते हैं न अंकुर उत्पत्ति बीजात अबीजात। न अंकुर की उत्पत्ति हो रही है तो बीज के बगैर अंकुर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ये सत्कार्यवादी है। कारणानुरूपम कार्यम, खुद चरक कहते हैं, सॉरी ये सुश्रुत का श्लोक है, सर्वभूत चिंता शरीरम तत्र कारणानुरूपम कार्यम इति कृत्वा सर्व एवैते विशेषः सत्वरजस्तमोमया भवन्ति। विषय चल रहा है कि जो सत्वरजतम त्रिगुण प्रकृति में है और पुरुष निर्गुण है, तो जब तक पुरुष का प्रकृति से संयोग नहीं होता है तब तक प्रकृति के त्रिगुण ये साम्य अवस्था में रहते हैं। जब पुरुष का सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए, जब पुरुष मतलब आत्म तत्व का या ब्रह्म कहो माया से या प्रकृति से संबंध होता है, वेदांत आ गया इसमें और ये सांख्य भी है। तो जब संयोग होता है तो त्रिगुणों में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं। अब थोड़ा सा मैं, आप सारे प्रैक्टिशनर भी है, टीचर्स से, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं इसके। समझो मनुष्य की उत्पत्ति होने वाली है, गर्भ निर्माण होने वाला है, तो शुक्र शोणित संयोग हो गया और शुक्र के साथ आत्मा भी आ गया। आत्मा कैसे आता है गर्भ में, इसका वर्णन शरक शारीरिक के 4थे अध्याय में। वो शुक्र भूत आता है और उसका आपको अगर जो चरक में वर्णन है वो अगर आपको एग्जाम्पल पढ़ना है तो श्री श्री रविशंकर जी का जो आत्मचरित्र है वो पढ़िए। उसमें उन्होंने जन्म कैसे लिया इसका वर्णन किया है कि उन्होंने जन्म लेने से पहले वो उनकी माता को देखा, वो एक वृक्ष को मतलब वट वृक्ष को प्रदक्षिणा लगा रही थी और वो देखा माता, फिर तय किया कि इनके उदर में गर्भ जन्म करना है। फिर वो एक तंडुल में उन्होंने प्रवेश किया और वो तंडुल उनके पिताजी ने खाया और फिर उनके शुक्र से वो गर्भ में गए। ये उन्होंने लिखा है। उनका जो, मैं लास्ट ईयर जब मैं आया था आपके कॉलेज में, मेरा कार्यक्रम था, तब मैंने वहाँ जो बुक्स परचेस किए थे उसमें से एक इंग्लिश, उनका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का, दोनों का लिया, उनका आत्मचरित्र है और उनके एक सिस्टर ने उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। तो उस दोनों में ये संदर्भ है। वो टोटल चरक का शारीरस्थान का 4थे अध्याय का श्लोक का लिखा हुआ है। उनको चरक पता है कि नहीं मुझे पता है, पर क्योंकि वो तो सत्पुरुष है, वो तो उनको ये सत्पुरुषों को ये पता होता है। तो गर्भ आत्मज भाव भी आया, वहां पे गर्भधारणा हो गई। अब गर्भधारणा होते समय क्या हुआ कि शुक्र शोणित में जो प्रकृति थी वो तो त्रिगुणा से युक्त है। हम दोषों के बारे में बात करते हैं, त्रिगुणों से है, उसमें तरतमत्व आता है और हम मनुष्य ही है, मनुष्यत्व समान है, फिर भी हम यूनिक है, अलग अलग। मेरे जैसा दूसरा आदमी दुनिया में नहीं ना। 7 लोग होते हैं एक जैसे दिखने वाले, पर फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। मतलब कितनी वैरायटी है भगवान के पास, देखो आप, थक नहीं गया है वो वैरायटी दे देकर। ये क्यों होता है? ये त्रिगुणों की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के कारण। कौन सा होगा
प्रकट वो पता नहीं सकते हैं, वो नियति के ऊपर भी है और आत्मज भाव पर डिपेंड भी है। तो उसके अब हमें थोड़ा सा क्लिनिकल विचार करना कि गुडुचि ज्वर में काम क्यों करती है। तो गुडुचि भी ऐसी निर्माण हुई है, गुडुचि की भी जो निर्मित हुई है वो भी प्रकृति पुरुष संयोग से ही हुई है, क्योंकि वो भी एक सजीव है, उसमें भी आत्मतत्व है, त्रिगुण है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है त्रिगुणों का, दैट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वर, विशेड कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वर, त्रिदोषों का, क्योंकि त्रिदोष त्रिगुण से आ गया है। दैट्स वाई तिक्तरस कैन बी यूज। मधुरस क्यों नहीं करना है, अम्ल रस क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन, तिक्तरस का जो कॉम्बिनेशन है त्रिगुण और त्रिदोष का, उनकी उत्पत्ति का, वो ज्वर के एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो फिट बैठते हैं वहां पे। ये बहुत डीप विचार हुआ है, ये आपको परसेप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर करिए बाद में घर पे जाकर। मैं क्या कह रहा हूं, धर्माधिकारी सर ने मुझे जब इसे काम दोनों मुझे ही सिखाया, केवल एक फ्लाइट में सिखाया है ये विषय, तो मुझे भी समझने के लिए बहुत समय लगा था, अभी भी पूरा समझा नहीं है ये बात। इट्स अ डीप थॉट, लेकिन ये सत्कार्यवाद से तो ये स्पष्ट बोल रहे कारणानुरूपम कार्यम, और उन्होंने कहा है कि जो त्रिगुण है उनका जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा अव्यक्त में, वही महत, अहंकार, इंद्रिय और तन्मात्रा में आता है। आगे, रक्तेन कन्याम अधिकेन, पुत्रम शुक्रेण अधिकेन, वगैरह वगैरह, ये भी सत्कार्यवाद ही है। गर्भज भाव जो बताए हैं कि चत्वारि चतुर्विधानी भूतानी माता पितृ संभवानी आहार जानी आत्मकृतानी, सभी से देह, केवल एक से देह नहीं उत्पन्न होता, तो ये भी सत्कार्यवादी है। विकार के परीक्षण में वो बताते हैं कि विकार मतलब कैसे करना है परीक्षण, तो हेतु दोष दुष्य प्रकृति, प्रकृति का अर्थ यहां पे विकार की प्रकृति, मतलब नव है, जीर्ण है, साम है, निराम है, इसको विकार प्रकृति, यहां प्रकृति का अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। देश काल बल विशेष लक्षणतः परीक्षण करिए, नहीं हेत्वादि नाम बल विशेषम, मतलब जो हेत्वादि का बल है वैसा ही व्याधि का बल होगा, सत्कार्यवाद है। फिर से टीका में कहते हैं कि कार्य कारण यो अभेदात उपचारात, सिद्धि कल्पना सिद्धि की व्याख्या की है। सिद्धि मतलब यश, तो सिद्धि क्यों उपयोग किया, तो सिद्धि के कारण वमन आदि उनका विचार हम करने वाले हैं। तो ये कारण और कार्य, वमन आदि कारण है, सिद्धि ये कार्य है। वमन आदि से सिद्धि मिलने वाली है, इसलिए हमने कार्य कारण अभेदात से सिद्धि शब्द का उपयोग किया। यहां पे भी प्रकोप शब्द से हेतु लेना है, तो कार्य कारण यो अभेदो उपचारात प्रकोप शब्देन श्वयतु कारणम उच्यते। ये तो सुश्रुत ने सूत्र में दिया है कि कार्य कारण संयुक्ता चेतयिता भवति। रोगस दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता में वैषम्य की टीका की, तो वैषम्य मतलब विषमता स्वरूपाच्चा, मतलब जो उनका प्राकृत अवस्था है उससे ढल जाना, इसको वैषम्य कहते हैं। और इसलिए दोषों का वैषम्य यही रोग है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कारण और कारण कार्य में अभेद है, ये सत्कार्यवाद है। अष्टांग हृदय में फिर से यह सूत्र आया है कि जैसे महाभूत होते हैं वैसे ही उसके कार्य दिखेंगे। शुक्र से, यह चरक का ही सूत्र वाग्भट ने गद्पद्य में लिया है, वहां नीचे टीकाकार ने लिखा है कि कार्य कारण सादृश्यात हेतु हो। दूसरा परिणामवाद, इसी से जुड़ा हुआ परिणामवाद कि यज्जो देहा तज्जो व्याधया, जैसा जिस महाभूतों से देह निर्माण होता है उन्हीं महाभूतों से व्याधि निर्माण होती है। श्लोक हमें पढ़ना है 29। येषाम एव ही भावानाम संपत् संजनित नरम, मनुष्यों के शरीर निर्माण होते समय जिन भावों से संपत्ति निर्माण होती है उन्हीं भावों की विकृति से व्याधि निर्माण होता है। यह परिणामवाद है, सत्कार्यवाद और परिणामवाद का उपयोग है। कौन है वो भाव, तो वो कहते हैं येषाम इति यज् जातीयानाम, और यहां सिद्धांत सिद्धांत बता रहे हैं चक्रवाणी, तेज महाभूतादया, मतलब महाभूत अगर अच्छे होंगे तो संपद निर्माण करेंगे, महाभूत अगर विकृत होंगे तो व्याधि निर्माण करेंगे।
अब आगे का वाक्य हमारे लिए महत्व, आयुर्वेद का एडिशन, यहां तक सिद्धांत हो गया न्याय शास्त्र का, आयुर्वेद में ऐड किया तेन महाभूतत्वेन एव वातादीनाम ग्रहणम। हम दोषों के भाषा में बात करते हैं, हमारे टर्म दोष है। आयुर्वेद के पदार्थ सामान्य विशेष द्रव्य गुण कर्म ये नहीं है, कहीं पर भी उनको पदार्थ नहीं कहा गया है। हम दोष धातु मूलों की भाषा में बात करते हैं, हमारे पदार्थ वो है। पदार्थ का अर्थ वो शास्त्र जिस भाषा में बात करता है उसको पदार्थ ऐसे कहते हैं। प्रमिति विषय यहां पदार्थ, ऐसी व्याख्या है पदार्थ की। पदस्य पदयो पदानाम अर्थः, यह पदार्थ की व्याख्या आयुर्वेद के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रमिति विषय यहां पदार्थ, ये सांख्यकारिका की व्याख्या है। जिसका अध्ययन करना है उसको पदार्थ कहते हैं। हम प्रमाता हैं, प्रमाणों के साधन है, प्रमाणों से हमें प्रमेय प्रस्थापित करना है और फिर प्रमा प्राप्त करनी है। एम आई राइट? हम प्रमाता है, प्रमाणों से प्रमेय मतलब सिद्धांत स्थापन करके हमें प्रमा प्राप्त करनी है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। ये कहां से आया? ये न्याय शास्त्र से आया। आगे संस्कार, संस्कार हा गुणांतर धान मुच्यते, परिणामवाद का ही उल्लेख है। धातवो ही धातवा आहारा, कि एक धातु दूसरे धातु को निर्माण करता है, ऊर्जा देता है, प्रकृति स्थापन करता है, ये परिणामवाद है। आहार से ही सार किट्ट निर्माण होते हैं, ये सत्कार्यवाद और प्रमाण है, परिणामवाद है। मल स्वरूप जो धातु है वह स्रोतसों के अयन मुख से गमन करते हैं और यथा विभागेन यथा स्वम धातुन आपुर, जहां जहां जिसकी आवश्यकता है वहां वहां जाते हैं। और हिताहार उपयोग से विशेषः, मतलब हिताहार लिया तो शुभ होगा, अहिताहार लिया तो अशुभ होगा, यह भी सत्कार्यवाद और परिणामवाद है। अब रस की, रक्त की भाषा बता रहे हैं, उसमें पहले रस बता रहे हैं, सुश्रुत। तो पंचभौतिक चतुर्विध षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य सम्यक परिणतस्य, यह परिणामवाद आ गया। यह तेजोभूत आहार का परिणमन होके दो तेजोभूत सार परम सूक्ष्म निर्माण होगा, उसको रस कहा जाता है। यह सत्कार्यवाद और परिणामवाद का ही उपयोग है। यकृत प्लिहानो रसो प्राप्य रागम उपैति, ये रस यकृत प्लिहा में प्राप्त होकर रंजत्व होकर उसको फिर रक्त कहते हैं, यह परिणामवादी है। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या च न अतिच, मतलब काल बुद्धि और इंद्रिय इनका योग मिथ्या अतियोग हुआ तो उस प्रकार के योग्य अयोग्य निर्माण होते हैं, यह भी परिणामवाद है। यहां पे कह रहे हैं कि व्याधि परिसंख्य है, अपरिसंख्य है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो कैसे निर्माण होते हैं, उनके प्रकोप कैसे होते हैं, ये सारा इसी सिद्धांतों से आगे गया है। ज्वर निदान में इन्होंने तीन जो आत्मसात्म्य संयोग प्रज्ञा पर परिणाम, ये एक हेतु ही बताया है। ये परिणाम क्यों होता है? परिणाम का अर्थ यहां पे काल है, मतलब कुछ तो कारण से कार्य उत्पन्न होने के लिए जो समय लगता है उसका विचार भी यहां करना पड़ता है। फिर जनपद ध्वंस में उन्होंने ऐसा बताया, जनपद ध्वंस पता है ना आपको, कि विषय सिद्धांत पता है ना, कि अनेक विविध प्रकार के मनुष्य, विविध आयु के, विविध दोषों के, विविध प्रकृति के, विविध स्वभाव के, अनेक विध मनुष्य एक सामान्य कारण से एक समय में मृत्युमुखी होते हैं। मतलब उन सभी का जो मृत्यु सामान्य है वो समान है। ऐसा होता देखा है हमने कि कई एक टूर जाने वाली है और एक 10-12 सिटी में से एक 50 लोग इकट्ठे आते हैं और वो बस में जाते हैं और बस गिर जाती है और 50 लोग इकट्ठे मर जाते हैं। मतलब उन क्या हुआ, हंसने का क्या हुआ? हंसने कुछ है क्या? हमें भी बताओ, हम भी हंसते हैं। कुछ होगा तो बताइए। कुछ मजाक के बारे में बता रहा हूं? नहीं ना, कुछ होगा तो बताइए। तो ये मृत्यु सामान्य है, मृत्यु सामान्य होता है। अब जो है उनका जो कर्म होगा 50 लोगों का, वो परिणमन होकर मृत्यु में लेके गया, कारण का कार्य में रूपांतरण हो गया। ये जनपदोध्वंस है। सभी का सामान्य कारण समान है,
वो परिणामवान होके परिणामवाद से मृत्यु तक लेके गया। काल अकाल मृत्यु के बारे में भी यहां पे बताया है, बाद में आप देख लीजिए। ये परिणामवाद का ही विचार किया उन्होंने। आगे कहते हैं कि देखो, सामान्य तद वैगुण्यात समान काला समान लिंगा व्याधयो अभिनिर्वर्तमाना जनपदम, जनपद का उद्ध्वंस हो जाता है, पूरा देश का देश नष्ट हो जाता है। यूक्रेन में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, अनेक, इन सब का मृत्यु सामान्य समान था, कारण समान था, वो कार्य में परिणत हो गया, सत्कार्यवाद और परिणामवाद। शस्त्र प्रभव जनपदोध्वंस, रक्षोगुण से मतलब कोविड का ये संदर्भ चरक के है। रक्षोगुण मतलब वायरस, विविध भूत संगई ही तम अधर्मम यद्वा, जो अधर्माचरण करते हैं उनमें वायरस की वातावरण में, क्योंकि जब वायु देश जल काल दुष्ट होते हैं वहाँ वायरल मतलब रक्षोगुण का संचार होता है और वो अनेक विविध प्रकार के मनुष्यों का एक समय में मृत्यु कर देते हैं। और ये केवल अभी नहीं हो रहा है, एक युगों से होता आ रहा है। आयुर्वेद की उत्पत्ति ही एक पैंडेमिक की ट्रीटमेंट के लिए हुई है। आयुर्वेद कोई निज व्याधि की चिकित्सा नहीं है, ये पैंडेमिक के ट्रीटमेंट का साइंस है। रुद्रकोप के समय जो हुआ था वो इट्स सारा वर्णन देखिए, पैंडेमिक है। आप जनपदोध्वंस देखिए, पढ़िए अध्याय, और एक पिक्चर देखिए बाद में जाकर गॉड्स एंड किंग्स नाम का, ये मोजेस के ऊपर पिक्चर है। आपको वर्ड टू वर्ड उस पिक्चर में दिखाई देगा कि कैसे जनपद का उद्ध्वंस होता है और मोजेस उसको, उसमें से उसके लोगों को बचाता है और देश त्याग करके दूसरे देश में चला जाता है और फिर यहूदी राज्य स्थापन करता है, जिसको आज इजराइल कहा जाता है। गॉड्स एंड किंग्स, ये पूरा अगर आपको चरक संहिता का विमान संघ का 3रा अध्याय देखना है, दर्शन करना है, मैं बोल रहा हूं, पढ़ना नहीं है, तो गॉड्स एंड किंग्स नाम का मूवी देखिए, मिलेगा आपको, वो OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं बावड़ेकर सर नाम के हमारे गुरुजी हैं, उनके पास क्लिनिक में मैंने 22-23 लोगों के पास पढ़ने के लिए गया आज तक। तो जब मैं उनके पास गया तो मैं आपके साथ पास पढ़ना चाहता हूँ, मैं 3rd ईयर में था, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक पेपर निकाला और उसमें कुछ लिखा, ये करके आओ। मुझे लगा कि ये श्लोक कंठस्थ करो, क्योंकि प्रमा जोशी मैडम ने मुझे बताया था कि 15 अध्याय कंठस्थ चाहिए तभी मेरे पास आने का, नहीं तो नहीं आने का। मैंने कहा है 2nd डे ऑफ BMS, क्योंकि मेरे 10 तक ही थे 15 अध्याय कंठस्थ थे, मतलब मेरा BMS में आना ऐसा कोई तय था, यही करना है जीवन में, यही करना था। वैसे इन्होंने मुझे बताया कि ये क्या है, मैंने देखा तो फिल्म की लिस्ट थी, मूवीज की लिस्ट थी और कुछ किताबों की लिस्ट थी। मैंने कहा सर ये क्या, हाँ ये देख के आओ। तो उसमें पहला नाम था मुगल आजम, तो मैंने कहा सर ठीक है, कल देख के आओ, मुगल आजम देख के आओ। उस समय ऐसे यूट्यूब वगैरह नहीं था कुछ, तो उसकी सीडी लानी पड़ी, फिर वो डेस्कटॉप था हॉस्टल में, एक ही के पास डेस्कटॉप था, फिर उसमें देखा मुगल आजम। मैंने कहा कौन पागल आदमी है, क्या देख, मुगल आजम देख कर आओ बोल रहे, क्लिनिक में आना है तो। और मैं देख के गया, देखा, मैंने कहा अब बताओ अनारकली का सारा परीक्षण कैसा होगा, कैसा करोगे सारा परीक्षण। पृथ्वीराज कपूर जो अकबर बैठा है, उसका आवाज जो है, उसके आवाज से उसका कुछ सार या कुछ धातु का बल आप देख सकते हो क्या। और कई अलग अलग सीन थे, उसका आयुर्वेदिक विचार करो। फिर दूसरी फिल्म बताई थी हम दिल दे चुके सनम, उसी समय नई नई रिलीज हुई थी। तो मैंने कहा इसमें क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं देख क्या हो। फिर वो क्या, आखिरी सीन में जब वो ऐश्वर्या राय दौड़ के अजय देवगन के पास जाती है, मतलब शरीर बल अच्छा होना चाहिए ना, मानस इच्छा कितनी भी हो, लेकिन धातु का बल अच्छा होगा तो ही दौड़ के जा सकती है। मतलब आपको हर जगह पे आयुर्वेद देखना चाहिए। शादी होने के बाद भी वो सलमान खान को भूल नहीं रही है, तो ये सत्व परीक्षण कैसा होगा उसका, क्या ये सद्वृत्त में बैठता है आयुर्वेद के, नहीं बैठता है। पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, अब शादी हो गई है तो मैं पति के साथ ही रहूंगी, तो वो आयुर्वेद के सद्वृत्त में आ गई। फिर ऐसा हर जगह, मतलब आयुर्वेदिक को केवल क्लिनिक में नहीं देखना है, आयुर्वेदिक हर जगह देखना है। मेरे सर देशमुख सर मुझे कहते थे, जब वो नाड़ी पिताजी से तो सीखी थी, उनके पास जब पढ़ना शुरू कर दिया था, उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑब्जर्व पीपल। आप कभी बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, वहाँ बैठे हो, बहुत सारे लोग इधर उधर करते रहते हैं,
तो उनको ऑब्जर्व करो भाई, इतना ऑब्जर्व मत करो कि उनको लगे कि आप उनको देख रहे घूर घूर के। क्या ऑब्जर्व करना है कि चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, और उससे उनके दोषों का एनालिसिस करने का प्रयास करो। तो ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि वेटिंग रूम से आपके सामने पेशेंट आकर बैठने तक आपके दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बैठना चाहिए कि इसको आइदर और है। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही पहला दर्शन है, हम भूल गए। हम सारा आजकल सर्वे पेपर भरना मतलब रिसर्च हो गया है, सर्वे पेपर भरना मतलब रिसर्च हो गया है, नहीं। अभिशाप प्रभाव जनपदों से तो भूल ही गए। कोई एक गुरु सिद्ध वृद्ध पूज्य ऐसे हैं, उनका अगर अवमान हो रहा है, उदाहरण बता सकते हो? उन्होंने शाप दिया, गांधारी ने शाप दिया कृष्ण को, जैसे मेरे सारे 100 पुत्र, विचार करो आज एक होने को नामुश्किल है लोगों को। 100 पुत्र थे, पुत्र, हाँ 100, वो एक 8 दिन में मर गए। और एक व्यक्ति ने मारे, भीम ने, उसकी प्रतिज्ञा थी। तो जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे तेरे कुल का नाश होगा और तू देखता रहेगा। और उन्होंने शांति से स्वीकार किया वो श्राप, और यादव कुल का वंश नष्ट हो गया, केवल व्रज रहा। फिर वो देश छोड़ के गया, उसको व्रज देश, व्रज भूमि कहते, वो आगे यादव, उससे फिर आगे थोड़ा यादव वंश चला। व्रज ये परपोता था कृष्ण का। कृष्ण का जी मृत्यु हुई तो उसका उम्र 125 ईयर्स की थी, और युद्ध के समय वो 82 ईयर्स का था और मध्य वय में था। यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्वतसाम प्रकार विशेषः। ये क्या है? परिणामवाद है, और स्वतस की व्याख्या भी है, श्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी। कार्य का कारण में परिणमन होते होते वहन होता रहता है, यह स्रोतसों में होता है। यह सूत्र हमारे लिए महत्व का है, थोड़ा सा समय लूंगा यहां पे, लेकिन क्लिनिकली यह सूत्र बहुत महत्व का है। धर्माधिक, मेरे गुरुजी धर्माधिक सर का बहुत फेवरेट श्लोक है ये। इस श्लोक के बगैर उनका व्याख्यान आप आजकल पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो 1-2 घंटे ही बात कर, ज्यादा ना अभी बोलना बंद कर दिया। आज हमें एज अ फिजिशियन हमें एक बहुत बड़े इसको फेस करना पड़ रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के शारीर भाव है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, उनकी डिफिशियंसी के पेशेंट हमारे पास आते हैं। विटामिन डिफिशियंसी, इंसुलिन डिफिशियंसी, हार्मोनल डिफिशियंसी या मिनरल डिफिशियंसी, इसके पेशेंट आते हैं। सोडियम कम हो जाता है, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पेशेंट आता है। कुछ नहीं, सोडियम का एक पानी पिला दिया या दवाई दिया तो सीधा हो जाता है वो। कितने सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। विटामिन D3 और B12 के तो पूरी अब फैक्ट्री निकली अब, है कि नहीं? आपको डिपेंडेबल कर रहे हैं टैबलेट्स पर। इंसुलिन तो मेरे पास अभी पेशेंट है 25 साल से, फॉर 25 years he is taking treatment for diabetes and still his sugar 300। मैंने कहा 25 साल क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारा डॉक्टर, ठीक नहीं कर सके? और 25 साल मेडिसिन लेकर भी यही हालत है, तो क्यों लेने की मेडिसिन? और सारा बंद है, मधुर बंद है, ये बंद है, ये नहीं खाएंगे, ये वो नहीं। मैंने कहा खाओ, सब खाओ, इतना बंद करके भी 300 शुगर है, तो खाकर मरो ना। हाँ, बिना खाकर नहीं खाया करके ऐसे भी मरने वाले हो, खाकर मरो, जल्दी मर जाओगे, ज्यादा तकलीफ कम हो जाएगी आपको। डायबिटीज इज अ ब्लंडर, ट्रस्ट मी। हाइपर क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो कोई आता है अभी आजकल, इट्स अ ब्लंडर। भूल जाओ, पेशेंट को बताओ कुछ नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं, रिपोर्ट आता है लिपिड प्रोफाइल रेज है, शुरू गुगुल यहां। अब क्या कुछ वैद्य भी गलती कर रहा है? कोई जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल जानबूझ के कम कर दी गई है गोलियां खपाने के लिए, कुछ करने की जरूरत। बीपी इज अ सिम्टम नॉट अ डिसीज। ट्राई टू फाइंड द सिम्टम, क्यों बीपी बढ़ रहा है? ये सत्कार्यवाद है सब कुछ। तो 25 ईयर्स से अगर वो डायबिटीज के इंसुलिन सप्लीमेंट ले रहा है, डॉक्टर क्या सो रहा है क्या? ठीक नहीं कर सकता डायबिटीज तू?
किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को जाके पूछो दुनिया में आज। एक बार क्या हुआ, मेरा एक मित्र है बहुत मेरा मतलब स्कूल से हम साथ में पढ़े, वो डायबिटोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन करके बाद में डायबिटीज से किया और डायबिटीज के पेशेंट को उसकी, और मतलब फैक्ट्री है उसकी पेशेंट की, बड़ी प्रैक्टिस है, वेल नोन, मेरी ही उम्र का है, हम उम्र का है। एक ऐसे ही गेट टुगेदर में मिले थे और वो बोलने लगा कि आयुर्वेद को एविडेंसेस नहीं है, एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं है, ये क्या फेक साइंस, सुडो साइंस है। मैंने कहा सत्य, सब सत्य है, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं, केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा तेरी प्रैक्टिस 17 साल की हो गई है। बोले हाँ। मुझे बताओ तुमने आज तक कितने पेशेंट देखे? तो उसको गर्व से उसी इतने 1000 पेशेंट देखे। मैंने कहा कितने पेशेंट का डायबिटीज ठीक हुआ कि अब उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, शुगर लेवल नॉर्मल आ गई है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन? ऐसा है एक आपका? इतने हजारों में है? शांत चेहरा ऐसा हो गया उसका, क्योंकि वो डायबिटीज ठीक नहीं करते, दे जस्ट मेंटेन द डोज। और उल्टा पूछा कि तेरे डायबिटीज के ट्रीटमेंट से सीआरएफ में कितने पेशेंट जाकर लॉज हुए हैं, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी उनकी, फिर किडनी ट्रांसप्लांट तक लेके जाते हैं। मतलब डायबिटीज के क्लिनिक में गया मतलब आप 20 साल के बाद स्मशान तक लेके जाने वाले डॉक्टर है वो, स्वर्ग द्वार ऐसा नाम देने को। तो मतलब सप्लीमेंट जो होती है, कितने सप्लीमेंट हो गए आप? जो भी कोई लड़का 14-15 ईयर्स का होता है, जब उसमें पुरुषत्व के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, तो क्या उस समय हम उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? कोई लड़की 14-15 साल की होती है, अब उसकी जो मेंसेस शुरू हो गई है, तो क्या हम उसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सप्लीमेंट देते हैं? नहीं देते हैं। तो कहां से बनता है? बॉडी खुद बनाती है। पहले नहीं था, अभी आ रहा है। कहां से आया? बॉडी ने बनाना शुरू कर दिया है। हम जो रोटी, चावल, दाल, खिचड़ी, आइसक्रीम, पनीर, नॉनवेज जो भी कुछ खाते हैं, उससे हमारे शरीर के धातु बनते हैं, उपधातु बनते हैं, विटामिन बनते हैं। विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम से उपधातु है सारे, हॉर्मोन्स, दे आर ऑल धारण कर रहे शरीर का। इसका यह सूत्र है कि यद अन्नम देह धातु ओजो बल वर्ण आदि पोषकम, ये धातु में ये सब आ गए, केवल रसद शुक्र नहीं, विटामिन भी आ गए, मिनरल्स भी आ गए, एंजाइम्स भी आ गए, हार्मोन्स भी आ गए। तो जो अन्न देह का पोषण करता है, धातु का पोषण करता है, ओज बल वर्ण देता है, वो आहार नहीं कर रहा है, तत्र अग्नि हेतु। आहार जो खाया है, अभी समझो आपने राइस खाया है, तो आज जो आप राइस खाओगे उससे आपके शरीर का रक्त निर्माण होने वाला है, लसिका निर्माण होने वाली है, शुक्र निर्माण होने वाला है, आर्दव निर्माण होने वाला है, मांस निर्माण होने वाला है, विटामिन होने वाले, मिनरल्स होने वाले। कहां से आते हैं? वो आहार से, इस राइस से आने वाले। शरीर उस राइस का, रसम का, सांबार का रूपांतरणम आपके धातुओं में कर रहा है। सत्कार्यवाद है, परिणामवाद है, सांख्य है। और हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तत्र अग्नि ही हेतु, अग्नि का काम है। इसलिए जहां पे भी आपको डेफिशिएंसी के पेशेंट आएंगे, आपको सप्लीमेंट दो जरा उसको मेंटेन करने, लेकिन साथ में अग्नि की चिकित्सा करो, तो पेशेंट जल्दी ठीक होकर सप्लीमेंट लेना भी बंद करना पड़ेगा। या तो फिर आप ही मतलब आयुर्वेदिक जीपी हो गई, फिर वो अर्श हुआ अर्श कुठार, कास हुआ कास कुठार, कृमि हुए कृमि कुठार, श्वास हुआ श्वास कुठार। सालों साल श्वास कुठार लेते हैं पेशेंट। साल में 2 बार प्रतिष्ठा होता है और एक बार हुआ तो 6 महीने टिकता है। मतलब पूरा साल हाथ में रुमाल है, चल रहा है। इतना पानी कहां से आता है? कभी पूछा किसी प्रतिष्ठा के पेशेंट को, भाई इतना पानी कहां से लाते हो आप? हेतु होगा ना मतलब। और अगला वाक्य महत्व का है, नहीं आहारात अपक्वाद रसादया, अपक्व आहार से धातुओं की निर्मित नहीं होती। उसमें हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन भी आ गए। रस से रक्त, मांस से धातु और उपधातु निर्माण होते हैं, यह भी परिणामवाद का ही उदाहरण है। अन्न से किट और सार भाग निर्माण होते हैं, जो निर्माण होते हैं, यह भी एक धातु स्नेह परंपरा जो बोली है वो भी परिणामवादी है।
जठराग्नि के कारण जो द्रव्य में रसांतरण होता है और फिर रस के परिणामांते, बघा शब्द आया परिणमन, परिणमन के बाद जो उत्पन्न रहता है उसको विपाक कहा जाता है, यह परिणामवाद है। स्वभाव ईश्वर काल ये प्रकृति का जो है उसमें परिणाम शब्द है, और परिणामवाद जो नियतिवाद है उसका ये वर्णन किया है उन्होंने कि किस प्रकार से होता है। सांख्य का इतना देखो कि सबसे बड़ा उपयोग सांख्य का आयुर्वेद ने किया है। अब आगे योग दर्शन, समय है ना, मुझे बताओ 5 बजे, जल्दी करता हूं। योग के बारे में सब आपको पता है, इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर मानते हैं ये। अब आयुर्वेद ने योगम मोक्ष प्रवर्तक शब्द है, सद्वृत्त का वर्णन है, आचार रसायन है, त्रिविध पाप कर्म बताए, और पूरी मानस चिकित्सा जो है वो योग दर्शन के अनुसार बैठाई गई है। ये सूत्र चरक का कि योगे मोक्षे सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम, योग मतलब क्या है, मतलब योग और मोक्ष में सभी वेदना, वेदना का अर्थ पेन नहीं है, पेन तो है ही, लेकिन वेदना का अर्थ फीलिंग्स है। इसलिए महाकषाय में वेदना प्रशमन महाकषाय है, शूल प्रशमन भी है और अंगमर्द प्रशमन भी है। तो शूल प्रशमन ये पेन किलर है और वेदना प्रशमन ये आपकी फीलिंग्स को मेंटेन करने वाला है, अनवांटेड फीलिंग्स को कम करने वाला महाकषाय है। वेदना का अर्थ फीलिंग्स है, तो सुख वेदना ये पॉजिटिव फीलिंग्स है, और दुख वेदना है ना, सुख की व्याख्या क्या है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, वेदना शब्द है। पॉजिटिव फीलिंग्स ये सुख है और निगेटिव फीलिंग्स ये दुख है, उनको मेंटेन करना, क्योंकि दुख भी चाहिए आदमी को, केवल सुख होगा तो जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए कुंती को जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, कृष्ण ने 3 लोगों को दिखाया है विराट रूप, एक यशोदा को दिखाया, दूसरा अर्जुन को दिखाया और तीसरा कुंती को दिखाया है। कुंती उदास थी क्योंकि कर्ण के प्रकरण में, तो उसने पूछा कि तेरी, उसकी सगी बुआ थी, मतलब आंट थी उसकी सगी कुंती, वो दत्तक गई थी दूसरे कुंती भोज पर, वसुदेव की सगी बहन थी वो। तो उसने पूछा कि बुआ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आपको लगता है कि मैं केवल आपका नेफ्यू हूं, मैं नेफ्यू नहीं हूं आपका, मैं कौन हूं, देखो। तो विराट रूप दिखाया, और आज जन्माष्टमी इसलिए उदाहरण आज दे रहा हूं मैं। और पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आप जो मांगेंगे आप दूंगा मैं। तो कुंती ने मांगा है मुझे दुख दो, दुख दो। तो वो अचंभित हो गया कृष्ण कि मैं मांग रहा हूं, आपको कुछ भी मांगो, मैं देने के लिए बैठा हूं यहां पे। तो बोले नहीं, मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में ही मुझे तेरी याद रहेगी, सुख में तेरी याद नहीं रहेगी। मैं अब भगवान छोड़ दो ना, कॉलेज में देखो, अगर बच्चे पास होते तो क्या कहते, सर हम पास हो गए, और फेल हो गए तो हमें फेल किया गया, कर्ता बदल गया। पास हो गए तो ये पास हो गए, फेल किया तो इनको फेल किया गया है। या मनुष्य का क्या कहते हैं उसको, स्वभाव है। तो मोक्ष क्या है, निवृत्ति निश्शेषः, सभी वेदनाओं से निवृत्त होना, यह मोक्ष है। और मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त नहीं होता, मोक्ष जीवित अवस्था में ही, कल मोक्ष के बारे में बात करने वाले, जीवित अवस्था में प्राप्त होता है। और योग ये मोक्ष प्रवर्तक है, ऐसा चरक कहते हैं। यहां समाधि धैर्य स्मृति का आया है। समाधि की टीका चक्रपाणी ने दी है कि विषयभ्यो निर्वर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम, विषय से निवृत्त करके। और कौन से विषय, अहितकारक विषय, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध है जो बेसिक विषय इंद्रियों के, ये हम बंद नहीं कर सकते। सारा संसार त्याग करके हम किसी जंगल में जाके बैठे तो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो होने वाले हैं। इसलिए मीना कुमारी का एक गाना है, संसार के भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, बहुत सुंदर गाना है। देखो आम्रपाली नाम का फिल्म है उसका, अशोक कुमार और मीना कुमारी, जाके घर जाके सुनो, लता जी का गाना है। एक चारवाक दर्शन का विचार है उसमें, उस गाने में। उन्होंने कहा कि उस गाने में ऐसा बताया कि इतनी सारी सृष्टि निर्माण की है, इसका आनंद लेने से छोड़कर आप वो संन्यास लेके बैठकर ध्यान धारणा क्यों कर रहे हो, इसका आनंद कौन लेगा फिर। ये चारवाक का विचार है। दर्शन सब जगह देखना है, फिल्म में भी देखना है, ऐसा नहीं कि क्लासरूम में बैठ के या ग्रंथों में ही देखना पड़ता है। दर्शन का अर्थ देखना है ना, तो वो सारी दुनिया में देखना पड़ता है। और बॉलीवुड प्रायः चारवाकी है,
ये आचार रसायन में भी सारे योग दर्शन के ही सारे जो यम नियम है वो आए हैं, इसलिए लिखा भी, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये कल हम देखने वाले, इसलिए अभी इसके ऊपर बोलता नहीं हुआ। चरक का पूरा पुरुष विषय मोक्ष पर लिखा हुआ। देखो ऐसा चरक जो एक जगह मद्यपान विधि बताता है, एक जगह मैथुन विधि बताता है, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया है, वही चरक मोक्ष का भी वर्णन करता है। मनुष्य जीवन का कुछ भी एंगल छूटा नहीं है चरक में, सब वर्णन है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा वहां पे। सत्याबुद्धि का वर्णन है, यह भी पूरा योग शास्त्र से लिया गया है या उसी विचार प्रवाह से लिया गया है। मुक्त की व्याख्या है चरक में कि न आत्मनः कर्णाभावात कर्णाभावात लिंगम अपि उपलब्धते स सर्व कर्ण अयोगात, मतलब कर्ण है, इंद्रिय है, फिर भी कर्ण अयोग है, उसको मुक्त कहते हैं। विषय ग्रहण कर रहा है लेकिन वो उससे, मतलब जैसे कमल पानी में होता है पर उसको पानी छू नहीं सकता, वैसा है वो। ये भी उसके पर्याय है विपाप वीरज वगैरह, ये सारे योग शास्त्र से जैसे ही है। सत्य अहिंसा, ये तीसरे जो ऐषणाएं हैं उसमें क्या प्राप्त करना है उसका विचार उसमें भी है। उन्माद की चिकित्सा में भी यम नियम आदि का वर्णन किया है। जनपद ध्वंस की चिकित्सा में भी आपको वही सब संदर्भ मिलेंगे। अब न्याय दर्शन सब पता है आपको, प्रमाण और सब, लेकिन न्याय का भी बहुत सारा उपयोग आयुर्वेद ने किया है। असत्कार्यवाद में भी, असत्कार्यवाद मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज असत्कार्यवाद? कार्य का कारण में अस्तित्व नहीं होता है, सिंपल भाषा में। शास्त्रीय भाषा बहुत डिटेल में होगी, सिंपल। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, एकम शास्त्र माध्यम विद्या शास्त्र निश्चय, हमें शास्त्र निश्चय करने के लिए दर्शन पढ़ने हैं, हमें दार्शनिक नहीं होना है। हम वैद्य हैं पर हमारा शास्त्र का निश्चय करने के लिए दार्शनों की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं विचार प्रवाह आए हैं। तो उसका ये एक संदर्भ है, अभी इसके विस्तार में जाऊंगा नहीं। पंचमभूत शरीर समवाया पुरुषः, ये शरीर निर्माण होता है लेकिन कुछ भाव, जैसे वर्णन किया है कि एक ही माता पिता के अगर 4-5 अपत्य है तो जेरोक्स नहीं निकलती ना। क्यों नहीं जेरोक्स निकलती? पता चलता है कि 4 बहनें हैं तो यहां ये बहनें होंगी सगी, पर फिर भी अलग अलग है। ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, क्यों? क्योंकि आत्मज भाव नाम का जो विषय है वो असत्कार्यवाद से आता है, कि वो कुछ यूनिक लेके आता है। जो कार्य दिखाई दे रहा है वो कारण में नहीं है, माता पिता में नहीं है, वो आत्मज है। यह असत्कार्यवाद का उल्लेख हो सकता है। आगे चलते हैं, बाकी सब वैसे ही है, वही उसी विषय। पंचवायु वाक्य न्याय दर्शन का बहुत महत्व का, उसका पूरा वैसा का वैसा वर्णन चरक के विमान स्थान के 8वें अध्याय में है कि प्रतिज्ञा स्थापना मतलब क्या, तो प्रतिज्ञा या हेतु दृष्टांत उपनय निगमन की स्थापना करना, प्रतिज्ञा करके फिर पश्चात स्थापना करना, और जिसकी प्रतिज्ञा की नहीं है उसकी स्थापना क्या करेंगे। तो प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, उपनय क्या है, निगमन क्या है, ये न्याय दर्शन का है। पंचव्य वाक्य। पीठरपाक, पीठरपाक का अर्थ क्या है? ग्रॉस उसका पचन होता है ना पूरा। पीलूपाक में परमाणु अलग अलग होकर ये होकर होता है। तो हमारा जो पचन की प्रक्रिया है ना, आहार पचन की, स्थाल्याम उदनम पचती, ये पीलूपाक है। और धातु का परिणमन जो आयुर्वेद ने बताया है पीठरपाक है, कि रस का रूपांतरण रक्त में होता है, रक्त का रूपांतरण मांस में होता है, मांस का, ये पीठरपाक है। ये चक्रपाणी की भानुमति टीका का संदर्भ है सुश्रुत के ऊपर की। एवं च रक्तादि षड्धातुस्थः अग्नयः पूर्व धातु पाचकः स्वस्व धातु उष्म रूपाश्च भवन्ति रसाग्निस्तु स्वधातु मात्र उष्म रूपः एवं सप्तधात्वाग्नयः। पंचभौतिक आहार से अवस्था भाग होता है, पंचमाभूत विघटन होता है और धातु परिणमन होता है, धातु की निर्मिति होती है। न्याय दर्शन में तीसरे जो उसका अन्निक शब्द कहा, अन्निक है, उसमें अध्याय वगैरह नहीं है, तो तृतीय अन्निक, हाँ अध्याय में अन्निक है, हाँ, तो तृतीय अध्याय का जो द्वितीय अन्निक है उसमें 60 नंबर का जो सूत्र है, इसके आगे जो वर्णन है वो पूरा का पूरा चरक में
शारीर स्थान के 6ठे अध्याय में शरीर उत्पत्ति के लिए आया है कि कोई कहता है परिणाम से शरीर उत्पत्ति होता है, कोई कहता है यदृच्छा से होता है, कोई कहता है माता पिता होता है, कोई कहता है कोई अलग अलग उन्होंने वो सारा संभाषा चरक में वैसी की वैसी वही है, लेकिन कौन से ऋषि ने कहा इतना चरक ने बताया है। टोटल कोरिलेट कर सकते हैं हम दोनों को, न्याय सूत्र और चरक शारीर। एक और अभी याद आया, मैं पीपीटी करते समय मेरे ध्यान में नहीं आया लेकिन अभी विचार आया है, चक्रपाणी का काल क्या है कोई बताएगा? 11वीं सेंचुरी। 11वीं सेंचुरी में एलोपैथी का कुछ अस्तित्व था? नहीं था। फिर भी 11वीं सेंचुरी में चक्रपाणी ऐसा कहते हैं, चरक निदान स्थान का प्रथम अध्याय सूत्र क्रमांक 37 की टीका में, कि अगर कोई सूक्ष्म प्राणी शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का ऊष्मा बढ़ता है। मतलब वायरल फीवर का वर्णन है, सारे वायरल फीवर, मतलब शरीर का ऊष्मा बढ़ने के लिए कारण कोई अलग ही है। वैशेषिक दर्शन ये सब पता है। वैशेषिक का भी बहुत सारा उपयोग आयुर्वेद ने किया है। परमाणुवाद पिलूपाक का, शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदे न अपरिसंख्या भवंती, सारे दोष धातु में ये परमाणु स्वरूप ही है। यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो, मूर्तिमंत की टीका पढ़ी, हम टीका पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं। मूर्तिमंत की टीका है असर्वगत द्रव्य परिमाणवंत। सर्वगत मतलब विभु, 4 द्रव्य विभु है, आकाश काल दिशा आत्मा, उनको परमाणु नहीं है। 4 महाभूत और मन, इनको परमाणु है। तो असर्वगत मतलब जिनको परमाणु है, जो विभु नहीं है, ऐसे जो द्रव्य है 5 द्रव्य, उनके जो परिमाण है उनके ही स्रोतस होंगे। इसलिए मनोव स्रोतस है, क्योंकि मन को परमाणु है। तो जो जो धातु या जो जो शरीर के भाव ये परमाणु रूप है, उनके स्रोतस है। या उल्टा कहो, जिन स्रोतसों का वर्णन किया है वो परमाणु स्वरूप है। ये परमाणुवाद है। यहां कहते हैं यावंतो लोके मूर्तिमंतो तावंतो भावः, यावंता पुरुषे तावंतो लोके, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है। मन का गुण अणु बताया है, अणुत्वम अथ एकत्वम, ये 2 गुण बताए हैं। जो महाभूतों के वर्णन है उसमें पार्थिव महाभूत जो है उसमें सर्वमूर्त समूह, परमाणु मूर्त मतलब मूर्ति है उसको। शरीर संख्या का वर्णन करते समय इन्होंने कई पार्थिव द्रव्य जो बताए उसमें यद विशेषता स्थूलम स्थिरम मूर्तिम, मूर्ति शब्द आया है। फिर केचिद अवयव, मातृजादि जो अवयव है उसमें भी सबसे अंतिम में मूर्ति शब्द आया। पार्थिव जो है वो मूर्तिवान होता है, ये चरक का शारीर का है। ग्रहणी में भी उन्होंने ये बताया है कि रस का परमाणु जाकर बैठता है और रस प्रदोषज होता है, व्याधि करता है। इसका विस्तार कल करना चाहूंगा, मुझे याद करवा दीजिए। त्रिविध कुक्षी में भी उन्होंने बताया कि 1 अंश मूर्त आहार पदार्थों का करना है, मतलब जिनकी मूर्ति है। अमात्रा में भी उन्होंने मूर्तिमान शब्द आया है कि यो ही मूर्ता नाम आहार जाता नाम सौवित्यम गत्वा। शरीर क्लेद, प्रमेह का वर्णन चल रहा है कि शरीर का क्लेद जो अगर मतलब श्लेष्मा के गुणों में मूर्त शब्द आया है, 1 ऑफ द 10 गुणास मूर्त, दूसरी कहीं जगह नहीं है, मूर्त शब्द है, प्रमेह होता है। यहां पे भी वही है, प्रमेय में ही मूर्तान मूत्रगतान दोषान अणुन्मेहति यो नरः। प्रमेह मतलब डायबिटीज नहीं, डायबिटीज एंड प्रमेह इज डिफरेंट डिसीजेस। प्रमेह ये मूत्रवह का व्याधि है, डायबिटीज ये अन्नवह का व्याधि है। संप्राप्ति पैनक्रियाज में है और प्रमेह की संप्राप्ति वृक्क में है। प्रमेह का अर्थ प्रभूत आविल मूत्रता। कहीं पर भी चरक में सुश्रुत में बताने के रक्ते शर्कराम वर्धयति, मूत्रे शर्कराम वर्धयति, कहीं नहीं बताया है। हाँ, डायबिटीज इज अ डिफरेंट डिसीज, मधुमेह इज अ डिफरेंट डिसीज, डोंट कोरिलेट इट। यहां पे भी अणुप्रवण भाव बताया है शुक्र का, उसकी टीका भी है। अणुप्रवण भाव इति अणुत्व सति बहिर्निर्गमन स्वभाव। यहां पे भी अणु शुष्क चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण के लिए अणु शब्द आया है। भिन्न मूर्ति इति अणुरूपतया भेदित मूर्ति ही अश्मरी के बारे में बताया है, चक्रपाणी ने अणु शब्द उपयोग किया है। अणुता च अस्य अणुस्रोतो अनुसारित्वात्, ये अणुतेल के बारे में बताया है, अणुतेल शब्द है।
परमाणु का कहाँ कहाँ उल्लेख है देखो, यहाँ फिर से अणु प्रण प्रवण भाव आया है। स्थूल अणु स्रोतसाम भेदता, वायु का कर्म बताया है ये। रसादीनाम मल स्थूलाणु भाग विशेषेण त्रिविधा परिमाणु भवति। परमाणु आतप का तेज परमाणु पुंज स्वरूप होता है, ऐसा बताते हैं। और यह सेम वर्णन न्याय दर्शन में भी है और वैशेषिक में भी है। ये डलन बताते हैं कि आतपम क्या है, ये अद्रव्य है, लेकिन वो कैसे, परमाणु पुंज है। आतप मतलब परमाणुओं का पुंज है। जब राजक्ष्मा हुआ ऐसा कहते चंद्र को, तो चंद्र मतलब ये आकाश का चंद्र नहीं है, तो एक मनुष्य था चंद्र, और इसको किसी मूर्तिमान निश्वास रूप क्रोध ने प्रवेश शरीर में किया। मतलब इसको कौन सा होता है वो, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हुआ और उससे मूर्तिमान एक सूक्ष्म वायरस शरीर में प्रवेश किया, उसको राजयक्ष्मा कहा गया। राजयक्ष्मा इज अ चैप्टर ऑफ ऑल वायरल डिसीजेस। ये केवल इसका अध्ययन नहीं है, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबरक्लोसिस का अध्ययन है, वो तो है ही, सारे वायरल उसमें है। अब षड्रूप एकादश रूप देखिए उसके क्या है, सारे वायरल सिम्टम्स है। कास है, प्रतिशाय है, ज्वर है, अतिसार है, पार्श्वशूल है, शिरशूल है, सारे वायरल है। ये भी बाद में देखते हैं। ज्वर की भी निर्मिति उन्होंने क्रोध का वर्णन करते हुए त्रिपाद त्रिशिरा अणु ऐसा शब्द उपयोग, मूर्तिमान शब्द का उपयोग किया है। अभी अंतिम थोड़े रह गए। पूर्व मीमांसा, ये उसका डिटेल वर्णन है पूर्व मीमांसा का, उनके विषय क्या क्या, सिद्धांत क्या है। आयुर्वेद ने यज्ञ कर्म बताया करने के लिए, पुत्रीय यज्ञ का वर्णन है, कर्मश व्याधियों का वर्णन है, कर्मफल का वर्णन है, अभिशाप जनपद ध्वंस का वर्णन है, और षट कारणवाद में नियति का वर्णन है। ये सारा पूर्व मीमांसा के सिद्धांतों से जुड़ता है। ये कर्मश व्याधि के सूत्र सुश्रुत के उत्तर तंत्र के अतिसार चिकित्सा अध्ययन में कि 3 प्रकार के व्याधि होते हैं। कुछ व्याधि कर्मज होते हैं, कुछ व्याधि दोषज होते हैं, और कुछ व्याधि कर्म दोषज होते हैं। तो कैसे, तो उन्होंने टीका बहुत सुंदर है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय यहां पे लूंगा कि एक कोई व्यक्ति पथ्यरत है, सारा पथ्य पालन करता है, सद्वृत्त का भी पालन करता है, शास्त्रोक्त आहार विहार भी करता है, फिर भी उसको हेमंत शिशिर ऐसे शीत ऋतु में रक्त पित्त जैसा उष्ण व्याधि होता है। दिखते हैं, व्यवहार में दिखता है हमें। क्यों होता है? वसंत ऋतु में वात व्याधि होता है। पेशेंट कहता मैं सब फॉलो करता हूं, मैं तो सुपारी भी नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, फिर भी मुझे हुआ। कैंसर होते हैं, बड़े बड़े कैंसर होते हैं, सात्विक मनुष्यों के बड़े बड़े कैंसर, ब्लड कैंसर जैसे सिम्टम होते हैं। क्यों होते हैं? प्रावृत ऋतु में श्लेष्मा का व्याधि उत्पत्ति होती है। यह निमित्तम अंतरेण, हेतु नहीं है, यह असत्कार्यवाद भी है। निमित्तम अंतरेण ये उत्पद्यन्ते ते कर्मजा, वो कर्मज व्याधि है, ये दोषज व्याधि नहीं है। वहां आपको दोष की चिकित्सा नहीं, आपको कर्म की चिकित्सा करनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा। और जो आपको हेतु मिलता है कि दही खाया, प्रतिष्ठा हुआ, श्लेष्मा प्रकोप हुआ, प्रतिष्ठा हो गया, आपने कंटकर आमलकी का चूर्ण दिया, प्रतिष्ठा शांत हो गया, ये दोषज व्याधि है। और कभी कभी उभय हेतु होते हैं। कैसे कि कर्मज व्याधि को हेतु नहीं होते, आपको हेतु मिलते ही नहीं, और तो बिना चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। इसका मेरा पूरा लेक्चर है, और कल हम दैव्यपश्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसमें ये विषय लेंगे फिर से। और कर्म संशय जब हो जाएगा तो व्याधि ठीक हो जाता है। दोष संभूत व्याधि जो है उसको दोष की चिकित्सा के तो शांत हो जाते हैं। तीसरा जो निदान अल्प है लेकिन व्याधि बहुत बड़ा होता है। सुपारी खाई, सुपारी गले में अटकी, खांसी शुरू हो गई, चेक करने के लिए गए, बहुत दिन तक खांसी रही, चेक करने के लिए गए तो लंग कैंसर निकल के आए। पेशेंट दिखते हैं हमें से, सर कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था, ऐसा हुआ, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, और ये इतना बड़ा करके कुछ नहीं, हेतु छोटा सा, लेकिन 6 महीने हाथ ऐसा करके बैठना पड़ रहा है, पैर ऐसा करके बैठना पड़ रहा है। 6 महीने गए, प्रति कष्ट, अल्प निदाना प्रति कष्ट, तो ये कर्म दोष है। आपको दोष की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी और कर्म मतलब दैव पश्र की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। अगला अंतिम अस्तिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, वेदांत, मेरा बहुत फेवरेट, और मैंने पूरा वेदांत वैद्य परमा जोशी मैडम से सीखा है।
वो हर रविवार को सुबह 5 बजे पुणे में जहाँ रहती थी बिबीवाड़ी में, वहाँ वेदांत के क्लासेस लेती थी। और आयुर्वेद का मैं केवल अकेला रहता था विद्या में, फर्स्ट ईयर में था। बाकी सारे बड़े बड़े लोग अलग अलग प्रकार के, मैडम क्योंकि वेदांती है वो, और ब्रह्मसूत्र पढ़ा। गीता तो मेरी कंठस्थ पहले से ही थी, पूरी गीता कंठस्थ है, और महाभारत में अभी पढ़ रहा हूँ, या बाकी के जो ग्रंथ है। और अभी कल जो हमारे आने वाले सौरभ कोकतनूर, इनका भी ब्रह्मसूत्र का बहुत ही अध्ययन अच्छा है, मतलब मुझे पता है उनका बहुत अच्छा ब्रह्मसूत्र का अध्ययन है। तो ये वेदांती है। वेदांत के 2 सिद्धांत है, विवर्तवाद और पंचीकरण, ये दोनों आयुर्वेद ने लिए हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? पानी दिख रहा है, मृगजल कहते हैं ना उसको, दिखाई दे रहा है पानी, पर वहां जाएंगे तो कुछ नहीं है, रेगिस्तान है। ये विवर्तवाद है, मतलब जो है वैसा नहीं दिखाई देता है। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड से देखेंगे विष्णु और ये देखेंगे तो आपको हाथी दिखाई देगा, और शिव और इससे देखेंगे तो आपको गाय दिखाई देगी। ये विवर्तवाद है। नीचे क्या दिख रहा है देखो, वास्तविक वैसा नहीं है। तो विवर्तवाद की कहां का उपयोग किया कि भ्रम की संप्राप्ति जो है, भ्रम व्याधि की संप्राप्ति विवर्तवाद का उपयोग है। प्रत्यक्ष ज्ञान बाधित में विवर्तवाद का उपयोग किया है। अरिष्ट का वर्णन क्या बताते हैं कि अरिष्ट है या नहीं समझ में नहीं आता, ये विवर्त है। मेरे खुद के उदाहरण है, मैं एमडी कर रहा था और जिनके पास पढ़ रहा था वैद्य लावगणकर, वो अभी नहीं रहे, लेकिन वो अरिष्ट विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, नाड़ी और अरिष्ट के, और 6th जनरेशन उनकी है, चल रही थी। तो मुझे ना ऐसे नाखून पे भेद हो गया, ऐसा बीच से टूट गया, और मैंने चरक में पढ़ा था कि नखभेद अचानक से हो गया तो वो अरिष्ट है। मैं डर गया, मुझे लगा अभी कुछ शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ये तो अरिष्ट दिखाई दे रहा है, क्या करे, डर गया। मैं गया उनके नाना, मैंने कहा नाना ये क्या अरिष्ट है क्या? उन्होंने ऐसे ही लगा, चल भाग यहाँ से, अरिष्ट वगैरह ऐसा कोई, अरिष्ट किसको होता है, किसको अरिष्ट कहेंगे? कि पहले व्याधि है, धातु बल क्षीण है, बलरहास है, ये चाहिए मैडम? ऐसी अवस्था में बांसक क्षय है, ऐसी अवस्था में बिना किसी हेतु से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे तो वही वो अरिष्ट है। सामान्य व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में अरिष्ट नहीं उत्पन्न होते। यह विवर्तवाद का उपयोग है। स्वप्न का वर्णन किया है, स्वप्नारिष्ट समझने में गड़बड़ होती है हमारी, विवर्त है। प्रज्ञापराध का वर्णन है, और कामला में सारी दुनिया पीली दिखती है ना, ये विवर्त ही है, पीली है दुनिया, ये दुनिया पित्तल दी है कि नहीं? ये दुनिया कैसी है? राज कपूर ने पूछा था कि ये दुनिया काहे को बना, ये वगैरह वगैरह, पर सन्नी लियोनी को पता चला कि ये दुनिया पित्तल दी। वैसे वो सारा विवर्त है। कामला में पीत रूप दर्शन दिखना जॉन्डिस में, ये एक विवर्त है। अब अपस्मार में अतत्वाभिनिवेश नाम का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि उसमें उसका लक्षण दिया है, विषमाम कुरुते बुद्धिम नित्या नित्य हिता हिते अतत्वाभिनिवेशम तमाहु प्राप्ता महागदा। ये विवर्तवाद है। राजश्मा के पूर्व रूप में खाने खाने के लिए बैठेंगे, उसमें बाल गिरा है क्या, कुछ दिखा, ऐसे दिखाई देता है, विवर्तवाद है। घृणितशु मतलब अदोषेशु अपि भावेशु, शरीर पे कुछ गिरा है ऐसा लगता है, ये विवर्तवाद है। उन्माद, उन्माद के सारा वर्णन विवर्तवाद का ही वर्णन है। ये डिटेल में अगर लेना है तो कल, या मेरा लेक्चर है भी इसमें। प्यार की जो पहली अवस्था होती है ना, वो विवर्तवादी होती है। एक प्यार स्वतंत्र होता है, दूसरा परतंत्र होता है, जैसे दोष प्रकोप ऐसा होता है। तो उसमें जो परतंत्र होता है वो प्रायः विवर्तवाद में होता है। मतलब उस लड़के को लगता है कि वो लड़की उसको देख रही है, विवर्तवाद होता है, सामान्य भाषा में बोलेंगे तो। चारवाक, चारवाक का टोटल ऑपोजिट आयुर्वेद ने बताया है। ये चारवाक का पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष नहीं है, केवल प्रत्यक्ष ही है, अर्थ काम यही पुरुषार्थ है, और मृत्यु यही मोक्ष है। लेकिन स्वभाववाद का वर्णन किया, और प्रयोजन सुख प्राप्ति है। आयुर्वेद पुनर्जन्म, मोक्ष, आत्मा इनको मानता है। पुरुषार्थ चतुर्विध बताए हैं, केवल काम और अर्थ नहीं है, मोक्ष भी पुरुषार्थ आयुर्वेद ने बताया है। मोक्ष का वर्णन किया है। मृत्यु ये केवल व्याधि है, स्वाभाविक व्याधि है, मृत्यु ये मोक्ष नहीं है। मृत्यु के समय
5 कोशों में से केवल अन्नमय कोश गिर जाता है, बाकी के 4 कोश आगे जाते हैं। ये चरक ने भी बताया है। विज्ञानमय, आनंदमय, प्राणमय और मनोमय कोश आगे जाते हैं। और सद्वृत्त का पालन करने के लिए बताया है। कुछ भी करो, ऋण लो और क्या दूध खाओ, ये करो, मौज करो, आप जाने के बाद आगे के लोग उसको नहीं, वो कर्म लेगा और आपको कर्मफल भुगतना पड़ेगा, ये आयुर्वेद मानता है। तो खुद आयुर्वेद कहता है कि न अर्थार्थम ना अपि कामार्थम अथ भूतदयम। आयुर्वेद ये काम के लिए या अर्थ के लिए नहीं करना है, ये भूतदया से करना है। और ऐसा जो करता है स सर्वमति वर्तते। कुरुवते ये तो वृत्त्यर्थम, जो व्यक्ति केवल वृत्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए चिकित्सा का पण्य विक्रय करता है, बाजार करके रखता है, वो कांचन राशि को छोड़कर पांशु राशि में उपासत है, धूली को लेके बैठा है। ये चारवाक को टोटल अपोजिट वर्णन चरक का है, लेकिन स्वभाववाद का वर्णन चरक में यतस्ततः मिलता है। सुश्रुत ने स्वभाव बताया है 6 कारण में, आयुर्वेद खुद स्वभाव संसिद्ध है। सहज बल का वर्णन है, सहज अर्श है, सहज व्याधि है, स्वाभाविक व्याधि है, प्रभाव का अर्थ स्वभाव है, प्रकृति का एक अर्थ स्वभाव है, और यज्ञ पुरुष अध्याय में भी उसका वर्णन किया है। ये हम कल देखेंगे। बौद्ध दर्शन, अंतिम 2 रह गए। बौद्ध दर्शन, इसका सारा ये वर्णन है। क्षणभंगवाद को 2 शब्द हमें मिलते हैं कि शिरदत शरीरम, ये आयुर्वेद ने लिया है, और नित्य शब्द का आयुर्वेद ने कई जगह पे उपयोग किया है। इसके ये संदर्भ है। आयु ये नित्यग है, काल ये नित्यग है, अवस्थिक और नित्यग ऐसे 2 प्रकार काल के हैं। और यहाँ पे चक्रपाणी बौद्ध के बाद है, चरक ये बुद्ध से पहले है। चरक पर बुद्ध का कोई भी प्रभाव होना अशक्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध के पहले चरक होके गए। अग्निवेश तो महाभारत काल के समय के। अग्निवेश या हमारे जो द्रोणाचार्य थे, इनके गुरु थे। धनुर्वेद के गुरु हमारे अग्निवेश थे। हमारे अग्निवेश ने 400 साल 400 ईयर आयुर्वेद और धनुर्वेद का अध्ययन किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने आश्रम स्थापन करके, आज हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, 400 साल कुटी प्रावश्यक रसायन करते थे। पर चक्रपाणी पर बौद्ध का प्रभाव था, इससे क्योंकि वो 11वीं सेंचुरी में है, इसे चक्रपाणी बुद्ध सिद्धांत का उल्लेख करता है, चरक नहीं करता। क्षणभंगवाद ये चक्रपाणी ने उल्लेख किया है। चक्रपाणी में क्षणभंग के ये 3-4 रेफरेंसेस हैं, ये सारे संदर्भ है। ये देखो कितने सारे हैं, ये सारे बुद्ध। केचिदिति बौद्ध, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं, लेकिन चरक नहीं कहेगा। अन्य बौद्धालयम आहु, ये डलन कहता, डलन भी बुद्ध के बाद का है। प्रत्युत्त समुत्पादवाद नाम का बुद्ध का विशेषवाद है कि एक घटक पर दूसरे घटक की उत्पत्ति रहती है, और तृष्णा ये दुख का कारण बताया है, और तृष्णा से ही जन्म मरण का चक्र प्राप्त होता है। जन्म होने पर उसी के साथ वार्धक्य, व्याधि, वेदना, मृत्यु प्राप्त होती है। प्रत्युत्त समुत्पादवाद बुद्ध का विशेषवाद है। इसका टोटल वर्णन चरक शरीर में एक में है, उपधा के स्वरूप में, और उपधा का अर्थ तृष्णा है। उपधा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रदा, और सभी उपधा का त्याग करना यही मोक्ष का मार्ग है। नष्टि की बिना उपधा चिकित्सा, नष्टि की चिकित्सा ये सबसे बड़ी चिकित्सा है, और जो वैद्य नष्टि की चिकित्सा के स्तर पर जाता है वो मोक्ष स्वरूप हो जाता है। वैद्य, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल पशु पक्षी प्राणी मनुष्यों का व्याधि नाश करना ये नहीं है, तो वो तो है ही, लेकिन वैद्य को मोक्ष प्राप्ति होना ये भी है। निरात्मवाद का खंडन किया है चरक संहिता ने पूरा। यहां पे निरात्मवादितम उत्थापयति, निरात्म जो आत्मा नहीं मानते हैं, इनका खंडन किया है चरक ने। जैन दर्शन अंतिम, इसके ये स्याद्वास, जैन दर्शन का बहुत सारा उल्लेख, मतलब जैन भी चरक के बाद के हैं, तो चरक पर जैन का प्रभाव होना अशक्य है, लेकिन वो प्रवाह होंगे, विचार प्रवाह होंगे। तो जीव और अजीव यही सेंद्रिय और निरेंद्रिय द्रव्यों में आया है उल्लेख। यज्ञ पुरुषीय में भी अनेक घटकों से, मतलब ये जो स्याद्व्याद असाद्व्याद है ना, अनेक घटकों से व्याधि निर्मित होती है, और प्रमाण और प्रयोजन ये स्वीकृत है जैन का। अनेकांतवाद चरक में है, इसको सव्यभिचार कहते हैं। सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम, ये वादमार्ग पद में है। भवेत इदम औषधम अस्मिन, मतलब इस व्याधि में ये व्याधि औषध यौगिक है या नहीं है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद। यहाँ पे भी नीचे अनेकांतिकम ऐसा बताया है। अनेकांतो नाम यद अन्यतर पक्षावधारण, ये चक्रपाणी की टीका है। भेदता ही भेद्यम अनत्था भिन्नति, यह भी अनेकांतवाद है। नैकांतिकम मात्र काल मृत्यु है या अकाल मृत्यु है, यह अनेकांतवाद है।
कई सारे हैं। अनेकांतिकम कर्तव्यम विधिम, अनेकांतिक ऐसा जो अनुक्त व्याधि में होगा तो क्या करना चाहिए, इसका बारे में टीका बताते हैं। पंचकर्म कहाँ करना है या नहीं करना है, ये भी अनेकांतवाद में आता है। यहाँ पे भी एक संदर्भ है नैकांत का, नैकांतिकम औचित सात्म्य का वर्णन में बताया है। देखो कितने सारे संदर्भ है। एकांतिक वचनादिति अवधारणा। अब आधुनिक दर्शन ये नया दर्शन है, इसका विचार हमें आपको एग्जाम मतलब आपका होमवर्क है ये, या आप घर जाकर होमवर्क करिए कि आधुनिक दर्शन ये विविध शास्त्रज्ञ हैं आज के कर्ता। ये नास्तिक दर्शन है, ईश्वर मानते नहीं है, वेद भी मानते नहीं है, प्रमाण एक ही है, प्रत्यक्ष है ना। आज के जो साइंस है उनको प्रमाण चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। पदार्थ पता नहीं, उनको ही पता नहीं क्या पदार्थ है, उनका प्रयोजन सुख प्राप्ति है। आज के जो साइंस है इनको मनुष्यों को सुख प्राप्ति है। और सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, ऑक्टेट थ्योरी है, सेलुलर लेवल है, इन्फेक्शन है, लॉज ऑफ ग्रेविटी है, लॉज ऑफ एनर्जी है। अब इसका वर्णन कहाँ कहाँ है। अब लॉज ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का वर्णन चरक में है। 5 प्रकार के कर्म बताए ना, उत्क्षेपण अपक्षेपण। तो अपक्षेपण मतलब नीचे करना, मतलब इनको ग्रेविटी का पता था, है कि नहीं। यद विरेचन द्रव्य अधोगामी होते हैं, ये ग्रेविटी का वर्णन है। तो इसका अर्थ उनको ये पता था, ऐसा नहीं पता नहीं था। अब हमें ढूंढने हैं कि इसका कहा। बिग बैंग थ्योरी पंचमहाभूतों के से जुड़ जाती है। ऑक्टेट थ्योरी अष्टक से, मतलब 8वें मास में ओज अस्थिर होता है, लेकिन 8वां मास पूरा हो गया तो ओज स्थिर होता है। यह ऑक्टेट थ्योरी है। देखो शादी में सप्तपदी हो गई और लड़का और लड़की भाग गए, शादी कैंसिल हो जाती। जब तक मंगल अष्टक नहीं होता, अष्टक मतलब स्थिर होना, तब तक शादी नहीं होती। सप्तपदी के बाद मंगल अष्टक होना चाहिए। 7 दिन है, लेकिन मराठी जो जानते होगे 7 दिन होते हैं, लेकिन हम कहते हैं आठवड़ा, 8 दिन कहते हैं हम। 8वें दिन आओ कहते हैं, लेकिन वो 7 दिन होते हैं। अष्टदिशा ये स्थैर्य का लक्षण है। 8वें मास तक स्नेहपान करना है आपको शोधन के लिए, तो 7 दिन के बाद नहीं करना है। 8वें दिन तक आगे जाएगा तो 7 में हो जाता है, ऐसा कहते हैं। मतलब क्या होता है, रोज एक स्नेह का परमाणु शरीर के अलग अलग जगह जाकर बैठता है, रोज एक जगह। तो 8वां यह स्थैर्य का, यह ऑक्टेट थ्योरी। ये गर्भ 8वें मास का ओष का स्थिर अस्थिरत्व भाई यस इसी का वर्णन है। तो इसका विस्तार करिए, और भी बहुत सारे उनके सिद्धांत है। उद्धर आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसिदेत। हमें अगर जीवन में कुछ करना है, हम अभी इस अवस्था में है, हमें उस अवस्था में जाना है ना। अभी कॉम्प्लेक्स है सारा, और उसमें कॉम्प्लेक्स छोड़ के पूरा निर्मल होकर मुक्त की अवस्था में जाना है, ये उद्देश्य होगा आपका। तो शास्त्र की अपेक्षा है यहां जाना, लेकिन आज की पीढ़ी का नहीं है। आज की पीढ़ी को सैटरडे को डेट पे जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, पिज्ज़ा बर्गर खाना है, रील्स बनाने हैं, ये उनके। लेकिन हमें उस पीढ़ी को यहाँ लेके जाने, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और हमें भी जाना है, क्योंकि हम तो इसी अवस्था, तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में हम अवस्था में। तो ये गीता कहती है कि, और इसके लिए दर्शन और आयुर्वेद साधन है आपको। वी आर नॉट जस्ट फिजिशियंस, फिजिशियन इज साधन। उससे हमें हमारा और विश्व का सत्य स्वरूप जानना है। सत्य से अपावृणु हिरण्मयेन पात्रेण, सूत्र देखा हमने, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, ये ईशावास्य का पहला सूत्र है। तो यहाँ तक अगर जाना है, ये शास्त्र की अपेक्षा है। तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय था, मैंने संक्षेप में उसको क्लिनिकल इलेबोरेशन के साथ रखने का प्रयास किया। और कल और थोड़ा कठिन विषय, और वो मैंने ही वो क्या कहते हैं ले लिया है, पुनर्जन्म, दैव व्यपाश्रय, मोक्ष और काल अकाल मृत्यु। लेकिन मेरे फेवरेट विषय है, चिंतन के विषय है। तो मैंने दर्शन, मेरे अध्ययन भी हुआ उससे खुद का, तो दर्शन के अनुसार हम उसका विचार, दर्शन और आयुर्वेद दोनों के अनुसार हम विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को धन्यवाद, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अहिल्या मैम और सर भट्ट सर, सारे यहाँ के सारे डिपार्टमेंट के सर, सारे आचार्य, सर नहीं कहेंगे आचार्य,
और ये जो काम कर रहे हैं ये मूल काम है। मेरा सपना था कि मैं किसी मूल शास्त्र में काम करूं, लेकिन वो शायद नहीं हो नहीं पाया, लेकिन आयुर्वेद चल रहा है। लेकिन मैंने अभी 2 महीने में जो किया तो मुझे भी अभी उसकी इतनी लत लगी है कि मैं न्याय सूत्र वगैरह जितना समझ सकता हूँ उतना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन पढ़ नहीं रहा था, तो इसके आगे पढ़ूंगा ज़रूर, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जैसे सर ने फरमाया कि बहुत समय ले लिया है, तो हम जो सेमिनार के पक्ष से अभिजीत सर को धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से भिन्न दर्शनों का आयुर्वेद में क्या योगदान है इस विषय के बारे में उन्होंने अपनी प्रस्तुति को यहाँ प्रस्तुत किया है। नाउ वी हैव गॉट 2 things to tell to the participant. Number 1 is that those who are staying in the bank, near the bank, or those who have been given the accommodation, for them the dinner would be provided at 8 o'clock here itself. They are requested to assemble here by 8, between 7:30 and 8. Okay. And then the other thing is tomorrow again at 9:30 sharp the session starts. And then at 9 o'clock we will be having a breakfast. So all are requested to join for the breakfast tomorrow. Thank you. Let us meet tomorrow. Namaste.